2047 Integrated Advancement in Management, Pharmacy, Agriculture, Clinical Sciences and Technology. Now, we would like to inform you about vision of Six Sigma Institute of Technology and Science. Six Sigma Institute of Technology and Science has clear objectives, iron will, and is dedicated to meaningful achieve a result-oriented landmark on the pivot of higher and technical education. Mission: we intend to develop Six Sigma as a center of excellence in technical education and inculcate in students the qualities of leadership, professionalism, executive competency, and corporate understanding. SSITS nurtures, nourishes, and groom future engineers, managers with professional excellence, humanized outlook with the envisioned motto. Now, about conference, this national conference envisions a progressive roadmap towards a Viksit Bharat at the rate 2047 by fostering integrated advancement across key knowledge domains. It aims to bring together academicians, researchers, industry experts, policymakers, and students on a common platform to deliberate innovative strategies for sustainable national development. Emphasis will be placed on interdisciplinary research, industry academia collaboration, and technology driven solutions for inclusive growth. Though through keynote addresses, technical sessions, panel discussion, paper oral presentations will gain insight into the future ready skills, policy framework, and research opportunities. The conference seeks to inspire collaboration, innovation, leadership, strength India's journey towards global excellence, self-resilience, and sustainable development by the year 2047. Thank you. So we would like to share key core objectives of building Viksit Bharat: economic growth, inclusive development, technological leadership, sustainable and green development, healthcare, strong healthcare and society security. Thank you. Now, as per our ritual, and now we proceed further for our Deep Prajalan. So good morning everyone. So we are starting our program with the Deep Prajalan, and Tamsoma Jyotirgame, from the darkness and led us to light. This is an auspicious Indian tradition to begin any significant occasion with the ceremonial lighting of the lamp symbolizing knowledge. As we gather today for this national conference, Building Viksit Bharat 2047, the lighting of the lamp signifies our shared commitment to innovation, research excellence, and nation development. So, now I humbly request our esteemed dignitaries to kindly come forward for the Deep Prajalan ceremony. Honorable MLA Rudrapur Constituency, MD of Six Sigma, C. Shivarora ji, Honorable Chairman Mr. Rajesh Tabarji, Honorable Vice Chairman and Kadarpur Block President Mr. Preet Groverji, Mrs. Jyoti Groverji, Honorable Director Ma'am Dr. Seema Arora Ma'am, Executive Directors Mr. Vansh Tabarji and Shaurya Arora ji respectively, keynote speaker and for this conference Mr. Dr. Shivendra Kumar Kashyap ji, convener of this Impact 2047 Mr. Lalit Singh Desh ji, co-convener Dr. Prakash Pant ji, Dr. Vivek Trivedi ji. Please, thank you. Mr. Shivendra Kumar Kashyap ji, convener of this Impact 2047 Singh Desh ji, co-convener Dr. Prakash Pant ji, Dr. Vivek Trivedi ji. Please, thank you.
ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु स Impact at the rate 2047, we express delightful thanks to all the dignitaries for their warm presence here. Now moving towards the second chapter. Good morning to everyone, all the distinguished guests, respected dignitaries, management team members, researchers, and dear students, aspirants. So now we are moving further towards the felicitation ceremony. As felicitation is not merely a gesture of appreciation, it is a symbol of gratitude, respect, and recognition of dedication, leadership, and outstanding achievements. It is now my privilege to initiate the felicitation ceremony, and we humbly request our convener, Mr. Dr. Lalit Singh Bishji, co-convener Dr. Prakash Pantji, sir, to kindly come forward and present a scarf of honor, cap of pride towards our Managing Director, Honorable MLA from Rudrapur constituency, C.A. Shiv Arora ji. Dr. Lalit Singh Bishji and co-convener Impact 2047, Dr. Prakash Pantji. So, we are witnessing this program. So, Honorable Convener, Impact 2047, Dr. Lalit Singh Bishji and Dr. Prakash Pantji is felicitating our guest and MD of Six Sigma Institute of Technology and Science and MLA from Rudrapur, C.A. Shiv Arora ji. And in this sequence, again we request co-convener Mr. Dr. Lalit Singh Bishji, co-convener Dr. Vivek Trivedi ji, sir, to kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride to our esteemed chairman, Mr. Rajesh Tabarji, in recognition of their invaluable presence and insightful guidance and support. Have a big round of applause, everyone. Researchers, young aspirants, Impact at the rate 2047, Mr. Rajesh Tabarji, our chairman, the person behind each and everything, behind the curtains, on the stage, on the platform, in the guidance. Thank you. Now we request our convener, Dr. Lalit Singh Bishji, and organizing committee members, Dr. Supreet Kaur, Mrs. Sonia Narang ma'am, to kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride to our esteemed Vice Chairman, Six Sigma Institute of Technology and Science and Block President Gadarpur, Mr. Preet Groverji and Mrs. Jyoti Groverji, in recognition of their invaluable presence, guidance and support. I request all the organizing committee members to be present here inside Seminar Hall 1. Thank you. Now again we request co-convener Dr. Lalit Singh Bishji and organizing committee member Dr. Akshita Banga ma'am, HOD, Department of Agriculture, to kindly come forward and present scarf of honor and cap of pride to our esteemed director, Six Sigma Institute of Technology and Science, Dr. Seema Arora ma'am, in recognition of their invaluable presence and insightful guidance and support. Dr. Seema Arora ma'am. And Dr. Seema Arora ma'am
and she had guided more than 3,000 aspirants, and they all are working in foreign countries, in India, in diversified sectors related to nutrition, food, engineering, pharmacy, etc. Thank you. Now, we humbly request co-convener Dr. Prakash Panchi, organizing committee member, to kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride to our esteemed Executive Director SSITS, Mr. Vansh Dabarji, in recognition of their invaluable presence and insightful guidance and support. Thank you. Now we are moving forward. We humbly request our co-convener, Dr. Vivek Trivedi ji, organizing committee member, Ms. Alia Naz, to kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride towards our esteemed Executive Director, SSITS, Mr. Shaurya Arora ji, ACCA, in recognition of invaluable presence and insightful guidance and support. Qualified ACCA and who had guided us a lot in diversified manner for financial fields, Mr. Shaurya Arora ji. Now, we humbly request our Executive Director, Mr. Vansh Tabarji, Mr. Shaurya Arora ji, ACCA, kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride to our esteemed keynote speaker, Head of Department of Agri Communication and College of Agriculture Sciences, GBPU, Pantnagar, in recognition of invaluable presence, insightful guidance and support. And from the very day first, we had been guided by Dr. Shivendra Kashyap ji, and sir has guided us in each and every manner to execute this conference from the genesis of the name to execution. Dr. Shivendra Kashyap ji. Have a big round of applause. Everyone, researchers, aspirants, thank you. Now, we humbly request our Vice Principal, College of Engineering, Mr. Mukesh Kumar, Chief Administrative Officer, Mr. Anubhav Batlaji, kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride to our esteemed convener, Dr. Lalit Singh Bishji, for insightful guidance and support. And we have received our distinguished guest and from the domain of media, Mr. Bhupesh Chimwalji, and we welcome you, sir, on this platform, National Conference Impact at the rate 2047, Mr. Bhupesh Chimwalji. Now, we request our organizing committee members to present a cap of pride and a scarf of honor towards Bhupesh Chimwalji. Sir, please come forward. Have a big round of applause for Bhupesh Chimwalji.
Thank you, sir. You had spared time for our young researchers and aspirants. Impact at the rate 2047. Now we humbly request our HOD Civil Engineering, Mr. Sahil Chhabra ji, HOD Applied Science Department, Mr. Shivam Sharma ji, kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride to our esteemed co-convener Dr. Prakash Panji, Principal College of Pharmacy, and for his insightful guidance and support. Dr. Prakash Panji. Have a big round of applause, everyone. Now I request Mr. Rohit Padyarji, please come forward. We welcome our distinguished guest on this platform, Impact at the rate 2047. In this sequence, now, in this sequence, we humbly request our HOD Department of Pharmacy, Mr. Rohit Padyar, to kindly come forward and present a scarf of honor and cap of pride to our esteemed co-convener, Dr. Vivek Trivedi ji, Principal College of Nursing, for his insightful guidance and support. Dr. Vivek Trivedi ji, please come forward. Dr. Vivek Trivedi ji, having a potent experience of more than 15 years in the domain of nursing. Principal, College of Nursing, Six Sigma Institute of Technology and Science. Thank you. Right. Now, thank you. Now, we would like to share one fact about building Viksit Bharat. India aims to become a 30 to 35 trillion dollar economy 2047 in near term and move forward becoming one of the world's top developed economies by 2047. Currently, India is among the fastest growing major economies in the world. Thank you. So, in this sequence, we have received our distinguished guest, Dr. Sarita Srivastava ma'am, Director and Founder, Suninda Foundation, Rudrapur, retired Professor, College of Food and Nutrition, GBPU, Pannagar. So, I request our Honorable Director ma'am, Dr. Seema Arora ma'am, to present a scarf of honor and cap of pride towards our National Advisory Board member to Dr. Sarita Srivastava ma'am. Please come forward. Have a big round of applause, everyone. Yeah, thank you. Dr. Sarita Srivastava ma'am, Director and Founder, Suvinanda Foundation, Rudrapur. She is running foundation and retired professor from College of Food and Nutrition, GBPU, Pandakar. Have a big round of applause, everyone. Thank you, researchers, participants, aspirants.
souvenir. Now we are moving forward towards the new chapter, building Viksit Bharat at the rate 2047, integrated advancement in management, pharmacy, agriculture, clinical sciences, and technology. A souvenir is not merely a publication, it is a reflection of collective intellect, scholarly contribution, and the spirit of collaboration. It captures the essence of the conference theme, preserves the ideas that shape our academic and national discourse. Today, as we gather for the National Conference on Building Viksit Bharat at the rate 2047, we are proud to present our conference souvenir, which showcase research insights, scholarly articles, abstracts, and the thoughtful messages from the eminent professionals, along with the HRA speaks and alumni speaks. Thank you. The souvenir stands as a testimonial to our shared commitment towards innovation, research excellence, and national development. It is now proud privilege to request our respected dignitaries on the national conference platform to kindly proceed the official release of the conference souvenir. So I request all the dignitaries to come forward on the stage. Thank you. This publication will serve as a guiding document, as an inspiration for all the participants as we collectively work together, realizing the vision of a developed and self resilient India by 2047. Let us give a big round of applause. Big round. It is, yeah, big round again. Yeah, thank you. As publication will serve as a guiding document for all the young aspirants and researchers. One by one. Yes. Yes, Anurji. Yes, yes. Yes, very good. Today, as we gather for the National Conference on Building Viksit Bharat, and we are proud to present our conference souvenir, which showcase the research insight, scholarly articles, and thoughtful messages from the eminent personalities. And souvenir stands as a testimony to our shared commitment towards innovation, research excellence. Have a big round of applause once again. Thank you all. Thank you towards our dignitaries, Honorable MLA sir from Rudrapur constituency, C.A. Shivaroraji. And we are having very less words to speak about our MLA sir and Block President Gadarpur, Vice Chairman sir Mr. Preet Groverji, Chairman sir Mr. Rajesh Dabarji, and Mrs. Jyoti Grover ma'am, our Honorable Director ma'am, Dr. Seema Arora ma'am, our Executive Directors, Mr. Vansh Dabarji, Mr. Shaurya Arora ji, our keynote speaker. Once again, this is the second conference we are doing as a national conference. Dr. Shivendra Kashyap ji, Dr. Sarita ma'am, and from the domain of media and the intellects, Mr. Bhupesh Chimwal ji. Thank you. And we also express a delightful thanks towards our convener, Dr. Lalit Singh Peshji, and co-convener, Dr. Prakash Banji, and again co-convener, Dr. Vivek Trivedi ji. Thank you, everyone. And so, instead to see the script and to elaborate about the conference and proceeding further, and you know, the one person from the US Nagar and the leading MLA from the Uttarakhand,
a visionary and leading MLA. The Ring Road project and equivalent to 1100 crores, the medical college I have seen. And have you ever heard or like visited the medical college from Rudrapur instead by speaking the script? And what I come to know like from the Rudrapur, this is the second thing, and third, the AIMS satellite center in US Nagar, the fourth, the touching ground, then fifth, the indoor and outdoor stadium. Again, I am speaking the five main things, the primary things for the US Nagar, the indoor and outdoor stadium, that is first, touching ground capacity and converted into a green land touching ground from Rudrapur, AIM satellite center, that is the third, then medical college, this is the fourth, and fifth, ring road project. And we are just witnessing all these things in the US Nagar. I didn't mention these things inside my script. I'm speaking in an organic way because these five things are very big thing. And like the leading MLA from the US Nagar, C.S. Shiv Arora ji. Now I'm coming back towards my script. Now, respected dignitaries on the dais, esteemed speakers, distinguished delegates, faculty members, we now awaited for the moment for the gathering of Impact 2047, and we are very truly privileged to have with us today our Managing Director and MLA, Honorable MLA from the Rudrapur, C.S. Shiv Arora ji, a visionary leader, educationist, a dynamic personality who has consistently worked towards the regional development, academic excellence. Sir, you inspiring leadership, unwavering commitment towards equality and development in the US Nagar, in the Uttarakhand, like SSITS towards great heights also. Your presence today adds an immense value and prestige in the national conference. So have a big round of applause for our MD and MLA from the Rudrapur, C.S. Shiv Arora ji, for the Ring Road Medical College, AIMS, touching ground case, indoor outdoor stadium in US Nagar. Have a big round of applause once again. Thank you all. थैंक यू रजत धवन जी। आज ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इम्पैक्ट 2047 एक ऐसे विजन के साथ, जो विजन ही कहीं ना कहीं जैसे ही उसके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक उत्साह आता है, एक सेंसेशन होती है कि हिंदुस्तान, जैसे हम इंडिया भी कहते हैं, वहां पर डेवलप्ड कंट्री का विजन लेना। जब भी बात आती है इम्पैक्ट 2047, आज से 3 साल पहले तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान का युवा डेवलप्ड कंट्री के बारे में कभी सोचेगा, उसके मन में थॉट आएगी कि हिंदुस्तान भी कभी विश्व का विकसित राष्ट्र हो सकता। सोचने से डरते थे, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, स्पेशली हमारा यूथ, इस विकसित राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को जोड़ता चला जा रहा, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लग रहे हो। अंदर से एक इंस्पिरेशन है, अंदर से कहीं ना कहीं एक पैशन है, नहीं वी कैन डू। और उसी थीम को ये समर्पित इम्पैक्ट 2047, मैं बधाई देता हूं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, पूरी 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की वो कमेटी, जिन्होंने इस पूरी थीम को ड्राफ्ट किया। और आज हमारे बीच में की नोट स्पीकर के रूप में एक इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे बीच में आए हैं, जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मैंने उन्हें सैकड़ों बार बोलते सुना है। उनके कंटेंट्स, उनकी स्टडी, उनका प्रेजेंटेशन, वो कहीं ना कहीं रोमांचित करता है, कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करता है।
एक यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एकेडमिक्स में बहुत बड़ा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पंतनगर विश्वविद्यालय के जो अभी तक डीन रहे हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी आज की नोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी के लिए। यहां पर सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस के चेयरमैन आदरणीय राजेश डावर जी, वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रीत ग्रोवर जी, डायरेक्टर डॉक्टर सीमा अरोरा जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख हमारी श्रीमती ज्योति ग्रोवर जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वंश डावर जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शौर्य अरोरा जी, ललित बिस जी, प्रकाश जी, विवेक जी और उनकी पूरी टीम, रजत धवन से लेके अनुभव से लेके पूरी टीम जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है। हमारे मीडिया जगत के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार और समाज सेवी भी हैं भूपेश चंबाल जी, और सभी यहाँ पार्टी हमारी डॉक्टर सरिता जी जो यहाँ की हमारी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर भी हैं, आज हमारे बीच में हैं, और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को एनरोल किया है। ये कॉन्फ्रेंस लगातार चलने वाली है। कई सारे विषय इसमें निकल के आएंगे, कई सारे एक्सपर्ट्स अपने सारे अनुभवों को आपके सामने रखने वाले हैं। मैं कोई बहुत स्पेसिफिक किसी टेक्निकल सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन समाज से जुड़ा हूं, राजनीति से जुड़ा हूं, और स्पेशली उस दौर में जिस दौर का ही पहले कभी कल्पना नहीं होती थी। देश आजाद हुआ 1947 में, बड़े भरोसे के साथ हुआ। लाखों क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान किए, सीने पे गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए कि देश हमारा आजाद होगा, अंग्रेजों से आजाद होगा। और हिंदुस्तान कभी जो विश्व गुरु रहा है, हिंदुस्तान जिसकी तरफ पूरा विश्व देखा करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, चाहे विज्ञान हो या अर्थ हो, हर चीज में विश्व को दिशा देने वाला वो भारत रहा है। उन्हें लगता था जब देश आजाद होगा तो देश की आजादी के बाद कहीं ना कहीं भारत उस पूरे गौरव को दोबारा से प्राप्त करेगा। लेकिन देश की आजादी के बाद व्यवस्थाएं आती रहीं और धीरे धीरे लोग निराश होते चले गए, और निराशा का भाव इतना हुआ कि लोगों ने मान लिया कि भगवान भी हिंदुस्तान का भला कुछ नहीं कर सकता। एक कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2014 के बाद से, एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आया, और वो कॉन्फिडेंस इस तरीके से आया है कि उसके 9 से 10 साल के अंदर 2023 में एक विजन आया, डेवलप कंट्री 2047, यानी 2047 का विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और उस संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया, देश के युवा खड़े हो गए, और आज वो संकल्प साकार लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कितनी तेजी से चीजें बदलती हैं। 2014 में देश की इकोनॉमी केवल $2 ट्रिलियन थी, और 2024 में आते आते वो $4 ट्रिलियन हो जाती है, यानी दोगुनी हो जाती है। जिसे पहुंचने में 75 साल लग रहे थे, 70 साल लग रहे थे, उसकी दोगुनी जो हमारी डबल 2 टाइम्स जो हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन हो जाती है, और अब हमारा टारगेट जो 5 ट्रिलियन था, उस 5 ट्रिलियन के हम बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। जो हिंदुस्तान विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था था जीडीपी के साइज में, आज इंग्लैंड को पीछे छोड़ के पहले चौथी बनता है, और अब जापान को भी पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक पावर हिंदुस्तान बन जाता है। अब चौथी पावर, पहले 5वीं बनता, अब चौथी पावर जापान को भी पीछे छोड़ देता।
और जितने सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वह जर्मनी, वह जापान, वह रूस, वह फ्रांस, जिनके नाम से बड़ा एक्साइटमेंट होता था, वो धीरे धीरे पिछले 8-10 सालों में पीछे जाते जा रहे हैं और भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका और तीसरी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा। मुझे ध्यान है हमारे जमाने में एक गाना आता था, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। बहुत फेमस गाना, राज कपूर का गाना था। अब इस गाने का मतलब यह था कि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यानी जूता भी जापान का, पतलून भी इंग्लैंड की, टोपी रूस की, लेकिन दिल हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तान में कुछ होगा इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारा कुछ भी अपना नहीं था, टोपी से लेके जूते से लेके पतलून तक। लेकिन आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के आया। पिछले दिनों हमने देखा टैरिफ वार चढ़ा, लोगों को लगा जब टैरिफ वार आया है तो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है, 7%। विश्व में कोई अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। 7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत केवल उद्योग लगाने से विकसित भारत हो जाएगा ऐसा नहीं, केवल सड़कें बना देने से ऐसा भी नहीं, या केवल कुछ बहुत उद्योगपति आए और वो उद्योगपतियों के पास पैसा बढ़ता जाए और कैलकुलेशन में जीडीपी बढ़ती जाए, लेकिन उसके बावजूद डिस्पैरिटी रहे, गरीब गरीब होता रहे, गांव हमारे कभी विकसित ना हो, तो भारत कभी भी विकसित राष्ट्र बन नहीं पाएगा। जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, यानी दूरस्थ गांव में रहने वाला गरीब आदमी, उसको भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, कोई भी राष्ट्र कभी विकसित बन नहीं सकता। इसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रयास हुए और इन सारे प्रयासों में बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज गरीब, किसान, महिला और युवा, उनको लेकर सारी योजनाएं बन रही है। सबका साथ सबका विकास, यानी जो मैंने कहा केवल ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज हो जाए, गरीब को भी गरीब का हक मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई कंट्री कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती। हम देख रहे हैं जिस तरीके से नेशनल हाईवेज, कितनी तेजी से नेशनल हाईवे बने हैं, जहां जाते हैं कनेक्टिविटी, जहां जाने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 2 से 3 घंटे में पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो चाहे हमारे नेशनल हाईवे हैं, रेलवे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी है, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, इन पे जितनी तेजी से काम हो रहा। किसी जमाने में जब डिजिटल पेमेंट की बात आई थी, तो मुझे ध्यान है कि वहां पे एक लीडर खड़े हुए थे और उन्होंने डिजिटल पेमेंट, ये यूपीआई जो है, इसकी मजाक बनाई थी पार्लियामेंट में। ये हिंदुस्तान में यूपीआई चलेगा क्या? हिंदुस्तान में जहां पर इंटरनेट है ही नहीं, वहां पे यूपीआई पेमेंट कैसे कामयाब होगी? मजाक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं गांव के अंदर, कस्बे के अंदर, रिमोट एरिया में भी सब्जी बेचने वाला, छोटी सी एक दुकान पे जो है जनरल स्टोर वाला, इवन सैलून चलाने वाला, वो अपने यूपीआई के डिजिटल बार कोड को लगा के बैठा। अगर वो सब्जी बेचने आ रहा है तो सब्जी उसके ठेले पे यूपीआई का बार कोड है। ये कल्पना नहीं कर सकते थे। ये जो डिजिटल क्रांति हुई है, डिजिटल क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हुई है कि आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर कहीं हो रहे हैं तो भारत में हो रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम है इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा वॉल्यूम हिंदुस्तान में बना है। तो जो डिजिटल कनेक्टिविटी के तरफ हमारा हिंदुस्तान बढ़ा है, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। लेकिन केवल डेवलप्ड कंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारे बाकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अब कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बदल रहे हैं, रोजगार के कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमारे यूथ को उनको बहुत तेजी से ऑप्ट करना पड़ेगा। ये मैकेनिकल सिस्टम से निकल के
अब बहुत आगे आना पड़ेगा। आज की तारीख में अभी हमने देखा है एआई इम्पैक्ट समिट अभी दिल्ली में चल रही है। वर्ल्ड के सारे जो वहां पर जितनी बड़ी टेक कंपनी है उनके सीईओ वहां पर आए हुए हैं, और तो और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो वहां पर आए हुए हैं। और वो आने के बाद हिंदुस्तान कैसे जो एआई इम्पैक्ट है इस एआई इम्पैक्ट में लीड करे, इसको लेके कैसे आगे बढ़े, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आज ये एआई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, मत छोड़ो। आज एआई और सेमीकंडक्टर ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा, आने वाले टाइम में हमारे यूथ को जो काम करना है, ये ठीक है, बाकी सारे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फील्ड है उनमें काम करना ही करना है, लेकिन एआई और सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में जानते हैं एक कंट्री है ताइवान, उसे लेके वर्ल्ड वार होने की बात आ रही है। अमेरिका छोड़ नहीं रहा, चाइना उस पर जा, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का 76% सेमीकंडक्टर जो है ताइवान से निकलता। अगर ताइवान चाहे तो वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्री बंद हो सकती है, सारा सिविल एविएशन बंद हो सकता। ताइवान एक छोटा सा कंट्री, कुछ लाखों की आबादी, तो सेमीकंडक्टर का कितना बड़ा इंपैक्ट हम देख सकते हैं। आने वाले टाइम में एआई कितना बड़ा इंपैक्ट हमारी लाइफ पर लाने वाली है, रोजगार पे लाने वाली है, इंडस्ट्री पे लाने वाली है, इसका इंपैक्ट हम बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। और ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही हैं। हमारा देश चाहे रक्षा है, डिफेंस है, चाहे स्पेस है, इन सब में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ते हुए जो हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये सारी जो हमारा यूथ है उन्हें हमारे रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, इन सब में कौशल विकास की बात करनी जरूरी है। जब हम पहले कौशल विकास की बात करते थे, स्किल डेवलपमेंट की बात करते थे, तो स्किल डेवलपमेंट में कई बार ये कॉन्सेप्ट नहीं आते थे। अब कोई फील्ड भी, अब खाली रोबोटिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि रोबोटिक्स हर फील्ड में रोबोटिक्स है, फार्मास्यूटिकल में रोबोटिक्स ने आना है, मैकेनिकल में रोबोटिक्स ने आना है, आर्ट में रोबोटिक्स ने आना है। कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें रोबोटिक्स नहीं आएगा, एआई नहीं आएगा, हर फील्ड में इन सब का काम आने वाला। तो क्या हमारा यूथ इन सब चीजों को लेके अपने आप को स्किल्ड करने के लिए तैयार है? इस पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो इम्पैक्ट 2047 है, इसे लीड करने का अगर कोई भी काम करने वाला है तो हमारे यूथ करने वाले, हमारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं। और उनको देखते हुए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की गई। लेकिन पॉलिसी का आ जाना और पॉलिसी का वहां पर एक इम्प्लीमेंटेशन के एफर्ट्स करना एक अलग चीज है। क्या हमारा यूथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले विकसित भारत को लेकर कॉन्सेप्ट आया है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं है? वो अपने कौशल विकास पर काम करने के लिए तैयार है कि नहीं थे? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो सिस्टम है उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारी स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल, उस पर बहुत बड़ा उसे बेस बनाया गया है। एंट्रेंशिप और इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं इंटरफेस करना, ये सारी चीजों पे बेस्ड हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। हमारे यूथ को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और स्पेशली प्रैक्टिकल और एंट्रेंशिप जो है इस पे हम कितना ध्यान दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे कितना ध्यान दे सकते हैं, वही आने वाले समय में आपके रोजगार को भी क्रिएट करेगा, आपके कैरियर को भी आगे बढ़ाएगा और साथ साथ जो भारत विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, तो जैसा मैंने कहा, क्या गरीब से गरीब आदमी उसमें जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? अगर गरीब आदमी जुड़ता है तभी वो सारे काम हो सकते हैं। केवल कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिक पावर को लेके आगे बढ़ते जाएं, जीडीपी बढ़ाते जाएं, तो कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसमें बहुत सारे काम हुए हैं। हमने देखे कि लगभग 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए। ये जो 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, ये 56 करोड़ जनधन खाते कहीं ना कहीं एक गरीब से गरीब आदमी को, एक मजदूर को, झोपड़ी में रहने वाले को, जिसके घर में शायद लाइट भी नहीं थी, वो आज इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ने के साथ साथ
वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेन स्ट्रीम में लेके आ रहा है। हेल्थ के बिना कभी कुछ नहीं होता। गरीब आदमी का अगर हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है तो उसे लेके अटल आयुष्मान 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलना, इससे आज हर गरीब आदमी अपनी हेल्थ को लेके, अपने परिवार के हेल्थ को लेके सिक्योर फील कर रहा है, उसको फ्री इलाज मिल रहा है। गरीब आदमी अगर खाने को नहीं मिलेगा उसे, तो क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा? तो प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में हर आदमी को, जो गरीब है, अति निर्धन है, ऐसे लगभग 50 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ताकि गरीब आदमी के खाने की, स्वास्थ्य की, 4 करोड़ लोगों को जिनके सर पर छत नहीं थी, उनको मकान दे दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। क्योंकि जो भी हमारा ओवरऑल जितना डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो निर्धन लोग हैं उन तक पहुंचे और उसे आगे बढ़ाते हुए आगे जाए। हिंदुस्तान में शौचालय तक के लिए लड़ाई होती थी, यानी शौचालय भी घरों में नहीं थे। आज 19 करोड़ शौचालय बने हैं। यानी आज को हम लोगों को शहर में रह के लगता नहीं है, लेकिन आज भी मोहल्ले और गांव ऐसे हैं जहां की महिलाएं, जहां की बच्चियां या तो सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले या सनसेट के बाद, तभी वो अपने कहीं ना कहीं जो है बाकी उनके जो दैनिक कर्म है उनके लिए जा सकती थी। आज जाके उन शौचालय देना, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसके साथ साथ ये सारे जो कनेक्टिविटी, ये सारे जो अति निर्धन लोग हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जितने प्रयास हैं, वो प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रयासों के कारण से भारत बढ़ता जा रहा है। और अभी अगर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि पिछले 10 सालों के अंदर अंदर जो आईआईटी बड़े लिमिटेड होते थे, 7 नए आईआईटी बने हैं पिछले 10 सालों के अंदर, जबकि पिछले 70 सालों में 5 थे। 7 नए आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटीज, 16 ट्रिपल आईटीज बने हैं, 7 नए आईएएम बने हैं, 15 नए एम्स बने हैं। यहां पहले हिंदुस्तान में एक एम्स होता था दिल्ली का, 15 नए एम्स। यानी अभी कोशिश है कि हर स्टेट में एक नया एम्स आए, और साथ साथ 390 नई यूनिवर्सिटीज पिछले 10 सालों के अंदर आई है। चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, लीडरशिप है, यूथ को हर जगह प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ है। इस जो हमारा इम्पैक्ट 2047 है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं इस कैंपस से एक इंस्पिरेशन, और उस इंस्पिरेशन के साथ साथ व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट, हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, इस संकल्प के साथ हमारे यहाँ से यूथ जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो कई बार उसे विजुलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत तेजी से अगर हमने डेवलपमेंट देखना हो, और अगर हम आसपास की सराउंडिंग की बात करें, तो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से काम होते हैं कि 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड इस रुद्रपुर के चारों तरफ निकलती हुई आ जाती है। यानी जाम खत्म हो जाएगा, नो एंट्री खत्म हो जाएगी, एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे। एक नया मेडिकल कॉलेज इस रुद्रपुर में आ जाता है। आज तक इलाज के लिए हम सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज जाते थे, राममूर्ति मेडिकल कॉलेज जाते थे, जोली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून जाते थे। एक नया मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी से भी बड़ा रुद्रपुर में खोलने के लिए 2026 में तैयार हो जाता है, और इसी 2026 में मेडिकल कॉलेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ एमबीबीएस करेंगे। एक नया एम्स यहां खुलने जा रहा है, जिस एम्स में द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी होती हैं। जब कहीं इलाज नहीं होता तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होता है, एम्स होता है। वो एम्स भी रुद्रपुर के पास खुलने जा रहा। अब यानी हेल्थ में सोचे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पहले कभी खाली होता था, जहां खाली रेफर होते थे, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज के साथ एम्स भी। इतना बड़ा चेंज हेल्थ के सेक्टर में खाली रुद्रपुर में आ जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रिंग रोड आ जा रही हैं, 8 लेन की सड़कें बननी शुरू हो गई, बड़े बड़े बाईपास बनने शुरू हो गए। ये सारे 2026 में पूरे हो जा रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहां का एयरपोर्ट, अब आप सोचे जब रुद्रपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जिसका अभी जो काम अगले 3 से 4 महीने में शुरू होने जा रहा, और अगले 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर
वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून से भी बड़ा एयरपोर्ट जब रुद्रपुर में बढ़ेगा, और यहाँ से फ्लाइट मुंबई, पुणे या केवल बेंगलोर ही नहीं, वो यहाँ से दुबई, सिंगापुर और अगर लंदन भी जाया करेंगी। और यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की इंडस्ट्री किस तरीके से उसमें बूम आने वाला है, इस बात की कल्पना 4 से 5 साल पहले नहीं की थी। 4 से 5 साल के अंदर अंदर इसी छोटे से रुद्रपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की तैयारी हो जाती है, जो 2026 में स्टार्ट हो रहा है। रिंग रोड आ जाता है, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े बाईपास आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं, एम्स आ जाते हैं। ये एक विजन है 2047 का, और ये केवल रुद्रपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा। बस हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस के साथ इस विजन में अपना कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। हाँ, अपने आप को अपडेट रखना, और अपडेट रखने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने आप को इक्विप करना। तो निश्चित माने आने वाले युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जब भारत का भविष्य उज्जवल है तो यहाँ के युवाओं का भविष्य भी निश्चित रूप से उज्जवल होगा। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस जिन्होंने भी डिजाइन की है, बहुत मेहनत से की है। बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स यहाँ बुलाए गए हैं, जो अलग अलग विषयों पर यहाँ पर अपनी बात रखने वाले हैं। मैं जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ हैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जितने यहाँ पार्टिसिपेंट हमारे बच्चे हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्हें बधाई देता हूँ कि उन जिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ जो उन बच्चों के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है, वो उद्देश्य पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. It's a truly an honor for us to have been enlightened by inspiring words of our Honorable MD SSITS C. Shiva Aroraji, Honorable MLA Rudrapur, Managing Director again, Six Sigma Institute of Technology and Science. And once again, I have heard my MD and Honorable MLA C. Shiva Aroraji, sir, your visionary insights on nation building, youth empowerment and the journey towards the Viksit Bharat at the rate 2047 have deeply motivated and energized everyone present here. Your emphasis on quality education, innovation and collective responsibility has set a powerful tone for this conference, for this Uttarakhand, for this US Nagar, for the Rudrapur. Thank you, sir. Have a big round of applause for our MLA C. Shiva Aroraji, Honorable MLA Rudrapur constituency, leading MLA from the Uttarakhand. And now, quote the great session, leave us not just informed, but transformed. The one line for our Honorable MLA sir, great sessions, leave us not just informed, but transformed. The fact, the core pillars of Viksit Bharat, economic prosperity, social inclusion, technological advancement, sustainable development and good governance. And we come to know about all these core pillars in 2015 by our Managing Director, Honorable MLA C. Shiva Aroraji. In 2015, we come to know about all these pillars. Now we are executing, and conversation is just taking place between all of us about like core pillars of Viksit Bharat. Thank you, sir, for enlightening us with motivated and energized everyone present here. Thank you, sir. Now, in the sequence, I request our Honorable Executive Director, Mr. Vansh Dabarji, Mr. Shaurya Aroraji, to present a token of affection, cap of pride and scarf of honor towards our National Advisory Board member, Dr. Rajkumar Chaudhary ji, Principal, College of Nursing, Samrat Prithviraj Group of Institution, Kashipur. Sir, please come forward. Dr. Rajkumar Chaudhary ji, our National Advisory Board member. I request my guest management team to present cap of pride and scarf of honor toward Dr. Rajkumar Chaudhary ji. Here, our Honorable Chairman, Sir, Mr. Rajesh Dabarji is presenting token of affection,
cap of pride and scarf of honor toward Dr. Rajkumar Chaudhary ji, Principal, College of Nursing, Samrat Prithviraj Chauhan, Group of Institution, Kashipur. Thank you, sir. Now again, we request Mr. Sumit Pathak ji, please come forward. Sumit Pathak ji, Principal, Unity College of Nursing, Rudrapur. Again, I request my guest management team members to present a token of affection for the same. Thank you. Mr. Sumit Pathak ji, Principal, Unity College of Nursing, Rudrapur. Have a big round of applause once again. Thank you. Thank you, sir, for your warm presence, and you had spared time for this conference, Impact at the rate 2047. Sumit Pathak ji. Now, we express a delightful thanks towards our Vice Chairman, Mr. Preet Grover ji, Block President, Gadarpur, Mrs. Jyoti Grover ma'am, for the warm presence, and they had spared time for this conference. Thank you, sir. Now we are starting our scientific session. Our keynote speaker, Dr. Shivendra Kashyap ji, is with us. Now it's time to move forward. One of the most intellectual, enriching segments of today's conference, keynote session 1. The theme of this session, Indian knowledge system and Indian demography, enduring pillars of India at the rate 2047, highlights the fundamental strengths of our nation. India's rich knowledge system, rooted in centuries of wisdom, philosophy, science, medicine, and governance, sustainable living, continues to guide modern innovation, global thought leadership. At the same time, India's demographic dividend, its young, dynamic, aspirational population, stands as the driving force behind the vision of a developed India by 2047. Together, these pillars form a foundation of a strong, self-resilient, globally influent Bharat. So, it's my proud privilege to introduce our esteemed keynote speaker, Dr. Shivendra K. Kashyap, Head, Department of Agri-Communication, College of Agriculture Sciences, GBPU, Pantnagar. Dr. Kashyap is a distinguished academician, thought leader known for his deep insights into Indian intellectual tradition, socio-economic development, and his expertise and research contribute significantly to understand how India's demography, strength, the traditional knowledge systems can shape the nation's future trajectory. So, once again, I would like to ask you, young aspirants, research scholars, have a big round of applause for our keynote speaker, Dr. Shivendra K. Kashyap ji. Thank you, sir. Hello. Very briefly, welcoming all dignitaries who are there, former professors from Pantnagar University, Dr. Padhyay, Dr. Sarita ma'am, and the leaders who are leading this great institution, Six Sigma, which I have been connected with right from beginning when it initiated. All students, professors, faculty members from different colleges. Very briefly, I would be getting ahead with just 20-25 minutes, bear with me. And a context that I want to raise in context of this, what we have been talking, Viksit Bharat Sankalpana.
And into this concept of Viksit Bharat, what we say 2047, that is 100 years of freedom. स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2047 में. इसलिए 2047 को एक स्टेक मानते हुए what exactly country should emerge up to 2047 is the context. And into this context, what I want to raise today especially is that this 2047 context is, it's not like 1947 or prior to 1947 we were nowhere in context of knowledge systems of the world. India was called as a golden bird, सोने की चिड़िया, at a point of time. So when we design up a map of 2047 of the country, how actually this country is supposed to be emerging towards 2047, let's get into an assessment of the roots of the country, where we were. अपने रूट्स को पहले देखना जरूरी है, रूट्स को टच करना जरूरी है. जब अपने नॉलेज सिस्टम को, अपने रूट्स को स्पर्श करते हैं, देखते हैं, तो आगे का दृश्य कैसा होना चाहिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है. ओवर हियर इनटू दिस कॉन्टेक्स्ट I just want to put up 2-3 points for young students, especially those who are there into different colleges or disciplines. See, in context of future of the country, the great personnels, the saints, seers, sages, those who came into this country, they also envisioned how actually India is supposed to be emerging. अपने बड़े मनीषियों ने भी, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे स्वामी विवेकानंद थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनका भी भारत के भविष्य का एक सपना था. तो जब इंडिया 2047 का सपना देखते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो उन मनीषियों ने भारत को किस रूप में देखने का स्वप्न देखा था, उनके सपनों से भी जुड़ता हुआ इंडिया 2047 बनना चाहिए. क्योंकि उन लोगों ने भी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की गुणवत्ता के लिए, इस देश की मेधा के लिए, इस देश की प्रखरता के लिए बहुत एफर्ट्स किया था, और उसके बाद ये भारत हमको मिला. तो इसीलिए इंडिया 2047 का सपना उनके सपनों से हटके नहीं हो सकता. तो उनकी सोच क्या थी वो भी सोचना जरूरी है अगर आप अपने देश के 2047 का सपना देखते हैं. और उस कॉन्टेक्स्ट में एक कदम आगे चलकर देखते हैं कि हाउ एक्चुअली दिस कंट्री इज सपोज्ड टू बी इमर्जिंग इन अपकमिंग डेज एज it is going towards India 2047. So let's delve down into a concept of India 2047 briefly and in context of Indian knowledge systems that prevailed, because this is important. So let's get into that very briefly. The next one. See, this is the vision that has been put up in front of the country, India 2047. When it says to transform India into a developed nation by 2047, marking 100 years of independence with prosperity for all, global leadership and strong institutions. Each word is important, which has been paved by the government in front of us in context of envisioning India 2047. साहब ये India 2047 का विजन है जो भारत सरकार ने हम लोगों के सामने रखा है. और इसमें the first word that is there is very important. It says transforming India into a developed nation. And for that, the generations must understand what's the difference between developing nation and developed nation. Why are we called developing nation? And which are the developed nations? And how this journey will emerge from developing nation to developed nation. And into that context of development, when we say we envision India emerging as a developed nation in upcoming days, the question that appears very important, and you must understand that this concept of development or concept of developed nation, will it be imbibed only through Western models? That being America becomes getting developed, or being China becomes getting developed,
or being Germany or Japan becomes getting developed. Or this concept of developed nation will be rooted into Indian culture, tradition, heritage, truth of India, the population of India, the villages of India, agriculture based big community and society of India. What exactly will be the concept of developed nation in Indian context is a big and burning question in front of us. हम जाते हैं दुनिया में, विदेशों में भी जाते हैं, और जब वहां जाकर देखते हैं, वहां के मॉडल्स को देखते हैं डेवलपमेंट का, और फिर हम अपनी सच्चाई को देखते हैं, और हम ये समझ पाते हैं कि आंख मूंद कर हम अमेरिका नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, और ना हमें बनने की जरूरत है। इसलिए कि उनकी सच्चाई, उनके रूट बहुत डिफरेंट है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। हम तो 6.5 लाख गांवों का देश है, 6.5 लाख गांव हैं पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फैले हुए, और आज भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी गांव के अंदर है, और आज भी हम खेती पर निर्भर देश हैं, और हमसे जुड़ता हुआ कोई ना कोई खेती पर निर्भर होता है, खेती या खेती से जुड़े हुए व्यवसायों पर निर्भर है। और आज भी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की हमारी अपनी थियोलॉजी है। हम कभी भी कंज्यूमरिस्ट कंट्री नहीं रहे, कैपिटलिस्ट कंट्री भी नहीं रहे, हम तो त्यागमूलक संस्कृति लेकर चलने वाले देश रहे। जिस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी हम कंज्यूमरिस्टिक नहीं थे, भोगवादी नहीं थे। केवल संचित करना, उसको कंजर्व करना, ये हमारा कंसेप्ट नहीं था। हमारी सोच की जड़ में कुछ और है। तो फिर हिंदुस्तान का डेवलप्ड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो डेवलप्ड नेशन का कॉन्सेप्ट हमें अमेरिका बताएगा कि डेवलप्ड नेशन क्या होता है, या केवल वो आर्थिक आंकड़े बताएंगे कि डेवलप्ड नेशन क्या होता है? क्या पर कैपिटा इनकम केवल डिसाइड करेगा कि डेवलप्ड नेशन क्या होता है? केवल जीडीपी डिसाइड करेगी कि डेवलप्ड नेशन क्या होता है? दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी जीडीपी बहुत हाई है, बहुत ऊंची है, लेकिन वो देश जड़ों से खोखले हो गए। फिर ये सोचने की बात है कि हम आज दुनिया में कम जीडीपी के होते हुए भी, कम पर कैपिटा इनकम के होते हुए भी, दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने सीना तानकर खड़े कैसे रह जाते हैं? कोरोना में सारी दुनिया हिल गई, भारत क्यों नहीं हिला? हम कोरोना को कैसे कन्फ्रंट कर गए? टैरिफ में सारी दुनिया हिल गई, टैरिफ में, इस टैरिफ वॉर में हम क्यों नहीं हिले? जब हमने आणविक परीक्षण किया और हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, उन प्रतिबंधों के बाद हम नहीं हिले, हम खड़े रह गए उनके सामने। फिर भी वो कौन सी ताकत है भारत की जो पर कैपिटा इनकम लो होते हुए, जीडीपी कंपैरेटिवली दुनिया के देशों से लो होते हुए भी हमको सस्टेन कर देती है? उन ताकतों को छोड़कर भारत कमजोर होता है। इसीलिए हमारी संकल्पना जो होगी, द कंसेप्ट दैट वी वुड बी इम्बाइबिंग फॉर डेवलप्ड नेशन शुड बी बेस्ड ऑन आवर इंटीग्रेटेड ट्रूथ ऑफ स्ट्रेंथ इनटू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये बात समझनी बहुत महत्वपूर्ण है, और उस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने एक बड़ा काम किया है। कुछ वर्षों में सारे विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े मात्रा में इस काम को किया है। रिवाइवल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस यूनिट, सारे आईआईएम्स में चले जाइए, सारे आईआईटीज में चले जाइए, हर जगह आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? भारत की ज्ञान परंपरा क्या है? और भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर विज्ञान बनना चाहिए। भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर कृषि खड़ी होनी चाहिए। भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर हमारे विकास का मॉडल बनना चाहिए। दिस व्हाट एक्चुअली वी आर इमर्जिंग टुवर्ड्स, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो फिर यह जानना जरूरी है कि भारत की ज्ञान परंपरा है क्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। आर वी इन ए सिचुएशन टू टच सम ऑफ दोज टीनेट्स व्हिच टॉक अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम? ये प्रश्न है, और इसी प्रश्न को केवल छूने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं। अगर थोड़ी सा भी कौतूहल होगा तो फिर आप उसको अपने आप एक्सप्लोर करके, उस दिशा में थोड़ा एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकते हैं, जो आपको एक बड़े उस दुनिया की तरफ ले जाएगा जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं कई बार, चूंकि हमारे करिकुलम में वो फंसता नहीं है या हमारे सामने वो खड़ा नहीं हुआ है। तो लेट्स गेट अहेड ऑन टू दैट लाइन प्लीज। की टारगेट्स एंड पिलर्स, जो India 2047 key targets and pillars have already been designed and defined. So I am not elaborating those because it is not the focus with which I want to spell out those 20-25 minutes.
So it is one context is economic growth. One context is education and skills. Economic growth, Shivji also told, the target is going towards plus, that is $30 trillion economy. That is the target that is kept in front of us. It makes lots of sense being $30 trillion economy as a country. That is one of the targets. Some of those education and skill context where we aspire that world would be coming to India for education and skilling, not Indians moving out for education and skilling, as in present context where Indian students aspire to get into America, Canada, Australia for their higher education, and lesser are those youngsters, those who come from other countries to us. Those were the days earlier when students used to come to us, but in present context it has come up to minimal. हमारे लिए हमारे शिक्षा का जो उच्च शिक्षा का और उच्चस्थ शिक्षा का जो हमारा पैमाना है वो दुनिया के विश्व के दूसरे देशों के संस्थानों की तरफ मुड़ गया। क्या वो समय आएगा जब दुनिया के तमाम लोग हम तक आएंगे? आगे के स्लाइड्स में मैंने एक स्लाइड लगाया है नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कभी हुआ करता था भारत में, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है उस वाले इलाके में वो अवस्थित था। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में दुनिया के 60-65 देशों के विद्यार्थी पढ़ते थे। सारे दुनिया के सारे विद्वान उस तक्षशिला विश्वविद्यालय को छूने के लिए लालायित रहते थे। और उस तक्षशिला विश्वविद्यालय ने ऐसे ऐसे मनीषी पैदा किए जिन मनीषी ने अपने अपने विधाओं में एक पूरा पूरा विज्ञान खड़ा कर दिया। ऐसा तक्षशिला विश्वविद्यालय अपनी धरती पर होता था। जब हमारी धरती पर नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटीज थे जो कि सारी दुनिया के विद्वानों को आकर्षित करते थे कि वो वहां फुटफॉल कर पाए, कुछ दिन रह पाए, फिर आज ऐसी स्थिति हमारी क्यों हो गई कि हमारे बच्चे ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने का, और बाहर के बच्चे भारत आए, ऐसा उनको हमारा देश आकर्षित नहीं कर पाता। तो हमारी इन्विजनिंग का एक एस्पेक्ट है कि वो दिन आएगा जब फिर से भारत की ओर लोग मुंह करेंगे शिक्षा के लिए। दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द टारगेट्स। आगे चलें। इसी प्रकार हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट, आगे चलें। सोशल इंक्लूजन, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, और आगे चलें। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इन एस्पेक्ट्स पर भारत सरकार ने ऑलरेडी पैमाने बनाए हुए हैं और उन पैमानों के आधार पर कुछ इन्विजनिंग हुई है कि 2047 के टारगेट्स क्या होंगे। मैं अब यहां से आपको जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट है, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस तरफ लेकर आता हूं कि इन सभी विषयों में जितनी भी बातें यहां हुई हैं, इन सभी विषयों में हम कहां खड़े थे, हम कहां पर थे, और आज वो ज्ञान परंपरा जो भारत की है वो कहां पर खड़ी हुई है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। ये इंडिया 2047 के कॉन्टेक्स्ट में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलें। एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है सारी दुनिया में जब हम लोग आर्यभट्ट का नाम लेते हैं। आप सबने सुना होगा आर्यभट्ट नाम के जो मनीषी हुए, जो आर्यभट्टीय नाम का इनका ग्रंथ है, आज भी वो ग्रंथ सुलभ संदर्भ के लिए उपलब्ध है। पाई जो कहते हैं उसका कंसेप्ट आर्यभट्ट ने दिया, शून्य की संकल्पना आर्यभट्ट ने दी। जो आपने सॉन्ग सुना होगा, जीरो दिया मेरे भारत ने, यह आर्यभट्ट का इट्स समथिंग लाइक hundreds of years back into this country। और इनके द्वारा जो दिया हुआ एक संकल्पना जो दुनिया बाद में स्वीकार कर पाई, जब इन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, यह संकल्पना उन्होंने अपने मेजरमेंट्स के साथ सबसे पहले दिया था। और प्लेस वैल्यू सिस्टम और एडवांस एस्ट्रोनॉमी के जनक माने जाते हैं आर्यभट्ट,
जिन्होंने हम सबके सामने ये संकल्पनाएं खड़ी की हैं। और एक्लिप्सेस जो आते हैं, एक्लिप्सेस की शैडो थ्योरी ये आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय में बताई। आर्यभट्ट एक ऐसी परंपरा के जनक थे, इनके शिष्यों में ऐसे परंपरा के जनक थे, इनके शिष्यों में बड़े विद्वान हुए जिन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और बहुत बड़ा विज्ञान का जो आगार है, the source of knowledge systems which emerged into the world, on which lots of researches emerged into latter ages, is based on Aryabhatiya, the granth that was given by Aryabhatta. Get ahead. मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ये पायनियर है। वराह मिहिर हैं। इन वराह मिहिर को मुख्य रूप से जानते हैं, इनका जो पंच सिद्धांतिका नाम का ग्रंथ था, आज भी उपलब्ध है। अधिकांश ग्रंथ आज भी आज के कॉन्टेक्स्ट में उपलब्ध हैं। वराह मिहिर अपने समय के एस्ट्रोनॉमर और पॉलीमैथ के एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते थे, और इन्होंने मुख्य रूप से उस समय में हजारों साल पहले जो नक्षत्र विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान में उनकी पूरा ग्रंथ नक्षत्र विज्ञान से जुड़ता हुआ है, और उन्होंने कॉमेट्स मिटियोर्स के कॉन्टेक्स्ट में विशद अध्ययन करके संकल्पनाएं हम सबके बीच में रखी। वराहमिहिर के ग्रंथ में प्लेनेटरी कंजंक्शंस और इक्लिप्सेस का भी उल्लेख है, और इनको वराहमिहिर को इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जो वास्तु कहते हैं हम लोग, इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जनक के रूप में वराहमिहिर का नाम आज भी लिया जाता है। He becomes one of those gigantic figures into Indian context who came up into 100 years back. आगे चलें। पाणिनि का नाम हम सब ने सुना होगा। Even today when we talk about grammar, in any of the languages of the world you talk about grammar, the biggest grammar text that is available in context of the present day is Panini's grammar. पाणिनि का जो सबसे आज भी, आज की तिथि में भी 4000 ग्रामेटिकल रूल्स के साथ पाणिनि का जो ग्रामर है वो अभी दुनिया में उपलब्ध ग्रामर लिटरेचर्स में सबसे बड़ा है। और इनका जो ग्रंथ है जिन्होंने बनाया था इन्होंने, उस ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। तो दैट अष्टाध्यायी बिकम्स मोन्यूमेंटल पीस ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर राइट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टिल टुडे। तो पाणिनि भी उस दिशा में एक बहुत बड़ा नाम है भारत का, जो भाषा के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में जिन्होंने एक मिसाल कायम की थी। आगे चलें। ये चरक, आपने चरक का नाम सुना होगा। चरक वैद्य थे, और वैद्य आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक का बहुत बड़ा काम था। चरक संहिता चरक ने रचित की थी, और उनका जो इनपुट था, उनके इनपुट में चरक संहिता के साथ में इन्होंने पहली बार डाइजेशन सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर विशद अध्ययन किया था, और उस अध्ययन के आधार पे हजारों तरह के औषधियों का उल्लेख किया था, और प्रिवेंटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट भी अष्टाध्यायी में उन्होंने दिया था। तो चरक संहिता में इन्होंने दिया था। तो ये चरक का भी नाम अपने आप में चरक संहिता के साथ जो आयुर्वेद नाम की चीज है उसके साथ में जुड़ता हुआ बहुत बड़ा नाम है। आगे चलें। उस समय में चरक की प्रयोगशाला में चरक के द्वारा अपने आप डेवलप्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो वो यूज करते थे, आज भी उनके मॉन्यूमेंट्स में, उनके ग्रंथों में उनका उल्लेख है, जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने डेवलप किया था अपनी प्रयोगशाला के लिए, और अपना जिस तरह का लैब डेवलप किया था। आगे चलें। भास्कराचार्य भी मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और एस्ट्रोनॉमर थे, और इनकी पुस्तक है उसका नाम है लीलावती। और ये लीलावती जो है मैथमेटिक्स और अलजेब्रा की मोन्यूमेंटल टेक्स्ट है अपने समय की, और अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के प्रकांड विद्वान थे अपने समय के। और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे हमने कहा शून्य की संकल्पना, ठीक उसी तरह भास्कराचार्य ने इन्फिनिटी की संकल्पना दी। तो ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भास्कराचार्य ने पहली बार दिया था, और 1114 सीई में भास्कराचार्य थे, हजारों साल पहले की बात है। तो हमारी ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा नाम है भास्कराचार्य। आगे चलें।
पातंजलि का नाम बहुत सुना होगा सभी ने। आयुर्वेद के साथ पातंजलि का नाम जुड़ता है, पातंजलि योग सूत्रों का नाम जुड़ता है, पातंजलि दर्शन का नाम जुड़ता है, और अष्टांग योग नाम की संकल्पना पातंजलि ने पहली बार दी थी। और पूरे शरीर का होलिस्टिक साइंस ऑफ बॉडी, साउंड, लैंग्वेजेस, ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट खड़ा किया था। तो पातंजलि को जो वर्तमान का योग शास्त्र कहते हैं उसके जनक के रूप में पातंजलि स्थापित हैं। एक बहुत बड़ा साइंस पातंजलि ने खड़ा किया और इनके ऊपर काफी काम हुआ, इनके काम के ऊपर काफी काम हुआ है, काफी सामग्री उपलब्ध है पातंजलि ने क्या किया था उसके ऊपर। नागार्जुन ये रसायन शास्त्र के विज्ञानी थे, बुद्धिस्ट सन्यासी थे और रसायन शास्त्र के विज्ञानी थे। एल्केमी कहते हैं एक ऐसा विज्ञान, आप किसी भी मेटल से सोना बना लेते हैं, इनको एल्केमिस्ट बोला जाता है अपने समय का, नागार्जुन को। और इन्होंने जो महायान बुद्धिज्म इस क्षेत्र में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, और मरकरी बेस्ड एल्केमी, जो केमिस्ट्री में मरकरी बेस्ड एल्केमी के ऊपर इनका बहुत बड़ा काम है नागार्जुन का। आगे चले, महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ने भारद्वाज संहिता लिखी थी, और भारद्वाज का नाम जाना जाता है इस कारण से कि भारद्वाज संहिता में पहली बार उन्होंने विमान शास्त्र का उल्लेख किया था। तो विमान नाम की जो एरोप्लेन्स की जो संकल्पना है, उस एरोप्लेन्स की संकल्पना राइट ब्रदर्स की बात करते हैं, लेकिन बहुत पहले विमान शास्त्र की संकल्पना और उसके सारे डिजाइन्स इन्होंने इनके ग्रंथ में पहले से मौजूद थे। अगले वाले में आइए, जो ये आप देख रहे हैं, ये पहला डिजाइन विमान का जो भारद्वाज ने क्रिएट किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, मरकरी बेस्ड इंजन सिस्टम, बॉयलर्स, फायर इमिटर्स जैसी संकल्पनाएं जो उन्होंने अपने समय में सोची थी विमान के हिसाब से। तो भारद्वाज ऋषि को विमान शास्त्र की संकल्पना का पुरोधा या जनक कहा जाता है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। आगे चलें, ये महर्षि कपिल हैं। ये महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का जनक कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन के जनक के रूप में महर्षि कपिल हैं, और जो 3 गुण कहते हैं, तो सांख्य फिलॉसफी के जनक और 3 गुणों के जनक है ये। द पर्सन हु प्रोपेंसिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ गुणाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वॉज कपिल। तेजी से चलते चले, काफी समय हो जाएगा। कणाद कण से होते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थियरीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड इवन बियॉन्ड एटम्स was there into the concept of what Vaisheshika philosophy that was given by Kanad. So this Kana se ye naam Kanad bana. This was, and he also talked about early studies, early theories of gravity and gravitational forces into his studies, which is available into the literatures which has been developed by Maharshi Kanad. आगे चलें, सुश्रुत का उल्लेख मुख्य रूप से मेडिकल साइंसेस में सुश्रुत बहुत बड़ा नाम है, और मेडिकल साइंसेस में ये दोनों विधाओं के तज्ञ थे। मुख्य रूप से सुश्रुत इज कॉल्ड अपॉन, नेम्ड आफ्टर सर्जरी, बट ही वॉज इक्वली अ मैन ऑफ मेडिसिन, बिकॉज इनटू सुश्रुत संगीता both the aspects are there, and Sushruta is especially known for surgery, and into his ग्रंथास विच ही डेवलप्ड, जो सुश्रुत ने ग्रंथ विकसित किए, उनके ग्रंथ में सुश्रुत संहिता में 8 प्रकार के शल्य क्रिया का उल्लेख है। 8 प्रकार की शल्य क्रिया जो सुश्रुत के समय में सुश्रुत के हाथों से होती थी, उनकी प्रयोगशाला में शल्य क्रिया यानी ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज और ऑपरेशंस दैट यू डू। 8 टाइप ऑफ ऑपरेशंस और सर्जरीज आर मेंशन्ड इनटू सुश्रुत संहिता इटसेल्फ। तो सुश्रुत के समय में कितने डेवलप्ड लेवल पर ये मेडिकल साइंसेस को उन्होंने, सर्जरी एंड मेडिसिन दोनों को खड़ा किया था, और उनका अध्ययन कितना गहरा था, दैट ऑल्सो बिकम्स अ मैटर ऑफ क्वेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर इनटू मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट प्लीज। ये जो मैंने बोला, ये सुश्रुत संहिता में इट हैज बीन कैटरैक्ट का उल्लेख है, ट्रांसप्लांटिंग स्किन फ्लैप्स का उल्लेख है, हर्निया, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, हेमोरॉइड्स को रिमूव करना, इस प्रकार की चीजों का उल्लेख सुश्रुत संहिता में।
आइए। जैसे हम डेंटिस्ट्री कहते हैं, सुश्रुत संहिता में दंत विद्या है, हम ऑस्टियोपैथी बोन्स का कहते हैं, और इस ऑस्टियोपैथी के सामने अस्थि हम कहते हैं। अस्थि यह संस्कृत का शब्द है जो सुश्रुत संहिता में है। इस प्रकार से बहुत सारे जो शब्द हमने लिए हैं आज के शास्त्र में, मॉडर्न मेडिकल साइंसेस में, वो उनसे ही इम्बाइव किया है। चलिए आगे चलें। अथर्वन नाम के ऋषि थे। ये अथर्वन नाम के जो ऋषि हैं, इन्होंने ही इज वन ऑफ दोज प्रोपेगोनिस्ट हु वाज देयर बिहाइंड जनरेटिंग अथर्व वेदा। वी से 4 टाइप ऑफ वेदास: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा and अथर्व वेदा. The अथर्व वेदा, concept of अथर्व वेदा, and one of those main protagonists behind अथर्व वेदा was the Rishi Atharvan. And for Rishi Atharvan, he studied huge lot onto fire and qualities of fire and nature of fire. So he was one of those protagonists of earlier days who was behind lots of sciences that has been included into अथर्व वेदा. चलिए आगे चलें. And he is Dirghatma. This person was mainly, his hymns and his prayers especially into one of the sciences that are related to human well-being. आगे चलें. Parashar Rishi, a man who talked about agriculture and agricultural researches in hundreds and thousands years back Christ. पाराशर संहिता नाम का जो ग्रंथ है, उस पाराशर संहिता के ऊपर आज शोध हो रहे हैं. एक बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक हुए पंतनगर विश्वविद्यालय के, जो पंतनगर विश्वविद्यालय में 1960 में ही आए थे, डॉक्टर वाई एल नेने. उन्होंने बाद में, जब वो उन्होंने रिटायरमेंट उनका हो गया, उसके बाद में उन्होंने एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई. पंतनगर विश्वविद्यालय में एक बार आए थे, उन्होंने कहा कि इस पाराशर संहिता के एक एक श्लोक के ऊपर एक एक पीएचडी हो सकती है. और ये ईसा से कई हजार साल पहले उन्होंने पाराशर संहिता लिखी थी, जिसमें 2000 के करीब श्लोक हैं, और वो सारे श्लोक कृषि से संबंधित हैं, कृषि शोधों से संबंधित हैं. ही वॉज वन ऑफ द मैन हु वर्कड ऑन टू एग्रीकल्चर. पाराशर संहिता. चलिए आगे चलें. ये पाराशर की प्रतिमा है जो कृषि महाविद्यालय के आगे में लगी हुई है. आगे चलें. जो मैंने 2 विश्वविद्यालयों का नाम लिया, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो 2 बड़े स्तंभ थे भारत के ज्ञान विज्ञान के दुनिया में खड़े होने के पीछे. ये 2 बड़े स्तंभ थे जो भारत में खड़े थे. अगले वाले स्लाइड पर आए. ये नालंदा विश्वविद्यालय में, जो नालंदा विश्वविद्यालय का समय के साथ में नालंदा विश्वविद्यालय का जो योगदान था पूरे भारतवर्ष के लिए, जो प्रमुख मनीषी निकले और किन किन विषयों में नालंदा विश्वविद्यालय वर्क करता था, ये उसका उल्लेख है. अगले वाले पर चलें. ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है. मैंने कहा कि भारत और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर एक क्षेत्र है, कंधार, जहां पर ये पहल मौजूद था, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय. और बड़े बड़े ऋषि जैसे ये पाणिनि, चरक, पाराशर और चाणक्य, ऐसे विद्वान इस तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकले. 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय ने दिया. और यहां से निकले हुए छोटे मोटे रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स नहीं थे, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप में नया विज्ञान को ही जन्म दिया. जैसे पाणिनि, चरक, पाराशर, चाणक्य जैसे लोग थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से बाहर आए. चलिए आगे चलें. यह भी तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख है, किस समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, कौन कौन से प्रोमिनेंट लोग वहां निकले, किन किन डिसिप्लिन्स को तक्षशिला विश्वविद्यालय ने मुख्य रूप से टच किया. आइए आगे चलें. इसी प्रकार से पुराने समय में, ज्यादा समय में नहीं लेता आपका, बस आपको उल्लेख कराने के लिए चल रहा हूं कि जो when we talk about India 2047 and Viksit Bharat, into that context the roots of the country, the roots of knowledge system, ancient knowledge system of the country is supposed to be understood. That is what exactly I want to align. So connecting the dots, पीछे मुड़कर डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात है केवल. ये साइकिल ऑफ युगास, जब आप काल गणना करते, काल गणना में कहते 2026, लेकिन भारतीय काल गणना को कभी आपने छूकर देखा है? कभी? ये प्रश्न है.
और नई संततियों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे ये महीना कौन सा हिंदी का चल रहा है, आप कहेंगे पता नहीं, फाल्गुन मास है कि चैत्र मास है। फिर ये फाल्गुन मास से लेकर 12 महीने हिंदी के क्या होते हैं जो हमारी काल गणना के होते, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्र, कभी सुना है क्या? कभी आपने सोचा है कि जन्माष्टमी में कौन सा महीना लगता है, शिवरात्रि में कौन सा महीना लगता है, विजयदशमी में कौन सा महीना लगता है, रक्षाबंधन कौन से महीने में आता है, कौन से दिन में आता है? अगर जन्माष्टमी बोला तो अष्टमी तो है, अष्टमी किस महीने की है? मनाना तो है आपको जन्माष्टमी, मनाना है विजयदशमी, मनाना है होली, मनाना है दीपावली, लेकिन यह नहीं पता है कि हिंदी की किस तिथि पर वो दिन आता है। बिकॉज वी हैव नेवर बीन प्रोबिंग इनटू आवर ओन रूट्स। जन्माष्टमी करके हम व्रत कर लेंगे, लेकिन किस महीने की अष्टमी है वो, ये नहीं पता। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो ये वाला जो स्लाइड है मैंने इसीलिए लगाया कि जो भारतीय काल गणना की व्यवस्था है, एक बार देखिए तो झांक करके भारतीय काल गणना की व्यवस्था क्या है। मींस आसमान को छू लें लेकिन अपनी जड़ों को न भूलें। दैट बिकम्स द बिगेस्ट क्वेस्ट एंड दैट इज सपोज टू बी द बिगेस्ट क्वेस्ट। वो सारी संततियां नष्ट होने को अभिशप्त होती हैं जो अपनी जड़ों से उखड़ जाती हैं। इसीलिए अगर जड़ों पे नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अपने रूट्स को जानना जरूरी है, अपने नॉलेज सिस्टम्स को जानना जरूरी है, अपने सेज एंड सीयर्स को जानना जरूरी है, अपने विज्ञान की जो यहां से खड़ा हुआ उसकी साइंटिफिसिटी को जानना जरूरी है, उसको थोड़ा टच करना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं तो जानना आवश्यक है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द क्वेस्ट। एनी हाउ गेट अहेड। और इसी प्रकार ये जो संकल्पना वैदिक गणित की, ये वेदों में है जो वैदिक गणित की संकल्पना है, आज के दिन प्रेवलेंट हो गई है, चर्चित हो गई है। पर वैदिक गणित की संकल्पना अभी एक अपने भारती कृष्ण तीर्थ नाम के शंकराचार्य हुए, उन्होंने इसके ऊपर पुस्तक लिखी जो वेदों से निकालकर लिखी और उसके बाद उसको प्रेवलेंस मिला। आगे चले। अब देखिए जैसे एक छोटी सी चीज है, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड, आप में से कुछ लोगों ने कभी टच करके देखा होगा, जैसे 99 इंटू 85 लिखा हुआ है। ये 99 इंटू 85 में 85 हटा दो, आप 85 हटाकर कोई भी अंक लिख दो और 99 के नीचे वो अंक लिख दो, कोई भी अंक 99 के नीचे वो अंक लिखो, 85, 84, 83, 84, 82, 81, 9, और उसके बाद जो 99 के नीचे मैंने 85 लिखा है, 100 से दोनों को माइनस किया तो 99 में से 01 बच गया, 85 में 15 बच गया, 15 और 01 को मल्टीप्लाई किया तो नीचे 15 हो गया। और इस तरफ जो 84 आया है वो 99 में से 15 माइनस करो या 85 में से 1 माइनस करो तो 84 आएगा। और जो नीचे में आ गया यही आपका आंसर है। ये एक संकल्पना है, एक सूत्र है वैदिक गणित का, 8415 बिकम्स द आंसर। ये एक सिंपल एक फॉर्मूला, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले जो वैदिक गणित के हैं, वो ऐसा जैसे शकुंतला देवी का नाम आपने सुना होगा, द मैजिशियन, जिनके फिंगर टिप्स पे था। आप अगर सैकड़ों हजारों अंकों के भी, गुणकों के भी मैथमेटिक्स को लेकर खड़े हो जाएं तो इन सूत्रों के साथ उसको ऐसे सिद्ध करते हैं, इट बिकम्स पॉसिबल एंड इट इज ड्यू टू वैदिक गणित कॉन्सेप्ट्स। सो ये जो निखिलम एक सूत्र है, ऐसे ऐसे अनेक सूत्र हैं, उन सूत्रों को कभी टच करके देखिए, इट इज लाइक अ मैजिक एंड यू विल बी अमेज्ड टू गो थ्रू ऑल दोस। आगे चलें। तो फिर मैं अपनी बात को पूर्णाहुति करते हुए, समेटते हुए जितनी भी बात मैंने कहने का प्रयास किया है, आई एम जस्ट trying to bring it down into consolidated form into 1-2 slides. Just why am I emphasizing all those is, I said Indian knowledge system refers to India's rich interdisciplinary traditions of knowledge developed over millennia, spanning science, maths, medicine, philosophy, linguistics, ecology, governance, arts, what not, rooted in texts like Vedas, Upanishads, Shastras and classical treatises. And it matters for India 2047. You cannot imagine India 2047 just disowning all those which you already have. You cannot think of India 2047 disowning your own roots. These roots are important, that is supposed to be paved upon to make an imagination of a developed country that will emerge. So as India approaches 100 years of independence, Amrit Kal, IKS is being seen as a strategic foundation for building a confident, innovative and self-reliant India
emerging out of the dreams of all those sages, seers, philosophers, martyrs, those who paved their lives to think of such India which is Vishwaguru. Such India which is Vishwaguru, which is standing in tall in front of the whole world and providing light and enlightenment to the whole world. Next one. चलिए आगे चलिए आगे हो गया छोड़िए अब. So by 2047 we aim to come up to a knowledge driven, not knowledge imparting society, innovative yet rooted society, globally competitive and culturally confident society, and a leader in sustainable development, wellness and ethical sciences across into the world. Good. Next. And finally this slide, which we am closing with, being global thinkers with timeless knowledge, proficient into science and innovations, and having global leadership, but getting ahead on the legacy of our heritage and the dharma with which we have come till time. बस इतनी बात कहते हुए, up to this point, I thank you all for being with me across these minutes, and thank you all for your patient listening and hearing. Thank you. Okay, sir, thank you. Here we welcome our distinguished featured speaker, Dr. A.K. Upadhyay ji, former Dean College of Fisheries, GBP UT. Thank you, We must sir. have seen and marked how beautifully Dr. Shivandu Kashyap could amalgamate the past and to make sure how it can be implemented for the future to Viksit Bharat 2047. And really it is one of the, keeping all grassroots knowledge what our ancestors could develop into new challenges, new India, new education. So why we should look ahead? Why we should go abroad? Rather asking the people to come to India and to garner the knowledge and implement. And thank you very much for a wonderful lecture. Thank you, Shivandu. Thank you, sir. On the behalf of SSITS, Dr. A.K. Upadhyay ji, they had expert a delightful thanks and words for the wonderful session. And again, I don't have proper words and sentences to express like delightful thanks for our keynote speaker, Dr. Shivendra K. Kashyap. Thank you, sir, for the truly enlightening, thoughtful, provoking keynote address. Your insightful reflections on the Indian knowledge system and the power of India's demographic dividend have been a deeper understanding of how these enduring pillars can shape the vision of Viksit Bharat at the rate 2047. You have beautifully connected our rich civilization wisdom, contemporary development aspirations, inspiring us to think beyond boundaries towards our roots and work with greater responsibilities and commitment. Your words have not only enriched the academician gathering but also motivated every participant to contribute meaningfully toward the nation building. On behalf of organizing committee members and all the present here, our management, honorable management team members, we extend our heartfelt thanks, gratitude to you, Dr. Shivendra K. Kashyap ji, for sharing your valuable time and knowledge guidance with us. And again, focus on key sectors. Again, I am sharing the facts and information. The vision emphasis on for impact at the rate 2047, agriculture modernization, healthcare expansion, manufacturing growth under Make in India, skill development, research and innovation. Thank you, sir, for this wonderful session. And quote, again, the great sessions leave us not just informed, but transformed. Thank you, sir. And one more quote I just want to share. A good session does not just share knowledge, it inspires action.
A good session does not just share knowledge, it inspires action. Thank you, sir, for this wonderful session. Now, the dignitaries, they had joined us few minutes ago or few minutes back. Again, I request our Honorable Director, ma'am, Dr. Seema Arora, ma'am, our Executive Director, Mr. Shaurya Arora ji, please come forward. I request guest management coordinators, volunteers, be prepared. And here, Dr. Alka Goyal ma'am, Dean, College of Community Science, GBP Pannagar. So I request our Honorable Director ma'am, Dr. Seema Arora ma'am, and our Executive Director, Mr. Shaurya Arora ji, to present a cap of pride, scarf of honor, and token towards our distinguished National Advisory Board member, Dr. Alka Goyal ma'am, Dean, College of Community Science, GBP Pannagar. Now we request our featured speaker, Dr. Veer Vikram Sahdev Singh, please come nearby stage. And again I request our Honorable Director ma'am, Dr. Seema Arora ma'am, and our Executive Director, Mr. Shaurya Arora ji, to present a cap of pride and scarf of honor along with the token towards our featured speaker, Dr. Veer Vikram Sahdev. And I request our co-convener, Dr. Vivek Trivedi ji, please join. Have a big round of applause. Thank you. Dr. Vivek Trivedi ji. And again we are continuing our journey of felicitation. Again I request our Honorable Director ma'am, Dr. Seema Arora ma'am, Mr. Shaurya Arora ji, Executive Director, our convener, Dr. Lalit Singh Bish ji, and co-convener, Dr. Prakash Pant ji, please come nearby stage. Now, we are having our distinguished featured speaker from US Nagar, Dr. Anu Namgyal ma'am, MS Obstetrics and Gynecology, Narayan Hospital and Trauma Center, Bharatpur, Rudrapur, Uttarakhand, our featured distinguished speaker. And I also request our keynote speaker, Dr. Shivendra K. Kashyap sir, please join. Have a big round of applause. Yeah. Again, I request to everyone, have a big round of applause. Yes, thank you aspirants, participants, thank you. Now, I request our co-convener, Dr. Lalit Singh Bish ji, please come nearby stage, and Honorable Director ma'am, Dr. Seema Arora ma'am, to present a token of affection towards our featured speaker, Dr. A.K. Upadhyay sir, former Dean, College of Fisheries, GBP Pannagar, and post-retirement appointment or appointed by Indian Council of Agriculture Research and Niti Aayog over the panel of accreditation for the Indian Agriculture Universities and Research Institutions. So Dr. A.K. Upadhyay sir, former Dean, College of Fisheries, GBP Pannagar. Have a big round of applause for Dr. A.K. Upadhyay sir. Thank you sir for your warm presence. You had spared time from your tight schedule. And sir will depart from the SSITS towards the Lucknow after his session. Thank you sir for your precious time with us. Thank you. From your tight schedule, you had spared the time. We have no words for you. We reciprocate the same, sir. Thank you. Thank you.
Now, I request guest management team members to proceed further towards the seminar hall 2. And sir is going there to present his session in the seminar hall 2, and I would like to share the title of our distinguished featured speaker, Dr. A.K. Upadhyay sir, and sir has taken the title Advancement in Education and Research through Integrated Discipline. Through integrated disciplines. Now we are proceeding further. As per the itinerary, we invite the Kumauni dance team on stage. Have a big round of applause for the Kumauni team, Kumauni dance team. Thank you. हवा ठंडो पानी पग गए बेड़ू का फल की ताणी देव सरसराती हवा ठंडो पानी पग गए बेड़ू का फल की ताणी देवतों का निवास है उत्तराखंड प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड ढोल दमों की थाप मसक बीन की छाप है उत्तराखंड होली न्योली नाख की नथुली रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड पैजाबी छमा छम हुड़का खमा खम ऐसा हमारा उत्तराखंड ऐसा हमारा उत्तराखंड शिवजी का बागवान सची फूल फुल्या छना अरे फूल फुल्या छना हाँ फूल फुल्या छना रेशमी रोवाला शचे मुंड मधारू जातीरो घाशी बोगाडुवा मला हात मधारू जातीरो रेशमी रोवाला सचे मुंड मधारू जातीरो घासी बोगाडुवा मला रेशमी रोवाला भावो राह केले पोथला उडेले हा अरे पारे नाम बैरागी धुनी सोले नाम संन्यास धुनी तो ऊंचा कबिलाश होली होली हाजी हा डांडियों की मारूड़ी जो रात की चांदना जैसे दिन को सूरज जैसे चैतवाली का दिन नचती हाजी हा कैला शो अच्छी घम घमा घमा ओ घम घमा हुड़की बजली मेरी सरुली बान नचली ओ घम घमा हुड़की बजली मेरी सरुली बान नचली ओ काजल को टिक लगाली नजर न टेक लगली ओ थम
पीतल पीटो बिजुले झम युवा कायन मरुमा बिजुले झम नंदा देवी म्याला डोला बिजली झम भादो का मैना मेरो बिजली झम ऊंचा डांडा काठा मागे चरतो उतार गया ऊंचा डांडा काठा एड़ो गोर झंडा घटी गया मेरी बड़ियो तेही वाला काठा रेंदी सूजो बीजो एड़ियो ओ डांडा काठू मारेंदी सूजो बीजो एड़ियो मेरी बड़ियो राम जी की एड़ी होली लखन का बाणा राम जी की एड़ियो हो लखन का बाणा मेरी बड़ियो लखन का बाणे होला दशरथ का पैगे लखन का बाणे होला तीखा तीखा बाणे मेरी एड़ियो On the behalf of Impact at the rate 2047, we express a delightful thanks towards the Kumaoni dance team as we have grounded with the Kumau region. So this is a ritual for us to see the Kumaoni dance. Thank you team for your preparation, for your days, hours you had spent to prepare this dance. Thank you all the cultural team members. Now we are proceeding further for our new chapter, respected dignitaries, esteemed speakers, National Advisory Board members, faculty members, delegates, young aspirants and research scholars. We'll now take a short tea break, so kindly we'll proceed for the designated refreshment area outside the building block sideways, and the break will be for 15 to 20 minutes, and break lasts for 15 to 20 minutes, and we request everyone for reassemble in the auditorium on time so we may continue with the next session without any delay. So please enjoy the refreshment, use the opportunity for networking and interaction with the diversified young research scholars. So this is the time to announce the tea break. So from the back door, all the young scholars, aspirants, Holding of this conference. Now, coming to the today's topic, you students have a great future. Gone were the past days. To take education was very difficult thing. People in rural areas were going by bicycle or by, there were no conveniences available. Now you have in this world every information on your fingertips. You can explore not only about your country, you can explore the future, prospect, education existing throughout the world. A great change has happened to be there, and one has to appreciate and welcome to such new avenues of learning. पढ़ाई लिखाई करने के इतने आयाम खुल गए हैं कि दुनिया नाटी लगने लगी है.
we should look ahead. And I tell you one thing, one more thing. There is no dearth of job. विकसित भारत में जॉब की कमी नहीं है. यू आर नॉट जॉब सिक्योर, यू आर जॉब गिवर. रेस टू द चैलेंजेस, इंक्रीज योर नॉलेज. चक्षु खोलो, कामयाबी अपने आप इतनी आएगी. Many of my students, they are at very high positions throughout the India and in world also. You'll find them at many places. They are not only contributing to themselves, but they are contributing to the nation. And such a flourished job is there in hand. They are providing jobs to the other people. So if you go through my lecture, I have mainly decided to address you people. Jara title back karo. Jara back karna. Just back. Now I have focused my stage where new education system should be there addressed to the students to make and secure their future. Under that pretext, with the inception of e-learning, what e-learning do? E-learning has brought to you in your vicinity, anywhere, any time, any place, the information which you want to seek in, you can get it. Just by putting some keywords, you are getting the knowledge of the ocean of the knowledge. Precisely what it is there. Suppose any student want to inquire something. What we do? Ask AI. Yeah, na? Ask AI. Okay. Ask Meta. Okay. Then e-learning has brought to you at your command the prioritized subject of your choice. जिसमें आपको नॉलेज चाहिए उसका पूरा नॉलेज और कुंडली दे देगी. साथ में ये नॉलेज को आप कैसे अपने फ्यूचर सिक्योर के लिए यू कैन इंप्लीमेंट दोज आइडियाज टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड लुक अहेड. So with the inception of e-learning, the education has come to your fingertips. Then what is integrated courses? Integrated discipline. आज पढ़ाई लिखाई बस वही नहीं रही जो आर्ट्स में है, साइंस में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो कन्वेंशनल टीचिंग में. आर्ट्स में है पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री. बट टुडेज इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन, इट मीन्स it has given an opportunity for you to usher your knowledge. आप एक सब्जेक्ट से बंद के नहीं रह सकते. आप उस precisely what is there, what are the concept of conventional teaching, some selected one, you choose them and implement into another multidisciplinary system. एक के एट्रीब्यूट लेना, आप जो पढ़ाई की हो उसको दूसरे डिसिप्लिन में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इम्प्लीमेंट करना है. इट ओपन अप द ब्रॉडर स्पीयर इन फ्रंट ऑफ यू. इट ब्रॉड्स अप द मोर नॉलेज अबाउट यू. आप बंद के किसी एक सब्जेक्ट के रह के नहीं रखते. आप देखो मैथमेटिक्स की जरूरत हर जगह है, बायोकेमिस्ट्री की हर जगह है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, बस कोऑर्डिनेशन जरूरी है. वो नॉलेज को अपना लेकर जो भी कंसेप्ट है डिस्कवरीज लेके उसको दूसरे सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट सक्सेसफुली करना. नॉलेज है ना, इससे फायदा क्या होगा? आपका सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ेगा, आपको आगे आपके भविष्य के लिए क्या रिसर्च करना है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या मिशन रखना है, ये भी अपने आप पता चलने लगता है. आई हैव गिवन सम 4-5 एग्जांपल्स. बिफोर दैट, let's see what are the advantages
of conventional or traditional teaching or traditional education than to integrated of disciplines. Next slide. Okay. हाँ ये देखिए. Now compared to traditional courses, integrated approach courses offer several advantages. काफी फायदे हैं इसके. Integrated courses offer student greater flexibility and choice in their study. आप जो सब्जेक्ट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसमें अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इतनी छूट है, फ्लेक्सिबिलिटी है आप. और आपका जो है अप्रोच जो है जिस तरह से जहाँ पे आप ले जाना चाहते हो वहाँ पे ले जाना सकते हो. By combining different subjects, learners have more options to customize their education to fit in and franchise their own interest of choice. उस नॉलेज को लेकर आप दूसरे में इंप्लीमेंट करोगे और जो अपना जो चाहते हो आपका जो फ्यूचर है प्रायोरिटाइज कर सकते हो उसमें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट. अरे नो नॉट नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट पॉइंट इज करो पहले. Next to next. Why you are hurrying, man? Huh? You are just. Gaining broader understanding and knowledge in multiple subjects. पूरा knowledge का भंडार खुल जाएगा. You will be able to garner lot of knowledge of multiple. It creates greater opportunities for learning and exposure to elaborate knowledge. जिस सब्जेक्ट में आप चाहते हो उसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकता है. क्रिएशन ऑफ ऑल टुगेदर न्यूअर डिसिप्लिन. कई सारे कंसेप्ट को साथ लाके एक नया डिसिप्लिन बन जाएगा आपका, नया एरिया बन जाएगा और उसको आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो इट मे ओपन अप द अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स और इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च. नेक्स्ट. नो नॉट लिस्ट. Then leads to derive multifarious advantages of developing technology, franchising their own choices through incorporation of research and development. अनुसंधान और आविष्कार ऐसे नहीं होते. आविष्कार करने के लिए अनुसंधान करना पड़ता है. अपने आइडियाज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ता है. ठीक. The application of new generation or generated knowledge pave the way for skill development. ये skill development है. आपने इतना knowledge gain कर लिया कि आप उसको अपना एक कहीं fit कर सकते हो अपना किसी काम के लिए, कि project के लिए, किसी चीज के लिए. तो skill development हुआ. It leads to skill development. Job opportunities. It opens up the frontier of job opportunities. लोग खोजने आते हैं कि कहाँ से कोई अच्छा बच्चा मुझे मिल जाए जिसको सब नॉलेज है इसमें. इवन फॉर सेटिंग देयर ओन ट्रेड. अपना खुद का व्यवसाय, खुद का व्यापार भी आप कर सकते. कमी नहीं है, जो संकल्प होना चाहिए बस कि मुझे कुछ करना है. ये बच्चों में डालना जरूरी है कंसेप्ट. आज का कोई भी स्टूडेंट बेचारे जो चिल्लाते हैं बेरोजगारी वगैरह, ऑल बुलशिट. इट इज इन योर हैंड. देन self-employment and revenue earning. Even there is lot of money and profit is there. Now, next slide. Now, this is the first example of integration of. Okay. The basic discipline is geography. भूगोल. मगर भूगोल complete भूगोल है, गोल है पूरा. Okay. Now geography is there. Now from geography, how many different types of other knowledge are based upon? Geography is just merely not finding any location or world timings. कोई जगह depending on latitude, longitude to select the geographical location, उतना ही काम नहीं है. देखिए, atmosphere and climate. Geography में एटमॉस्फेयर क्लाइमेट, हर संसार में, दुनिया में हर जगह कैसा क्लाइमेट है, कैसा एटमॉस्फेयर, इसके बारे में नॉलेज. जू जियोग्राफी एंड ह्यूमन रेस. ये एटमॉस्फेयर विद डिफरेंट एटमॉस्फेयर, देयर आर डिफरेंट हैबिटेट्स. व्हाई?
Some animals are common in Australia, and why some animals are same animals are common in Africa? Why not? जिराफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, दोनों तरफ जिराफ मिल जाएंगे आपको. Separate जो even now kangaroos are existing in Africa, like Australia. Why? And why not elsewhere? Why whales? The gigantic animals, the largest animal in the world, should exist in polar region. Why not in our waters? Get my point? Zoogeography means distribution of animals according to the climate and atmosphere. It's called habitat. Human race. Why people have different races all towards the equatorial region of the world? You find all black community. May it be Africa, may it be West Indies or Caribbean islands. From wherever equator passes, you find the black race. Above than equator, north and south, you find the color of the skin also changes. Okay, that is one point. Then satellite imaging. We developed lot of drone and satellites. The satellite in space, they go on capturing images. कहाँ पे पानी है, वो पानी में कितना संपदा है, कहाँ एग्रीकल्चर है, कहाँ क्या कमी है. This all information is provided by satellite imaging. Okay. Then agricultural related fields. Every different region has a different crop of crops. If wheat is more in Punjab and to our region, there is reason behind it. We find cauliflower more accessible to us rather than the equatorial belt. It is because of the climate. We find many different kinds of fruits. Alfonso mango is more familiar in Maharashtra, not to ours. हमारे यहाँ लंगड़ा दशहरी चलता है, उधर नहीं बनता है, क्यों? It is because the climate is different. Agriculture pattern, crop pattern, everything changes. Then oceanography and related areas. You know, it's one of the most uprising field. Oceanography means ocean. You know, you may be surprised, you note down somewhere. Ocean covers 71% of the Earth's surface. Our planet is called blue planet because 71% is water. And if area is given, the world ocean covers the area of 361 million square kilometer. लिख लो. World ocean का कितना है? 361 million square kilometer. What are all the oceans? Pacific, Atlantic, Indian, Southern Ocean, and the Arctic Ocean. So the ocean and ocean-related field, it comes from the basic knowledge of geography. Now, life undoubtedly began in ocean some few billion years ago. पहली life जो पूरे अर्थ में आई वो कहाँ आई? Ocean में आई. From that time to now, one of the largest representation of animals in the world exists in the ocean. Ocean is full of life. Ocean is different world. Like you remain here on land, continental land, ocean is altogether different life. More life, more romance, more lure, more everything exists in ocean. Contrary to the notion that the ocean bottom is smooth. No, ocean bottom is not that smooth. You have many mountains underneath the ocean, many volcanoes, many rough, rugged areas. Ocean is also happen to be the biggest supplier of oxygen to us. Many kind of life form exist in the ocean, right from largest whale to so many innumerable fishes, so many invertebrates, so many forms of life exist in the ocean. One takes advantage.
Now, you tell me one thing. We have been listening about exploration for the natural gas, for petroleum, for heavy metals, minerals. Ocean is big reservoir of, largest reservoir of minerals, heavy metals, natural gas, and crude oil. The ocean drilling activities ONGC is performing, all that. ये रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए और हमारा है, हमारा देश महान क्यों? We have the total coastal area spanning from west coast to east coast is about 8,129 kilometers. कितना है? 8,129 kilometers. Starting from that Kandla, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Orissa, West Bengal, total 8,129 kilometers. Imagine, the southern peninsular part is full. नैसर्गिक संपदा है देश को, ऊपर हिमालय है, नीचे जो है हमारे तीन तरफ से समंदर है. India dominates. In fish production, India stands second in the world. Okay. Now, ये संपदा क्या है? There is a term called EEZ. क्या? Exclusive Economic Zone. हम ये मानते हैं कि ओशन में कितना एरिया किस कंट्री का होगा, पानी में हमारी सीमा क्या होगी. हम जानते हैं कॉन्टिनेंट लैंड में तो मालूम है, उधर वाघा है, इधर अटारी बॉर्डर है, इधर अटारी बॉर्डर की तरफ इंडिया है, उधर पाकिस्तान है. पानी में कैसे बॉर्डर होगा? So this EEZ, the World Convention was held by United Nations in Geneva in 1976 to draw laws of the sea. उसमें ये कहा गया कि every country, just listen to me carefully, every country would franchise its territorial area up to 200 nautical miles from every shore. कितना? 200 nautical miles. अब nautical mile मतलब क्या है? एक nautical mile मतलब 1.19 statute miles. जो सड़क से जाते हो 1.19 अगर जाओगे तो 1 nautical mile होगा. It is roughly about 1.842 kilometers. हर शोर से 200 nautical miles. कांडला से 200, मुंबई से 200, रत्नागिरी से 200 nautical, हर जगह का 200 nautical miles पकड़ लो, वो अपना एरिया है. ये कितना है मालूम है? 2.02 million square kilometers. The total EEZ India possesses is 2.02 million square kilometers. No other country can enter in our waters. Whatever the wealth exists, right from ocean sources, your natural gas, your petroleum products, your heavy metals and all that, fish and everything, that comes to your own franchise, your own limit. No country can come and enter you in our waters to have any illegal type of explorations. बाहर के कंट्री को एक फ्लैगशिप में परमिशन लेना पड़ता है. जैसे ऑयल टैंकर जो इंपोर्ट होता है उनसे फ्लैगशिप परमिशन है. नहीं तो our coast guard, naval coast guard, they routinely are engaged in protecting our area. तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. जैसे बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे ब्लास्ट में फिशरमैन के बोट पे कुछ आतंकवादी आ गए और 10 आतंकवादियों ने बॉम्बे ब्लास्ट इतना बड़ा करवा दिया. इसको रोकने के लिए कोस्ट गार्ड एक्टिविटीज. नाउ आई मीन टू से इज दैट द ओशन इज द बिग सोर्स ऑफ future for all you guys. Then ocean engineering, drilling the ocean bed for exploring your heavy metals and all that. It is on-time activities. Then exploring the ocean for obtaining biological resources, fish and other distinct resources. So ocean is very much related, and the basic concept is geography. Then geology and geoengineering. What's that?
यही जो ड्रिलिंग अगर अर्थ क्रस्ट में करते हैं लैंड पे, आप देख लो आसाम की लैंड फुल ऑफ ऑयल है, पेट्रोल है, और जगह नहीं है। देन देर आर सम हेवी बॉक्साइट हुआ, जिंक हुआ, ये सबकी खाने हैं इंडिया में, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ आवर कंट्री। सो इवन जियोलॉजी और जियो इंजीनियरिंग ये बहुत अच्छा फील्ड है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। इट्स वन थिंग वेरी कॉमन। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, कॉल आई हुई थी। मैम उधर हाइटी हो गई डिक्लेयर, इसके बाद हाइटी है। हेलो, उधर हाइटी है, हाँ इधर हाइटी। You can find out its implementation at multifarious level, in a multifarious activity to cure any kind of disease. Nowadays, this immense importance of herbal medicine. Herbal medicine is upcoming field that you have to combine with pharmacology to find out the new drug. Okay. Now, आजकल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, दुबला होना हो तो ये खा लो, मोटा होना हो तो ये खा लो, इंस्टेंट रिजल्ट है। अगर कोई मोटा होना चाहता है आपको 1 महीने में मोटा हो जाएगा। वो जो फिल्म सितारे हैं अपना वजन बढ़ाते, कैसे वजन बढ़ जाते हैं, और जिनको वजन कम करना हो तो एकदम दुबले पतले हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग टू फार्माकोलॉजी। There are many kinds of drugs.
आदमी की डाइटरी मैकेनिज्म अलग अलग है. My choice is different, your choice are different, your intake is different, my intake is different. But we have a common set of diet, like dal, chawal, roti, sabji. Study that. If extra growth is there, that study comes from dietary. Dietitian के पास जाओ, वो dietary बताएगा. Then play pharmacology into it, and if the aim is to increase weight, there are some drugs called as probiotics. It's not only to the human, it is to the fish also. In a given ecosystem, if you want to raise the fish and its production and by weight, you use probiotics. That means artificial diet leading to the, for ushering the growth. Okay? Now likewise the next one, the biomedical engineering. ठीक है, बस हो रहा है. Now biomedical engineering, it is, the basic is medical. Here what is being done, your engineering concepts are implemented into medicine, biology. It's a new upcoming field with the projected growth rate of 5% for job opportunities between 2024 and 2034. 10 साल में 10% ग्रोथ रेट है इसका जॉब का. अब इसका काम क्या है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का? मल्टीपल फील्ड मर्जिंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. ठीक? डेवलप टेक्नोलॉजीज, डिवाइसेस and other appliances. Now, like so many appliances have come. EMI, X-ray, ये machine पहले थे क्या? They scan the entire body of yours to find out where exactly the problem exists. MRI हुआ और X-ray हुआ, devices. ठीक है, MRI एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है अंदर क्या प्रॉब्लम है, या अदर साउंडिंग. ठीक है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मैन. हाँ, देन अल्ट्रासाउंडिंग इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन इनहेलर्स, जो लंग्स का प्रॉब्लम है उनका ऑक्सीजन इनहेलेशन का. तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं है, नोबिलाइजर तो है, नोबिलाइजर के अलावा की एक मशीन है, वो लगा दो ऐसा और पूरा ऑक्सीजन बाहर से लेके आपको देगा. वेयर ऑफ द ऑक्सीजन डिफिशियंसी, दैट ऑक्सीजन मीटर वुड प्रोवाइड यू ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल अप्लायंसेस लाइक वेंटिलेटर्स, लाइफ सेविंग डिवाइसेस, BP machine, electronic machine, they are being used through biomedical engineering. Then there are all organs which are there for transplantation. आजकल देखो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लाइक हिप बोन्स टूट गया है, दूसरा हिप बोन लग जाएगा. आर्म्स, लेग्स, आर्टिफिशियल लेग्स बन रहे हैं. देन आर्टिफिशियल हार्ट, किडनी एंड लंग्स विथ देयर टिश्यूज. आजकल आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल लंग्स, आर्टिफिशियल किडनीज, उसको विथ रिलीवेंट टिश्यूज वो हो जा रहा है ताकि वो आपको वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन मदद करे. मेडिकल साइंस हैज गॉन अहेड with the use of. Okay, I'm just welcoming you. We are starting the session. Okay, thank you. In the seminar hall 1. Hello everyone again. Very good afternoon. Very good afternoon everyone. Thank you. And thank you for the accumulation. You have been accumulated here again. Now we are proceeding for the session 2 centered on the theme of immense social and national importance. And you know, the female aspirants, they are dominating this session. Women's health at the crossroad of technology, nutrition and policy. Is it right, ma'am? And this title or topic had been taken by Dr. Anu Namgyal, ma'am, MS in Obstetrics and Gynecology from Narayan Hospital and Trauma Center.
Dr. Namgyal ma'am is a dedicated healthcare professional known for her commitment to maternal and women's health, clinical excellence, and compassionate patient care. Ma'am, your expertise, practical experience will surely enlighten us on how technology, nutrition, and policy can collaboratively strengthen women's health outcome in our nation. On behalf of the organizing committee member, everyone present here, I most respectfully invite Dr. Anu Namgyal ma'am to kindly take the stage and deliver her insightful session. Have a big round of applause, everyone. Thank you, young aspirants. And now over to Dr. Anu Namgyal ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone. Uh, First of all, I would like to thank Six Sigma Institute for giving me an opportunity to be here amongst you all. So today, as we know that we have gathered here for Impact at 2047 Summit, and I have been called here as a gynecologist to speak on women's health. So, today we'll be discussing about women's health at the crossroads of technology, nutrition and policy towards Viksit Bharat 2047 with a strategic roadmap for India towards advancing women's health through digital innovation, nutrition security and policy convergence. Hi, I am Dr. Anu Namgyal, MBBS MS Obs Gynae and presently working as Director Obs Gynae at Narayan Hospital and Trauma Center, Rudrapur. So in this slide, we are envisioning a Viksit. Next slide, please. आप लोग करते रहो जैसे जैसे होता रहेगा मैं next करते रहना because मेरे पास अपना laptop. So in this slide, we are envisioning a Viksit Bharat 2047 with a vision and strategic pillars for a developed nation. So we are working towards a developed India by 2047, which is characterized by inclusive growth, envisioning that no individual is left behind. Second is technological prowess. While I was going through your poster presentations, there's a lot of talk on digital India and AI in, development of India. So of course we are talking about technological prowess, where we are highlighting the need of technology in development of India and a resilient healthcare ecosystem where we fight healthcare challenges and hardships towards a better India by reducing the expenses of healthcare to get a better future. So the key pillars for this transformation are health and nutrition security, technology-driven public services, women-led development. I'm talking about women-led development, not development of women here. So you have to be very, keen on that. Financial protection and inclusion. So by health and nutrition security, we are ensuring physical and mental well-being of every individual, whether it is a woman, child, or an adult, towards a better India. Leveraging digital public infrastructure, AI, and data analytics to deliver efficient last-mile governance. Shifting from women's development to women-led development, highlighting the critical role of women towards social and economic growth of India. Financial protection, where we fight all the hardships, especially related to health expenses, which later in turn help in overall development of our country. Financial security, where financial access and banking services are provided to every individual of the society, hence leading to economic growth of the society.
So why women's health is foundational? Women's health is foundational because it acts like a multiplier effect on the national development. So investing in women's health is not just a moral imperative, but an economic necessity for achieving Viksit Bharat 2047. The various strategic impact pillars are increase in human capital through maternal, neonatal and adolescent health by ensuring that every woman gets the best healthcare facilities, which in turn will lead to the better workforce generation and human capital workforce generation, and healthy adolescents ensure a robust future workforce and break the cycle of malnutrition. Now, how it will act as economic multiplier? By labor force participation and productivity. And the long-term value will be intergenerational impact. Healthy mothers will give rise to healthy children, which in turn will lead to healthy adults, increasing the workforce population, hence leading to the economic growth of our country. So, next slide. Here we see a current challenge snapshot of the year 2024-25, where currently married women are classified as underweight and the number is up to 14%, which is really very alarming. The Global Health Index for India is 105 out of 127 in 24-25. Now this Global Health Index, what is this? This is an annual report which is prepared by Worldwide Concern and Wealth Health, in which all the countries are ranked according to the Global Health Index, which is based on 4 parameters. So India was at 105 in 24, which has come down to 102 in 25. What we are aiming for? Of course, we want to rise further by the year 2047. And Government of India is already working towards that initiative. The prevalence of anemia in women of reproductive age group is up to 57%, which is alarmingly high. Now, why is anemia prevalent? We will talk about it later on in my later slides. So, early ANC checkups are up to 68%. What concerns more is still, after so many health programs by government, 13% of deliveries are occurring in homes without a skilled birth attendant. So what you are seeing here is, even though the government is doing lots of initiative for our people, people are not getting access to that. Why? The reason we will talk about later, in later slides. IFA compliance, which is iron and folic acid compliance, is at 23%. So IFA is being distributed through Government of India to every antenatal mother and postnatal mothers. But compliance is at 23%. Why? Why? I am just sharing this challenge snapshot with you all because I want to give you a time to ponder on these numbers, which are alarming for everyone. I want you to ponder why these numbers, though the government is doing so much for our population. The specialist shortage is up to 80%. The specialists in government sectors, in PHCs, in CHCs are less by up to 80%. So what we see here is, while institutional deliveries have improved, quality of care and nutritional foundations still remain weak. So here, in this next. So in this slide, a convergence framework is outlined with a strategic synergy. A convergence framework is a Government of India initiative with a mission to make every woman healthy and empowered. So it has various strategic synergies, with tech, nutrition and policy being its key pillars.
With technology as an enabler, nutrition as the foundation, and policy being the framework of this convergence mechanism, we work towards a better India. So first we'll talk about the current state analysis. We'll talk about where we stand in 2024-25, examining critical health outcomes, systemic gaps, disparities, and regional patterns which shape the roadmap towards 2047. Again, this is a health indicator dashboard for women where maternal mortality ratio, that is number of women per 1,000 women who lose their lives during delivery, is 97 per 100,000 in 24. This has come down alarmingly from 140 to 2014. So here you can see that almost 140 women out of 100,000 women were dying during their childbirth process, which has come down to 97, which is a very good improving trend. So the government is already working towards that initiative. What we have to do is we have to collaborate with the government to help in decreasing these numbers. Infant mortality rate is 28 per 1,000 today, which has come down from 40 per 1,000. So from 40, improved newborn and child health services has led us here that today we are standing at a number of 28. It is still not, better, but at least we are going towards the better. Under 5 mortality has come down from 45 to 32. The prevalence of anemia, as we have already discussed, is up to 57%. ANC coverage, though ANC coverage is given free by Government of India, it is still at 58%, where institutional births range from up to 88%. The screening of cervical cancer, breast and oral cancer is less than 2%. I am taking a gap here for you to see how there is a stark difference between the numbers on the upper part of the slide and numbers on the lower part of the slide. The upper part highlights that we are towards the better future, whereas the lower part, where we are talking about prevention strategies, we are still seeing that India is way behind in prevention and screening services. So this shows that though India is showing our system is reactive towards pregnancy and childbirth, but we are very passive on long-term women's health. So by talking about Viksit Bharat 2047, we have to aim that India talks about its maternal and reproductive health and also doesn't forget to talk about the prevention and screening programs. So this is the nutrition crisis showing that child malnutrition indicators where 35% of children are still experiencing child stunting and 19% are still experiencing child wasting. The intergeneration cycle of malnutrition is very evident from this cycle. Malnourished mothers, as we have already discussed, that malnourished mothers will give rise to low birth weight babies who grow into stunted children and undernourished adolescents. So we have seen in our previous slide that though we have decreased our numbers of child mortality and infant mortality, why our global health hunger index is still so high? So we are having a global hunger index of so high because these stunting and wasting and undernourishment is still prevalent in India, thus focusing on the need of nutrition-based policy in India. So this slide, we have already talked about this slide, Global Health Index, which is based on the component indicators of undernourishment, child wasting, child stunting, and
child mortality. So though we have improved on child mortality, the other three impact pillars are still present. These are the system gap disparities between rural and urban India, showing a stark difference in the access towards health in rural India. The public health infrastructure deficits in rural India is up to 80% shortage of specialists, 3% deficit of doctors at PHCs, and 13% deliveries still occurring at homes, which is a very difficult thing. Though Government of India has revolutionized this by providing 100% maternal care free to every woman in India, still 13% deliveries are occurring at homes. So coming over to the nutrition pillar, ensuring that women's nutrition security across critical life stages from adolescent, preconception, labor, pregnancy and lactation to build the foundation for healthy India. So national nutritional challenges for women are triple burden of malnutrition, that is undernutrition, micronutrient deficiencies and rising obesity, with key determinants as high anemia prevalence, low diet diversity and quality, adolescent malnutrition, and social norms and prioritization where gender bias is still there in many homes. So for this, Government of India has launched Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan was Government of India's flagship program, which after its great success, then we came into Poshan 2.0. So what changed in Poshan Abhiyan and Poshan 2.0? In Poshan 2.0, there was targeted intervention towards improvement in nutritional outcomes of children, pregnant women and lactational women. So the key objectives of this Poshan Abhiyan are to reduce stunting by 2% reduction per annum among children, to combat undernutrition by 2% per annum, and to eliminate anemia by almost 3% every year. The delivery platforms provided are Anganwadi services, Jan Andolan, which is a mass movement, and of course the behavior change, where every individual's behavior needs to change towards the compliance of these programs. Through tech and monitoring, these services can be tracked. So Poshan tracker apps are launched, growth monitoring devices are launched, and direct benefit transfers are given to Aadhaar seeded accounts for cash transfers. Now we'll talk about Anemia Mukt Bharat, which is 6x6x6 framework, in which 6 groups are targeted, 6 interventions are done, and 6 mechanisms, institutional mechanisms are followed to reduce the burden of anemia. The beneficiaries are children from 6 to 59 months, children from 5 to 9 years, adolescents, women of reproductive age groups, pregnant women and lactating women. So here we see that targeted interventions are being done by the government to reduce the burden of anemia. Now what are these interventions? First is distribution of prophylactic iron folic acid supplementation. Second is deworming. What I tell all my patients is every 6 months, you should deworm yourself and your family to decrease the burden of anemia and to protect yourself from various harmful diseases also. So every 6 months, please deworm yourself and your family. Now, intensified behavior change communication. Intensified behavior change communication, as we saw in the previous slide, that though the Government of India is distributing iron and folic acids free to up till 87% of the population, yet the compliance is only 27%. Now why the compliance is so low? The compliance is so low, one, because every person needs to change their behavior towards these IFA tablets. They need to have awareness how important these tablets are for a woman and for her baby. Second, some mild side effects of these tablets lead the women to drop these tablets in between their cycles. And third,
there's no support to the woman from her family who, tells her that you should take these irons. So behavior change is needed not only at the level of the woman herself, but from her family also, who supports her in that journey and tells her how important these tablets are. Supply chain management system has to be improved so that there is no deficit of these tablets. Now, AMB dashboards and digital portals are kept, research and innovations are done, and communication strategies are being followed. So what is the mission of this Anemia Mukt Bharat? One is diagnosing and testing, supplementing and treating dietary diversity, monitoring and tracking the system towards anemia-free India. We have already discussed this slide where we see that in 2015, the compliance towards IFA was 14%, which has increased drastically to 26%. Now we want to change the behavior, change the mechanism, change the institutional mechanisms to bring this level up till at least more than 90%. Various community nutrition gardens are being set up for the food security, where more than 4.3 lakh Poshan Vatikas have been set up, where self-help groups are helping in these kitchens, and the integration of millet revival program into take-home ration system. Now, what is this millet revival program? I don't know if you have heard about it, but you being an agricultural university, I'm sure you must be knowing that UP government is doing a lot for this millet revival program. Recently, the government of UP has invested up to 5,000 crore rupees setting up more than 202 food fortification centers and research centers for this millet revival program. Why? Because millets, as compared to the other crops like rice, are very environment efficient. They need less than 70% of water that is needed for the growth of rice. I know I may be sounding very foolish talking about agriculture with you all, because you all must be knowing more than me in this field. So, community nutrition gardens have been set up promoting backyard poultry and kitchen gardens in rural households to diversify diets with vitamin A and C rich produce. Bio-fortified crops and millets are being produced. Iron-rich bajra, zinc-rich wheat, iodine in salt, which we all know of. So last mile distribution by leveraging take-home ration plans run by women self-help groups to ensure quality and timely delivery to the beneficiaries of this program. And it is a climate resilient model, as we have already talked about. Coming to section 3, which is the technology pillar, building the digital rails for last mile health, creating a unified ecosystem of digital identity, longitudinal records, telehealth access, AI-driven insights, and citizen-facing tools to transform women healthcare delivery. So this is an overview of digital health transformation, where we create an open digital ecosystem that connects patient, providers, and payers through interoperable standards. The biggest example is Ayushman Bharat Digital Mission for this. AI machine and learning have been processed into the system, citizen-facing tools and literacy, and telehealth integration into this system. So what is this Ayushman Bharat Digital Mission? Its scale and reach. All of you present here must have heard of Ayushman Bharat. So this is a program run by Government of India where at least 1,82,000 centers, health centers have been integrated up in this, and 420 million digital health records have been created. 760 million people have already created their Aadhaar accounts, and 120 million families are covered under this system. Immunization tracking is through UWin portal and nutrition integration through Poshan app.
So this Ayushman Bharat digital mission ecosystem creates a unified view of women's health, ensuring that nutrition data, ANC records, and immunization history travel with the patients wherever they go, even if they are migrating from one place to another. I was seeing a poster in your ground floor about AI in health system. So recently in 2024, Google DeepMind and Arman, which is a non-profit based organization based in Mumbai, have used AI in predictive analytics to reduce maternal mortality through targeted interventions. So what they do is they call in vernacular languages to the directly to the women. They show some videos, they send messages, and hence 30% higher engagement was seen, where 145 million calls were delivered. So here you see that AI helps in predicting which mothers are likely to disengage from vital health information. And this allows health workers to make targeted interventions, ensuring that no woman is left behind. Now we'll talk about telemedicine at scale, that is eSanjeevani app. You must have also taken benefit of eSanjeevani app during COVID times, where it was very difficult for us to get out of our homes, because we have worked on these apps where health services through various specialists are provided by government on these apps, where you can directly call the doctor through eSanjeevani app and a digital prescription is given to you. Even doctors sitting at PHCs, CHCs can call a medical college on eSanjeevani if they have any questions regarding any patient, or they need specialist care for a patient. I was working in Himachal at COVID time, and there was a patient in Spiti, which is covered in snow for almost 6 months, who was suffering from preeclampsia. She had just given birth to her baby, and her blood pressure was 200 by 120. She could not be referred from there because there was no roads available for her to reach our health institution. And she was at the care of the community health center there. So because of this app, eSanjeevani, the doctor who was posted there actually contacted us through eSanjeevani app, where we gave the treatment which was followed there, and then the patient's life was saved without being referred from that institute. The biggest happiness for me was when after 6 months I visited that hospital, that patient and her family came to me with a dabba of ghee saying, "Doctor, you saved her life through just, this eSanjeevani prescription." So here we see that government is doing so much for us, and again, like, we should also collaborate with the government in improving these services. Mobile health has been launched for rural women, where Kilkari and Mobile Academy has been set up. SMS alerts and reminders are being sent, and danger signs awareness are being sent to the women in messages and vernacular phone calls. Now coming over to innovations. Again, India has, come to femtech innovations now, where NST trackers, BP trackers, vital trackers are being set up, where you can actually put those trackers on yourself, like glucose monitoring, sugar monitoring, and your doctor can see your charts, sitting almost like 3,000 kilometers away from you, where health benefits are given more to these patients. Now, we are in the world of robotic surgery now. India just saw its first robotic surgery, where a surgery was conducted on a patient through a robot by a doctor sitting almost 5,000 kilometers away from that patient. So that's a very good sign towards Viksit Bharat 2047 for all of us. Now the key solution categories are maternal health monitoring through these innovations, reproductive health apps, which
most of the Gen Z must be using nowadays, their period trackers, their cycle trackers, their ovulation trackers, and non-invasive diagnostic and mental wellness platform. Here I'll focus again on mental wellness program. Again, where we are talking about so much health innovation, mental wellness is something that we all need to talk about. Coming over to electronic health records and data integration, longitudinal maternal child health records are being maintained, labs and imaging integration are being done to the system, again so that your doctor can see your reports, see you from miles away. And these data sharing which is being done under these platforms are consent based. So it is safe for the population also to explore these options. Now coming over to the policy pillars, the Government of India has already launched its National Health Mission on maternal health, where a comprehensive strategy for reducing maternal mortality and improving reproductive health outcomes have been done. The core strategies are reproductive, maternal, neonatal, child health and adolescent health framework, infrastructure strengthening, human resource capacity with key schemes like Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram and Suman initiative. With quality assurance programs like Lakshya, where benefits are being given to health centers on the basis of their quality care given to the population. Maternal death surveillance are being done and various delivery points have been set up. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. So on 9th of every month, Pradhan Mantri of India has requested all the volunteers, even from private sectors, to give free OPDs in government hospitals for every antenatal woman. So even at centers where a gynae specialist is not available, you can just talk to the CMO of that place and you can request them that I, as a doctor who is sitting in a private center, want to volunteer for this Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, where I would conduct free OPDs on 9th of every month for every woman to get safe access to maternal health care. Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan has also been launched. Niti Aayog and WCD policy direction, which sir has already talked about in seminar 1. Now health financing and insurance coverage. This Ayushman Bharat scheme has reduced the out-of-pocket expenditure from drastically, and the target is to reduce this by less than 30% by 2030, where almost 50% beneficiaries of this is females. 5 lakh rupees coverage is given to every family every year, where 120 million families are covered to decrease the financial hardships, especially for health expenses. What is the target? Target is to achieve 70% workforce participation from women for economic growth and societal benefit, and through interministerial convergence framework. Now, integration and synergies. Here we see that tech-enabled nutrition monitoring is being done with these blue circles. Next. With these blue circles representing the platforms like Poshan Tracker, RCH portal, Anemia Mukt Bharat portal, green as the input as growth data, HB levels, dietary intakes, and actions being taken are SMS alerts, home visits, take-home rations, iron and folic acid supply towards a better nutritional status. The connected care is given through Poshan Tracker, growth monitoring, anemia dashboard, and supply chain tracking. What is the impact of this tech-enabled tracking? The impact is to reduce the data lag from months to days,
where it would take months for us to know where we are lacking. Through these apps, it will just be covered in days. We will know where we are lacking and then we can work upon them. So the roadmap to 2047, the strategic priorities, milestones and execution pathways to women's health and equity. This is a strategic priorities and milestones from 2026 to 2047, where phase 1 being the foundation, phase 2 acceleration, phase 3 consolidation, and phase 4 towards achieving excellence and becoming a global benchmark in healthcare for women in India. Thank you. Again, good afternoon, everyone. So, we extend our heartfelt gratitude towards Dr. Anu Namgyal ma'am, MS Obstetric and Gynecology from Narayan Hospital Trauma Center, Bharatpur, Rudrapur, for her highly insightful and impactful session on women's health at the crossroads of technology and nutrition and policy. Ma'am, your comprehensive perspective on the integrating medical technology, nutritional awareness, progressive healthcare policies has truly enlightened us. The practical insights you shared from your clinical experience have deepened an understanding of the evolving dimensions of women's healthcare. Your dedication in improving maternal and women's health outcomes is truly inspiring. The session has not engaged our academic knowledge but also encouraged us to think more responsibly and innovatively towards strengthening healthcare system. So quote, a good session does not just share knowledge, it inspires action. A good session does not just share knowledge, it inspires action. So a fact about our India, information strong immunization program. India runs one of the world's largest immunization drives under the Universal Immunization Program UIP, protecting millions of children annually. So we India runs world's largest immunization drives under the UIP program. Thank you. So now in the sequence we humbly request our Honorable Director Ma'am, Dr. Seema Arora Ma'am, and our Executive Director, Mr. Vansh Tabarji, to come nearby stage. A felicitation process for our dignitaries who had arrived. So, first, we call Mr. Arvind Saini ji, Managing Director, Leading Sheet Metal Industry, Core Tech Dynamics, Gadarpur. Have a big round of applause. And I request guest management coordinators and volunteers to prepare the cap of pride, scarf of honor along with the token. Impact at the rate 2047. And here, Executive Director Sir, Mr. Vansh Tabarji, and our Honorable Director Ma'am, Dr. Seema Arora Ma'am, is representing token of affection towards our National Advisory Board member, Mr. Saini ji, and his MD, Core Tech Dynamics, Gadarpur. Now in the sequence, we call Mr. H.K. Sharma ji, Factory Head, BCH Electrical Limited, Pantnagar, our National Advisory Board member. Have a big round of applause. Though he is having a tight schedule in the industry, BCH Electrical, we all know about BCH Electricals Limited, Pantnagar, and sir is factory head. They are managing each and everything for all the dimensions. Mr. H.K. Sharma ji, again sir and ma'am presenting token of affection, a cap of pride, a scarf of honor along with the token towards our National Advisory Board member H.K. Sharma ji. And in this sequence again we call Dr. Manoj Bishji, and his principal, College of Pharmacy, Jeevan Rekha College, Kashipur.
Dr. Manoj Bhishji. Have a big round of applause once again for all the dignitaries. Yeah. Now, in the sequence, we call an intellect person from the Uttarakhand, a name known by each and everyone from the department or domain of computer science. As we talk several sentences and phrases related to AI and computer science, intellect person, our National Advisory Board member, Mr. Ashish Mehta ji, Head and Professor, Computer Application Department, Computer Application Sciences Department and Kumaon University, Nainital, Mr. Ashish Mehta ji. Please come nearby stage. Yeah. Have a big round of applause once again. Thank you all. And Mr. Ashish Mehta ji, Head and Professor, Computer Application Science Department, Kumaon University, Nainital. Thank you, sir, for your warm presence, and you had spared time for Impact at the rate 2047. Now I request our IT team to coordinate with Mr. Dr. Nitesh K. Jain, sir. Ranjan ji, are we ready? Are we ready? Team. Okay. As we are having two keynote speakers and Dr. Shivendra Kashyap ji, they had also enriched the session of Impact at the rate 2047. So, just a minute. Hello everyone. Sorry for the interruptions. So, respected dignitaries on the dais, honorable management team members, faculty members, esteemed National Advisory Board members, dear students, young aspirants, we know to move online keynote session, that is session 4 and keynote session focusing on highly significant theme, transforming healthcare systems, pharmacy at the core of Viksit Bharat vision. As India advances toward the goal of Viksit Bharat at the rate 2047, strengthening our healthcare systems becomes a national priority. Pharmacy, pharmacology, toxicology play a crucial role in ensuring safe, effective, and accessible healthcare services. And to deliver this session, keynote session, we are privileged to have with Dr. Nitesh K. Jain. Sir is head Department of Pharmacology and Toxicology at Modern Institute of Pharmaceutical Sciences, Indore. Also serve as a visiting professor toxicology at Centro Escolar University, Philippines. His vast academic experience and international exposure bring a global perspective to the evolving landscape of pharmaceutical sciences and healthcare transformation. Sir, your expertise in pharmacology and toxicology will undoubtedly guide us in the understanding how pharmacy can serve as a cornerstone in building a resilient and future-ready healthcare system in the India. So on the behalf of all the dignitaries presented over here on the days, I respectfully, humbly invite Professor Dr. Nitesh K. Jain sir to deliver his keynote session. Now over to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am, for your visit. Thank you for the precious time. Yeah, so very, who is there? Yeah, yeah. So very good afternoon to everyone, and thank you to Six Sigma Institute of Technology and Science for giving me this wonderful opportunities to say something on this special national conference. Basically, we are talking about the Viksit Bharat 2047. So again, I'm very thankful to the co-convener, Dr. Prakash Spencer, Rajat ji, and all the eminent honorable management from the Six Sigma Institute. So it's really a great matter.
era, scientists and scientists from all over the globe. So we need to understand how we can transforming healthcare system and pharmacy at the core of Viksit Bharat vision. It is basically something very good in terms if we are talking about the Viksit Bharat 2047. Again, I would say that could be the proud moment being a pharmacy academician, researcher, and scientist that has world, right? And India is playing a major role, especially in pharmacy, as we have seen in COVID-19 pandemic. India, due to vaccination mastery, we have provided that vaccination to all over the globe. So this is a respect what we are getting from the international regulatory body. And believe me, now we are the fourth largest economy of the world, and soon we will become third largest economy of the world. And believe me, trust me, pharmacy will play a major role. Now everybody is talking about the quality medicine, ethical considerations. Now we are talking about the recent era of artificial intelligence. So moreover, we will focus on the transforming healthcare with the help of technology integrations, because being a man of pharmacy, pharmacology and toxicology, this is my responsibility. This is the responsibility of all Indian fraternity who belongs to the pharmaceutical industries, pharmaceutical academician fraternity. We must focus on the safety first, right? So as this is the era of AI, and from this particular global networking in this particular national conference, I would say one message to everyone: don't be afraid with the AI. AI cannot replace us, because in pharmacy we are making medicine, right? But AI is a technology. We have to adopt this technology for speed up the drug discovery, and definitely we can give good to the global society. If we are talking about the United Nations goals, always we are looking for the sustainability, and definitely we, if we are going with the technology, we can give something best to the world. So in this particular presentation, I will highlight how pharmacy can strengthen and how it can fulfill the vision of Viksit Bharat 2047. So So, this is everyone. Our Honorable Prime Minister is taking so much initiative, especially in pharmacy field. So, I would like to appreciate his efforts, his vision, and definitely appreciation coming from the Honorable Prime Ministers. And we are getting this respect from all over the globe. So now India become pharmacy of the world, my dear friend. So this is a proud moment for all of us. Now India becoming pharmaceutical industry is not only a great source of innovation in employment generation, but it has also become a global healthcare provider. During the COVID-19 pandemic, we have seen drastical changes. India has shown exemplary work at international cooperation. By sending valuable medicine to many countries, India is now well renowned for its pharma innovation and for producing high quality medicine at a low cost. This is not a tagline, my dear friend. This is not the things which we have to mention as India become pharmacy of the world. Now it comes as a responsibility. Now we have to provide medicine to all over the globe, not to the India only. So with the help of such technologies like AI is emerging, Gemini is emerging, we are not completely depend on the AI integration, because we have a good manpower with the AI. That is, all Indians have emotional intelligence. So we have beautiful heart for making this medicine for the globe, and always your heart will say about the safety of the medicine is the first goal of Viksit Bharat 2047. So on this platform, I would say that artificial intelligence is transforming pharmaceuticals from discovery by chance to discovery by design. Again, I'm saying that AI cannot replace us, but AI is a technology can help you to predict the proper designing of the medicine. It can speed up the drug discovery process, and definitely it will help in the clinical trials and pharmacovigilance system. So AI is not just accelerating drug development; it is redefining how medicine
are discovered, tested, and delivered. So in the future pharmaceutical industry, data is the fuel and AI is the brand, my dear friend. So AI enables smarter drug discovery, safer clinical trials, and personalized patient care at all the unpretended speed. So speed can be more, but ultimately we have to think about the safety. If we are going for the any drug discovery based on the AI applications, any technology, but being a scientist, being a academician, being a researcher, this is the duty of everyone. We must think about the ethical consideration, ethical transparency in the AI data. So artificial intelligence empowers scientists to make faster, evidence-based decision across the drug life cycle. The future of pharma belongs to those who can combine human expertise with the AI. So we cannot depend on the AI completely because we are saving life of many. As being a pharmacy officer, this is the responsibility to give a safe medicine to the mankind. If we are talking about the human-centric healthcare solution, this is the man motto. AI is everywhere, data is everywhere, Google is giving so many things to you. But my dear friend, if we are combining this AI with the human-centric healthcare solution, it will definitely give a proper development and use of AI system in healthcare that provide transparent, interpretable, understandable decision-making process. So ultimately, we have to think about the three things, that is explainability, means AI models clearly show why and how a decision or a prediction was made. Example, highlighting key biomarkers, imaging regions, and molecular descriptors. Human-centric design AI systems are designed around the needs, safety, ethics, and workflow of patient and healthcare professionals. To trust and accountability, decisions are audible, bias aware, and aligned with the clinical and regulatory standards, right? So we have to follow the international regulatory bodies as we become pharmacy of the world. So we have to provide safe medicine to all over the globe. There are many international company, multinational company. Ultimately, they are believing on the Indian pharmaceutical industries, in the Indian clinical trial organizations, where they are going to conduct their clinical trials because they have a faith on us. So this is the responsibility, this is the duty of each and everyone who belongs in the pharmacy. These are the key components, means if we are talking about the data, whatever we are taking, because why I'm talking about the AI, because it's emerging and soon it will become the important components in the drug discovery also. But what we need to think about the safety first. So transparent algorithm must be here, interpretable predictions, clinician in the loop system, ethical and bias awareness design, regulatory compliance in the validation. Why it matters? Because we can improve clinical confidence, better ability approval chances, reduce medical legal risk, enhance patent trust. And if we are talking about the explainable AI, means human-centric AI, build a trust in the healthcare innovations by providing critical for safe drug and device development. Human-centric approach ensures sustainable healthcare transformation also. So AI is basically helpful in all the way in the drug discovery, but basically the two phases are very, very important. That is clinical trials and pharmacovigilance. That is driving innovation and sustainability in modern drug discovery. So I'm requesting all the academician researchers, those who are attending this conference, we have to focus on the technology, but same time we have to focus on the transparency in the data so that we can make algorithm in a good way and we can look for a proper output also. So extended timelines and complex safety monitoring is possible with these things. So advanced AI technologies like machine learning, deep learning, NPL, IoT devices now we are seeing in the medical, blockchain are enhancing trial efficiency, ensuring secure and transparent data management. Why pharma industry and India? I already told you everyone that if we become third largest economy of the world, believe me, pharmaceutical industries will play a major role, right? So greenfield industries where the sun never sets, apart from the roti tikka makan. Fourth largest, fourth essential things in our life, that is medicine. So pharma industries touches every human life and creates wealth for the beautiful world.
India is 13th in the sales value and third in the volume numbers for the drug production and the supply. So AI is rapidly transforming clinical trials and research, offering numerous benefits like improved efficiency, reduced costs, faster time to market for a new therapy. AI uses in various stages from initial drug discovery, target identification to patient recruitment also. You can see this, we have so many pharma companies, so many pharma units manufacturing. You can see in the comprise over 3,000 pharma companies and almost 10,500 drug manufacturing facilities. And you can see the market growth, my dear friend. Now we are having this market around USD 55 billion, but it is projected to reach USD 120 to 130 billion by 2030. That means that play a major role for pharma industries play a major role for making India the best player as a pharmacy, right? So we need to understand our role as a pharmacy academician, researcher, scientist, right? And everyone is equivalent, right? In the Viksit Bharat 2047, right? So this growth will give clear picture for making 2047 as a Viksit Bharat, and we are everywhere. And believe me, trust me, I'm connected with so many countries. I'm teaching toxicology here and there, maybe in Philippines, Egypt, Malaysia, and all. They all have respect for the Indian pharmaceutical fraternity, maybe pharmaceutical industry persons, scientists, and researchers, because they all are dedicated, committed towards the ethical research with safety use of medicine. This is a big market, my dear friend, implantable medical devices market. Global industries analysis, if we are forecasting 2024 2032, you can see the growth that is 6.7%, means around $177 billion. It's a big, big market. So we need each and everyone from here. You can see the different wearable and implantable medical devices now we are using, and that is the important for Viksit Bharat 2047. And we are working hard. We are making many medical devices. We need so many inputs from the technology, and India is booming now. India is trending now. Everywhere we are seeing the role of Indian government, Indian pharmaceutical industries, and other industries also for making these medical devices. We are using a smart glass, fitness band, pacemaker, glucometer, intelligent sensor, neuro stimulator, implants, pacemaker, many things we are using for speed up the diagnostic things and speed up the drug discovery process also. So this is the process why AI/ML is important. Everywhere we are using in the diagnosis, treatment, monitoring, and absolutely for a safety. So these particular medical devices are coming in a very large way, and India will become a large exporter of all these medical devices. So this will be a new era, especially in the pharmacy field. If we are talking about the regulatory challenges in the global pharmaceutical industries, as we are making medicine, pharmaceutical industries are so much concerned about the safety. And if we are looking to export the medicine all over the globe, we have to follow the different regulatory body guidelines like MHRA for UK, US FDA for USA, TGA for Australia, CDSCO for India, Health Canada, MESI for South Africa. So there are a number of guidelines, and believe me, Indian pharmaceutical industries or maybe a pharmaceutical industries are not run in a very simple environment. They basically run in highly regulated environment with the different countries having their own guidelines and policies. Need for skills, manpower. This is the main thing which I want to communicate on this international platform. We have to focus on the skill. There are many machineries, many technologies as using in the pharmaceutical industries. So we need to focus on this technology, how we can speed up the process, how we can save the time, how we can save the money also. AI is not replacing us, but AI is giving something predictions. On that basis, you can remove poor candidate from the research, right? So that will be the advantage if we are not doing anything in terms of the poor candidate. We can optimize with the help of technology like QSAR, computer aided drug design, molecular docking, and all. So we are using since long. This is my main message which I want to give on this platform. That is, sustainability in the drug discovery is crucial due to the high environmental and financial costs.
associated with the development of new medicine. So there is no need to do repeated experiments if it is already available in the market. And if we are talking about the sustainability, means we have to give sufficient time for the drug discovery. Otherwise, what happen? AI can give prediction on the basis of AI can. If we are going for the making medicine, if we are not using human-centric AI can give something negative also. So it's all depend how you are treating AI, how you using AI for the prediction of molecule target, or maybe for a proper target, maybe like cancer, diabetes, so many things coming in the market. So the integration of AI in medical and pharmaceutical science has been instrumental in addressing the challenges posed by the COVID-19 pandemic, and its impact will continue to shape the future of healthcare. So already we have seen in COVID-19 pandemic how we made vaccine, and we have given that vaccines to many countries. And that's because of that now every country globally respecting Indian pharmaceutical industries, and they are approaching us for making quality medicine, safe medicine. And I already salute to our honorable DCGI Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi sir. He's very strict in terms of compliance. Now our Indian pharmaceutical industries are ready to give, ready to produce, ready to manufacturing the medicine which having a low toxicity, less side effect, and less adverse effect. So this is all about the pharmacy of the world. It's a big, big respect what we are getting from the global market. So this is our main aim, how we can focus on the 5 hours that we have to produce the right drug for right patient, right dose, right food, and right time. So ultimately goal of each and every pharmacy officer, pharmacy academician, that we have to focus on the safety. So you can see I'm from the Modern Institute of Pharmaceutical Science, Indore, and we have our own three pharmaceutical industries. Now export is going to increase day by day. So this is something what we are getting in terms of response. So AI in pharmacovigilance and clinical research are taking in a very good way. We are very faster now for taking a decision based on the different algorithm, available data. But again, I'm requesting each and everyone, as we are making medicine, we need to predict the authentic data. We need to go for the transparency in the data so that we can make a pure algorithm which can have proper outcome in terms of drug discovery. As you can see, the drug discovery process is so much complicated. So this is the model how we can combine the AI with the drug discovery. So we are getting input variables from the different source like DNA, RNA, clinical variables, and medical records also. Then we can go for the extraction of method, and AI learning is going on the extraction of the method. So depending on your inputs, we can get a outputs. So ultimately, inputs is your raw data information which is coming from the different sources. So you need to verify the sources from where you are getting the information, right? So ultimately, input variables are very, very important. So AI intelligence can overcome this challenge. We utilize complex algorithm machine learning to extract meaningful information from large database like RNA sequencing can be used to identify the genes whose expression correlates with the given cellular conditions also. Now I'm coming to the very interesting one, that is my aim, ambition, and vision. I'm the man of toxicology. So as we are made up of the chemicals and we consistently interact with the chemicals made by the nature and man, and believe me, all chemicals have the ability to be toxic. So this is the matter of quantity and the dose what we are taking in the formulation, whether it may be tablet, capsule, syrup, and all. We must breathe, we must drink, we must eat chemicals to stay alive. So the air we breathe is a mixture of chemicals. Toxicity can be everywhere, right? In beverages, in chemicals. Now we are using fertilizers each and everywhere. They contain heavy metals and all. You can see the perfect example of vitamin C. We are using very little. That is essential for biochemistry. If we are using 50 mg, that is the daily requirement for physiology. If you are using 500 mg, that may treat your common cold, that is known as your pharmacology. If you are using 5000 mg, it may cause kidney stone. You never think about it that anything can be injurious, anything can be poisonous. But again, this is the matter of quantity. So this is my message
who belongs to the pharmaceutical industries or maybe from science, please focus on the toxicological studies now. And soon our Indian government will also drafting the guidelines for toxicity estimation, and soon it will be implemented in the all pharmaceutical industries. So rational of targeting with the help of AI, we can achieve this kind of things. So in cancer, we are seeing so many things are coming, like in the target, the particular, like if somebody is suffering from liver cancer, but if we are using chemotherapy, it is not going to target on the cancerous cell. It is going into the normal cells also. So we are seeing so many side effects. So with the help of AI, we can predict this kind of things. We can see how we can treat in a better way and what can be the meaning of targeting. You can see the concept of targeting, how it is going to cross blood vessels, how it is going to target the cancer cells and normal cells. So large particles cannot cross. So we have made nano carriers, nanoparticles, like then we have go for the targeting of the nano carriers, and our scientists, I really salute all the scientists and academicians who are working on this on target nano carrier. And we are seeing the life of the cancer cells now has been changed as compared to previous era, right? So you can see how we can make something again on the race. So if we are talking about the Viksit Bharat 2047, we have to think about that how drug is going to attach with the receptor, how it is going to produce a therapeutic action, how it is not going to attach with the no receptor, so that we can produce a safe medicine, right? So we have to focus on that target. If we are teaching the students in that way with the help of technology, so the things will come in their mind what they have to produce as a safe medicine for the mankind. So different phases we are using everywhere, phase 0, 1, 2, 3, 4. Everywhere we are using in the clinical trials. So these are the phases of the clinical trials which we are using in pharmacy. So coming to the different phases, so this is the all over the models. I will not take time because already sessions are getting late, so I can understand the value of time. But I just want to give a message that a clinical trials is very important. But with the help of technology, now we are removing poor candidate from the research. So this is the advantage of technology, which we need in a proper way, in an ethical way, in a wise way, right? Unwise way. So these are the some software of the AI which we are using in the pharmacy. These are the some example. There are so many software we are using, like Aprigo, basically used for the aggregating and synthesizing information. Chromic AI and structure we generally use to understanding the disease mechanism, general novel drug candidates and all. So bioinformatics is everyone know about that, the branches of science. It's required efforts from each and everyone. So in Viksit Bharat 2047, apart from the pharmacy, we need everyone from the computer science, mathematics, statics, chemistry. Because we all together can make something good for our India, for a beautiful world also. So we have to come up with the technology we can discuss on the platform like I'm discussing today on this particular international national conference. So this is about the AI model, how we can use in pharmacy. We can go for the sequencing analysis, medical bioinformatics, statics, genomics, proteomics, metabolomics. So these are the some data which is already available, but again, it's a need to understand the things, right? So AI and ML in clinical trials, so it help in the regulatory submissions. Now it's totally online, so it's very easy for the submission. We can go for the proper data analysis, data management, study design, study setup, trial management. So everywhere using, and this is something going to the speed of the drug discovery process. And this is again a need of the era, because as we are making medicine, again I am saying that we have to first focus on the safety for sustainability of that particular medicine for a long time, right? We don't want that medicine coming in a short period of time and sometimes happen that it is going to produce some toxicity or adverse effect and it will back from the ban. Maybe it going to the ban in the market, right? So we never want this kind of process. So take sufficient time. So several applications of the AI in clinical trials, that is basically for early disease detection, speed up drug development, monitoring clinical research, patient recruitment, clinical data capturing, personalized medicine, transforming clinical trials also.
So it's a big market of the technology, and so many multinational companies are coming in the pharma like TCS, Cognizant, Infosys, Novartis, AstraZeneca. So everybody is using AI for this. So this is all about the role of AI in the pharmacovigilance. If we are talking about the area, so it is going to improve the drug safety, reliable monitoring, automated adverse reaction, data triangles, and all. So these are the challenges what we are facing by using AI. So again, I want focus from each and everyone. Just we need to discuss about the privacy concern about the data. Curated data means source of data, structured data, data quality, machine learning algorithm, data processing, and issue to be considered. So these are the challenges which we are going to recover very soon. Discussion is going on globally. So this is the model how we can take the informations from the different source like medical literature, patient record, clinical notes, product label, and that is processed in the NPL, natural process language. So global AI in pharmacovigilance market research is a big one. You are seeing the various companies are coming up with the technology, and definitely pharmacy, especially now India become pharmacy of the world. So this is the big responsibility to each and everyone, and we will fulfill that vision of Viksit Bharat 2047. So these are the some software we are using. The applications of AI is everywhere, especially in the diagnosis part. In the healthcare system, it is playing a major role. Medical medication management, robot assistant surgery is going in a good way, precision medicine. So we are rectifying all these things. Now we are seeing prescription on the basis of software. We are daily monitoring the blood glucose level, BP and all, and we can take something like pictures, history of the patients from the AI applications. So these are the things which we are using in the different part of the body like brain, liver, and everywhere. So these are the some data, and every multinational company, some bot, somewhere, they are using AI in pharmaceutical market. So we need to adopt this AI technology for Viksit Bharat 2047. And again, this is the responsibility to produce quality medicine. So we need to verify the data. This is the main things which I want to discuss, that ethics and artificial intelligence in medicine. So responsibility and accountability must be fixed. If we are taking any data, multidisciplinary capability, transparency must be there, security and privacy is also there. So we need to understand the system-based partnerships also. So market research is very, very important. We didn't want to basis the time on the drug research. Firstly, we have to plan in a good way, and this is the main thing that we need to go for the market research. And market research will give some good idea what will be acceptable in the market and what is the need of era, right? So market validation, competitive analysis, and general trends are very, very important if we are forecasting the future medicine with the proper safety. He's our Honorable Health Minister, Honorable JP Nadda sir, Honorable DCGI, Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi sir. They are working hard for making India pharmacy of the world. Again, we have to maintain this tax. So requesting each and everyone, please give your sustainable goals. Don't go for the shortcut if we are making medicine. We have seen many cases in the recent era, those who have used technology and they have made back medicines immediately. They have not taken sufficient time for the safety analysis and toxicity. Sometimes we are seeing the so many deaths due to some cup syrup and all. So this should not happen. Again, this is the responsibility of Indian pharmaceutical industries and regulatory body. So different websites are available. You can take the data, what's running in the Indian pharmaceutical industries, different clinical trials and all. So you are solved these things. So various adverse effect reactions and in Indian Pharmacopoeia commissions, all are working so hard. And I really salute to all the Indian fraternity, those who belongs to the pharmacy and healthcare system. We are working hard for making India better, especially in terms of pharmacy. And PBPI is also playing a major role. We believe in India, and regularly we are monitoring ADR reporting, toxicity analysis, and our PBPI program of India is playing a major role all over the globe. So this is how we are using AI tools. So many things all of you are using since long.
So it's again the data. These are the some glimpses. I am regularly meeting with the DC Honorable DCGI in different conferences, and he said one thing: please promote sustainability of the compound. Don't go for the shortcut if you are making medicine. If you are thinking about the safety of medicine, and this will give something good picture globally. So the vision of everyone must be the world in which pupils are free from all disease and disorder. So we have a lot of respect from the global fraternities also. They have a good respect from the Indian pharmaceutical industries. So we have to maintain this data for Viksit Bharat 2047. So this is all about from my side. And once again, thank you to Six Sigma and coordinator Dr. Prakash Pant, Rajesh sir, and honorable management for providing this wonderful opportunities to me. Thank you, everyone. Hello. So, we sincerely express our heartfelt gratitude towards Dr. Nitesh K. Jain sir for his highly enlightening and throughout provoking keynote address on transforming healthcare system, pharmacy at the core of Viksit Bharat mission and vision. Sir, your deep insights into pharmacology, toxicology, and in evolving role of pharmacy in strengthening healthcare system have truly enriched our Yeah, understanding. any questions from the audience? Hello. And your emphasis on research, innovation, patient safety, global collaboration has inspired all of us think beyond the conventional boundaries. And we are especially thankful for your international academic perspective, like from Centro Escolar University, Philippines, Modern Institute of Pharmaceutical Science. So drawbacks of AI in Yes. pharma field. Data. Like AI is just a tool who is responsible for the analysis of data, which is coming from here and there, right? So drawback is here if your source of data is not authentic, that you will make wrong algorithm and you will get a wrong output. So again, I'm saying the transparency, accountability of the data from the main source. So there are many authentic source and the websites from where you can get the data, and on that basis you can predict some better molecule for future researchers, or maybe for a future and a better global market also. So this can be a good thing if you are using AI in, especially in pharmacy. AI cannot make medicine, but AI can give idea about what you are thinking in your mind. Is it feasible or not? It is going to correlate with the particular predictive biological activity or not, right? So again, I am saying that if we are making medicine, so we have to first think about the safety of medicine. Thank you. Thank you, sir. Welcome, welcome. Yes, Archita. Ranjan ji, kindly accommodate the conversation. Any doubts and queries? Any doubt and queries from the online participants, live participants? Any queries, doubt? Should we express the closing remarks? So, Dr. Nitesh K. Jain sir, should we proceed further with the closing remarks? Is it okay, sir? As sir is also having limited time with them, so Sir, हंसने लग गए. Sir, अपना बंद करना है. so we are just coming on the closing remarks once again. Insightful session, despite like busy schedule, you graciously joined us and shared the valuable expertise. And we are especially thankful for our international academic perspective. Centro Escolar University Philippines and Modern Institute of Pharmaceutical Science, Dr. Nitesh K. Jain sir. And they added a global dimension to this
today's discussion and session. On the behalf of organizing committee and Six Sigma entire family, we extend our sincere appreciation for your time, guidance and encouragement. Thank you, sir, once again for being a part of this event, Impact at the Rate 2047. Have a big round of applause for Dr. Nitesh K. Jain. Thank you, everyone. Thank you, sir, for your precious time. Thank you, sir. Have a big round of applause once again. Now, we request our Vice Chairman and Gadarpur Block President, Mrs. Jyoti Grover ma'am, to come nearby stage, and our Director ma'am, Dr. Seema Arora ma'am, our convener of this Impact at the Rate 2047, Dr. Lalit Singh Pishchi. Please come nearby stage. I request get Dr. Ankush Bhatla, Dr. Bhavna Bhatla. Again, dignitaries are presenting cap of pride, scarf of honor along with the token towards Dr. Ankush Bhatlaji and towards Dr. Bhavna Bhatlaji respectively. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. Now, in this sequence, we are just proceeding further for the scientific session, and this is session, and I request everyone to kindly take seat and settle down once again. I request to each and everyone. And session 5, role of mental health in Viksit Bharat, and Dr. Veer Vikram Sahdev Singh ji, Professor Dr. Veer Vikram Sahdev Singh ji, Principal, and he is a distinguished academic leader, educationist in the field of nursing healthcare. And he serves as a principal of the College of Nursing, Jyoti College of Management, Science and Technology, Bareilly, Uttar Pradesh. With extensive experience in teaching, academic administration, professional development, he has contributed significantly to nursing education. He is dedicated to nurturing competent healthcare professionals and promoting academic excellence. He is known for leadership, commitment, and contribution. We need to proceed for the session 5, centered on an essential dimension of national development, role of mental health in Viksit Bharat. So, it's an honor to welcome Dr. Veer Vikram Sahdev Singh ji, a respected academician, leader in nursing healthcare education. Thank you, and sir, we welcome you on the stage, and this is yours. Thank you. Have a big round of applause for Dr. Veer Vikram Sahdev Singh ji. Thank you, sir. So, good evening to all. सबसे पहले मैं सिग्मा कॉलेज को दो चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। पहला ये कि आपने मुझे इस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया, और दूसरा आपने एक यूनिक सब्जेक्ट चुना के जिस पर चर्चा हो। कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है वो विकसित भारत है, और जो मेरा टॉपिक है वो है कि मेंटल हेल्थ का क्या रोल है विकसित भारत के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो विदाउट मेंटल हेल्थ देयर इज नो हेल्थ। जैसे कि सभी यंगस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, एक्चुअली कितने लोग देखना चाहते हैं कि भारत विकसित हो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबका आंसर हाँ में ही होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तब भी हाँ ही होगा, लेकिन कितने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उसका अगर प्रेवलेंस इंसिडेंस निकाला जाएगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत कम आएगा। क्योंकि मैं
जो आपसे आज बात करने वाला हूँ, एक्चुअली मेरा एक नेचर ही है कि मैं जो बात करता हूँ वो थोड़े प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिकल बात करते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें समझते हैं जो चीज़ें होंगी, और अगर आप थियोरिटिकल बात करेंगे तो 10 से 20% ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसा कि विकसित भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक इंडिया डेवलप्ड होना चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें अकेले क्या कर सकते हैं? 150 करोड़ का भारत है, और 150 करोड़ का भारत अगर अपना सही से 1% भी कंट्रीब्यूट करता है तो मुझे लगता है 2047 में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 5 साल में ये विकसित हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से कंट्रीब्यूशन देना और उस पर काम करना वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। सोचना अच्छी बात है, लेकिन सोचने पे करना उससे भी अच्छी बात है। आज उसी पे हम बात करेंगे। आज सुबह से मैंने यहाँ पे जितने सेशन देखे, रियली जो फर्स्ट सेशन था की नोट स्पीकर का, वो हमें आज से 500 साल पहले लेके गया। मतलब अगर हम कीनोट स्पीकर का जो सेशन था उसको 2% भी देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम आगे की जगह पीछे जा रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ें अगर हमारे यहाँ पे थीं तो आज एजुकेशन का क्या हाल हो गया हमारा। जो मेडिसिन सिस्टम पहले बताया सर ने, तो उसका तो हम 2% भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि वो जस्ट स्लाइड नहीं थी, वो सोचने का एक विषय था कि उस पर आज का युवा, आज का यंगस्टर सोचे। माननीय प्रधानमंत्री का जो मेन फोकस है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। जहाँ भी वो बताते हैं तो इन्हीं 5 या 6 कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट्स है हेल्थ केयर। मैंने पहले ही बोला आपसे कि हर आदमी की इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने फील्ड में 100% दे। जैसे मैं हेल्थ केयर से हूँ तो मेरा काम है कि मैं हेल्थ केयर में अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करूँ। जो लोग इंजीनियरिंग के हैं, जो लोग डिफरेंट फील्ड से हैं, उन सबको अपना काम ईमानदारी से ही करना चाहिए। सो क्वेश्चन आता है कि मेंटल हेल्थ क्या है? व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एक्चुअली? अगर हम WHO के अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो उसमें से एक जो कॉम्पोनेंट्स है वो मेंटल हेल्थ है। लेकिन रियलिटी क्या है? अभी इसमें डाटा भी आएगा, आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ के बारे में केवल 1% लोग ही अवेयर हैं। बाकी 99% लोग मेंटल हेल्थ के बारे में सही से जानते भी नहीं, और अगर जानते तो जो सुसाइड रेट है, जो सीजोफीनिया रेट है, जो डिप्रेशन रेट है, जो एंजाइटी रेट है, उसको आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि लोगों को उसके बारे में जानकारी है ही नहीं। जैसे कि मेंटल हेल्थ के अंदर 3 कंपोनेंट्स मेन हैं कि मेंटल हेल्थ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आज प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे कि अगर दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा कम हुई है ह्यूमन बीइंग के अंदर तो वो क्या है? सेंस। और दूसरा उसका आंसर आएगा कि आदमी इमोशनली बिल्कुल खत्म हो गया। कहाँ इमोशन जुड़े हुए हैं? अगर इमोशन जुड़ते तो भारत के अंदर लाखों की तादाद में ओल्ड एज होम नहीं होते। और उस भारत में हम विकसित भारत का एक सपना देख रहे हैं जहाँ लोग लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं, लोग लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब साइकोलॉजी वेलबींग को आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपसे एक क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया जाए तो तीसरी बार आप इरिटेट हो जाते हैं। ये आपका पेशेंस लेवल है, ये मेरा पेशेंस लेवल है।
तो ये साइकोलॉजिकल वेलबींग तो बहुत मायने रखती है। अब बच्चों का साइकोलॉजिकल देखो आप क्या है, कई मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा कि छोटे छोटे बच्चे इतना क्राइम कर रहे हैं, छोटे बच्चों में डिप्रेशन देखो, छोटे बच्चों में शिज़ोफ्रेनिया देखो, छोटे बच्चों में मैनिया देखो, एंजाइटी देखो, स्कूल का आप सिस्टम देख लो। अगर सही बात पूछी जाए तो भारत सरकार मेन ध्यान तो एजुकेशन पे दे रही है, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो मेंटल हेल्थ बिगाड़ने का काम भी आज के स्कूल सिस्टम ही कर रहा है। जिनकी जितनी उम्र नहीं है, जितना वजन नहीं है, उससे ज़्यादा पीठ पे बस्ता लदा हुआ है इसके। 5 साल का बच्चा अगर 10 साल का 10 किलो उसका वजन है या 15 किलो वजन है तो 6 किलो का बस्ता लेके जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाओगे, भारत के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि 2047 में भारत विकसित होना चाहिए, तो आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो 2047 तक 20 साल का हो जाएगा, तो उसको संभाल के रखना हमारी प्राइम जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे तो वही काम करने वाला है। नेक्स्ट आता है सोशल वेलबींग। अब सोशल वेलबींग क्या है? अगर आप विकसित भारत चाहते हैं तो सोशल वेलबींग तो बहुत जरूरी है। अगर आज के युवा को पूछा जाए कि व्हाट इज सोसाइटी, तो सोसाइटी के बारे में उसको 1% भी जानकारी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, सोसाइटी क्या है। अब ये जो बैठा हुआ है पूरा, इसको मैडम ने एक वर्ड यूज किया जेनजी, इनकी अलग ही सोसाइटी है, इनके अपनी नॉर्म्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपने ही रेगुलेशंस हैं। ये किसी भी कल्चर को नहीं मानते हैं, ये किसी भी भारत की फिलॉसफी को नहीं मानते हैं, और उसका अंत ऐसा हो रहा है कि आज अखबार उठा के देखते हैं तो पहले पृष्ठ से शुरू हो जाता है कि कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ रेप हुआ, कहाँ ये सब चीज़ें हुई, तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू WHO कहता है कि आप स्लाइड नेक्स्ट। सो WHO कहता है कि आप अगर किसी भी स्ट्रेस के साथ में कॉप अप कर जाते हैं, दूसरा कहता है कि आप लाइफ में रियलिटी को समझते हैं, अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं और सोसाइटी के अंदर सही से कंट्रीब्यूट करते हैं, देन हम आपको बोल सकते हैं कि आप मेंटली हेल्थी हैं। अब इस 4 में से कितने कंपोनेंट्स को हम कर पाते हैं, स्ट्रेस के साथ कितने लोग कॉप कर पाते हैं? अगर हाथ उठा दिया जाए तो 2 लोग भी नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डू नॉट नो व्हाट द स्ट्रेस। सो अगर मिशन कंप्लीट करना है तो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी, इन पर काम करने पड़ेगा। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, व्हाट्स अवर कंट्रीब्यूशन professionally, what we are going to give the society and what we are giving, I think it's a 0% only nowadays. जब तक चीज़ें ये चल रही हैं कि मैं वाली भावना जहाँ होगी वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हमेशा भावना आनी चाहिए बी। अगर आप एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो सोसाइटी का भला होगा। मैं नर्सिंग फील्ड से हूँ। नर्सिंग के अंदर हम बच्चों को बार बार यही पढ़ाते हैं कि आपको सामाजिक सर्विस करनी है, आपको समाज से जुड़ना है आप, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं वो बेचारे चाह के भी नहीं कर पाते। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें रोक लेती हैं उनको। तो सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। जो पुअर मेंटल हेल्थ है उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहला इम्पैक्ट है आपका कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अगर आगे डाटा पढ़ाऊंगा मैं आपको, डाटा है इसके अंदर, एडल्ट का डाटा दिया है इसके अंदर कि भारत के अंदर हर 100 में से 10 लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स है। लेकिन मेंटल प्रॉब्लम को लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मेंटल प्रॉब्लम को तो क्लासीफाइड किया गया है, ये साइकोसिस है, न्यूरोसिस है,
ये क्या है, लेकिन अगर जिस भारत में 10% युवा मेंटल हेल्थ से शिकार हों, उसको कितनी उम्मीद करेंगे कि ऐसा देश डेवलप कितनी जल्दी हो सकता है। तो ये डाटा आगे आएगा। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है, किसी भी क्षेत्र में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। रिड्यूस द लाइफ एक्सपेंसी, मेंटल हेल्थ की वजह से जो हमारी 70 से 75 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, वो आज घट के 65 साल। आप एक्सीडेंट देखो, प्री मैच्योर डेथ का डेटा निकालो, प्री मैच्योर डेथ हैं उनका अगर डाटा निकालेंगे आप, तो आप डाटा देखते ही रह जाएंगे कि 30 साल के, 20 साल के, 15 साल के, 18 साल के ऐसे लोगों का रोज़ कहीं ना कहीं कैसे न कैसे तरीके से उनका एक्सीडेंट होता है। तो ये चीज़ें भारत के लिए बहुत खतरनाक है। बिहेवियर चेंज, बिहेवियर आप जानते हैं, इतना बिहेवियर चेंज हो गया। अगर मैंने देखा है कि ऐसा हो गया आज का, मतलब कि अगर पेरेंट्स बच्चे से बोलते हैं कि तुम कल से मोबाइल यूज नहीं करोगे, तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। और इतने कैसे डाटा आते हैं आप देखेंगे, आप टीचर का स्टूडेंट का देख लीजिएगा। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मेरे को बच्चों से बात करने में डर लगता है, और जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एकदम फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए, और फ्री कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ हर इंसान का बिहेवियर एकदम चेंज है। यहाँ टीचर लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट से कितना नज़दीकी से बात कर पाते हैं? नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं बोल पाते, डर लगता है कि ये क्या बोलेगा आगे चल के। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये बिहेवियर चेंज है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सही नहीं है, इस पर काम हो। रिस्क फॉर क्रोनिक डिसीज, मेंटल हेल्थ में एक कंपोनेंट्स है जिसको साइको सोशल के अलावा एक मेंटल इलनेस, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फिजिकल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। सो क्रोनिक इलनेस एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट वाला देखेंगे, वर्क प्लेस इम्पेयरमेंट। वर्क प्लेस इम्पेयरमेंट, इसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो जहाँ भी काम आप करो वहाँ पे आपने देखा होगा कि काम में इतना स्ट्रेस हो गया, बोलते ना जहाँ पर प्लेजर होना चाहिए वहाँ पे प्रेशर हो गया। काम करने के लिए कितने लोग हैं जो मन से जाते हैं सुबह उठ के, सुबह ड्यूटी का काम या ड्यूटी का नाम आते ही लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं काम पे इतने डल मन से जाऊँगा तो क्या मैं अपना 100% दे पाऊँगा? और इसी के ऊपर इतनी ये चीज़ें बढ़ गई कि अब यहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाना पड़ा भारत सरकार को 2025 के अंदर, जिसमें साफ डिफाइन कर दिया कि जो वर्किंग आवर्स के अलावा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ पे कॉलेज 4 बजे तक चलता है, और अगर आप 4 बजे के बाद में किसी को कॉल करते हो या मैसेज करते हो तो उसका राइट है कि उस पर रेस्पॉन्स करे या ना करे। ये भारत सरकार को बिल लाना पड़ा 2025 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि वीकेंड या मंथली अगर एम्प्लॉय अपने फैमिली के साथ में कहीं घूमने गया तो वहां पर भी ग्रुप में मैसेज चल रहे हैं उसके साथ में, आपने फाइल कहाँ रख दी, आपका ये काम पूरा नहीं हुआ, आपका वो रजिस्टर पूरा नहीं हुआ। बेचारा वो यहाँ एंजॉयमेंट तो भूल जाता है, वहाँ से भी मतलब काम कर रहा है। तो इस पर भारत सरकार का बिल आया और उन्होंने बोला है कि ये उनका पर्सनल और इंडिविजुअल और संवैधानिक राइट है कि वो आपके रेस्पॉन्स करें या ना करें। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और मैं कहता हूँ देखिए, वो बात अलग है, आप नौकरी कर रहे हैं अलग चीज़ है, लेकिन अपने राइट के लिए सबको अवेयर होना है। लेकिन राइट के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी। अगर हम राइट की बात करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी करनी पड़ेगी हमको। तो ये नेक्स्ट स्लाइड आपकी, बहुत अच्छा हेडिंग है इसका, यंग इंडिया एंड मेंटल हेल्थ। सो इसका अगर डाटा देखेंगे तो डाटा बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा दुखी भी करता है सोच के कि अराउंड 10.6 इंडियन एडल्ट, और बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 100 11 एडल्ट इज हैविंग द डायग्नोस्टिबल मेंटल हेल्थ। मतलब 100 में से अराउंड 11 लोग ऐसे हैं जिनको शंका है, जिनको हम अगर डायग्नोस्ट करेंगे
तो वो मेंटल प्रॉब्लम से जूझते हुए मिलेंगे। और 15%, 15% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ इश्यू रिक्वायरिंग इंटरवेंशन। और 15% तो ऐसी एडल्ट पॉपुलेशन है जिसको आज इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिसको आज ज़रूरत है कि उनको इलाज मिले। और थर्ड तो बोलता है कि वुमेन्स 20%, मैन 10%। जब भारत बोलता है कि नारी शक्ति, जब नारी शक्ति की बात आती है, तो नारी शक्ति बीमार होगी तो शक्ति किस बात की है? सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप डाटा के कंपेयर टू मैन, वुमेन्स इज सफरिंग डबल अबाउट मेंटल इलनेस। द लाइफ टाइम इवोल्यूशन एक्सपीरियंस डिसऑर्डर 13%। और ये देखेंगे आप अर्बन एंड रूरल, तो अर्बन में आपका देखेंगे 13.5% एंड रूरल में 6.9%। और इसका लास्ट वाला देखेंगे आप तो WHO कहता है कि आपका कि 7,27,000 पीपल इज सुसाइड इन एवरी ईयर। मतलब ये WHO का डाटा है कि अगर पूरे विश्व के अंदर 7 लाख लोग अगर सुसाइड कर लेते हैं तो फिर वो भारत, वो विश्व कैसे डेवलप कर सकता है। सुसाइड के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बता दूं कि भारत के अंदर डेली 470 मतलब 460 to 470 पीपल डाइड। मतलब इंडिया के अंदर आप सोच सकते हैं कि 450 लोग रोज सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा डाटा बोलता है कि एवरी 3 मिनट 1 पर्सन इज डूइंग सुसाइड इन इंडिया। मतलब अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटे के अंदर हम 15 से 16 लोग तो सुसाइड कर चुके होंगे। और एक और डाटा देखिए आप, ये सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट को डाटा देखना है कि एवरी ईयर अराउंड 13,000 स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया। भारत के अंदर अराउंड 13,000 लोग हर साल सुसाइड कर, वो बच्चे सुसाइड करते हैं जो स्टूडेंट, और जिसमें अगर डे का आंकड़ा लाएंगे तो 35 स्टूडेंट ऑन एन एवरेज डेली इंडिया के अंदर सुसाइड करते हैं। और वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत 2047। सो थिंक ट्वाइस, इन चीज़ों में काम करना है। ये जो यंग एज पीपल बैठे हुए हैं, यही तो भारत को विकसित बना सकते हैं, इन्हीं की ताकत है। और अगर इनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये बेचारे समय से पहले ही ऐसे कदम उठाएंगे तो किसी विकसित भारत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब इसमें प्रिवेंटिव मैसेज में है, ऐसी बात नहीं है कि एक ही साइड को देखा जाए। तो भारत की जो सरकार है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चला रही है, बहुत सारे ऐसे कैंपेनिंग चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि भारत में इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं फिर एक बात को बड़े जोर के साथ कह सकता हूं कि जो पॉलिसी एयर कंडीशन में बैठ के बनेगी वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे इम्प्लीमेंट होने में बहुत मुश्किल होगा उसका। जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो एयर कंडीशन में बैठ के बनती हैं, लेकिन भारत का जो बोलते हैं ना ग्रामीण भारत है, वो अलग ही समस्याओं से जूझ रहा है। कितने लोग हैं इससे अवेयर हैं? हम अभी बहुत डेवलप जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे मेडिकल से लेके सब फैसिलिटीज़ हैं। अगर एक बार आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाके देखिएगा तो आपको रियलिटी मालूम पड़ेगी कि वास्तव में भारत क्या है, और जो 2047 का सपना है वो बेहतर पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं एक ही चीज़ पे बोलता हूँ आपसे कि किसी भी चीज़ पे काम करना है वो प्रैक्टिकली काम करना है, और उस पर थियोरेटिकल काम करेंगे तो इतना मुश्किल होगा आपके लिए। एक आपको डाटा देता हूँ, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा मिला मेरे को। एक टर्म नया यूज हुआ है जिसे बोलते हैं नोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का है मीनिंग ही यही है कि आज तक हम लोग सुनते थे कि वो ड्रग एडिक्शन में हो गया, वो सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल। नोमोफोबिया कहता है कि आप फ़ोन से किस से अडिक्टेड हो गए। जो आपका मोबाइल फ़ोन है आप उसके एकदम ऐसे एडिक्टेड हो गए कि जैसे डाटा ख़त्म तो घर का आटा ख़त्म, ऐसी समस्या आ गई, समझे। और मुझे लगता है कि लोगों ये बीमारी है, उनको कम से कम आप स्टडी करके देखो कि 50 बार आदमी हाथ लगाता है कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है,
30 बार देखेगा कॉल तो नहीं आ गया, ये तो सब मेंटल प्रॉब्लम है। इसका एक इंटरेस्टिंग डाटा बताता हूँ आपको, जो अमेरिका में एक स्टडी हुई। अमेरिका में स्टडी हुई, उसमें कहते हैं कि ड्राइविंग करते हुए 55% लोग मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। जब लोग मूवी देखते हैं थिएटर के अंदर, तब 35% लोग यूज करते हैं। जब लोग डिनर टेबल पे होते हैं तो 33% करते हैं। जब बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तब लोग 32% यूज करते हैं। चर्च और टेम्पल में जाते हैं तब 19% यूज करते हैं। और जब लोग नहाते हैं तब भी लोग 12% यूज करते हैं। और जब लोग सेक्स करते हैं तब भी 9% यूज करते हैं। मोबाइल को छोड़ ही नहीं रहे। आप ऐसी कोई जगह बता दो कि जहां आदमी मोबाइल लेके, ये तो एक साइंटिफिक स्टडी है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 66% लोग मोबाइल से एडिक्टेड हैं। मतलब उनका जैसे नशा होता है ना, वो हो गया। तो ये जो यंगस्टर बैठे हुए हैं, इनसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को इतना कम कर लें कि ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फर्क नहीं डाले। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ, आप KGMC के बारे में जानते होंगे। KGMC में तो अलग से इसकी लत छुड़ाने के लिए सेंटर खोला गया कि मोबाइल एडिक्शन के जितने मरीज हैं उनके लिए काउंसलिंग सेंटर अलग खोला गया। तो यहाँ तक जरूरत आ गई इसकी, तो इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखिए, आप ये वाली पिक्चर देखिए और इस पिक्चर से थोड़ा आज के भारत को आप कंपेयर कीजिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तेजी से बिगड़ रहा है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। ये वाली पिक्चर देखिए, मतलब ये साफ दे दिया इसके अंदर कि आपका परसेंटेज में निकालेंगे तो मुझे लगता है कि भारत में आज ज़रूरत है सबसे ज़्यादा तो वो काउंसलिंग सेंटर, मेंटल हॉस्पिटल्स, गाइडेंस, क्लिनिकल, इस सब चीज़ की ज़रूरत है। ये अगर देखेंगे तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे तो आप इस सब डाटा को मिला के देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि भारत को अभी और 100 साल लगेंगे अपने पूरे विश्वगुरु बनने में। और बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है। अगर इस डाटा को आप देख लें, ये डाटा क्या दिखाता है नीचे वाला, केवल 1% लोग ही हैं जो वॉलंटरीली मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं कि सब मैं बीमार हूँ, और 99% तो जाते ही नहीं। तो 99% लोग आज जाएंगे नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे इसमें दिया पहला दबाव, कंपटीशन। सो एक्चुअली व्हाट इज द प्रेशर? एक्चुअली प्रेशर क्या है? अब प्रेशर को देखेंगे तो कई तरीके से आप डिफाइन कर पाएंगे। ऐसे पेरेंट्स, हमारा क्या काम है? आप टेक्निकल बात कीजिएगा ना। हमारा काम है कि मामा का लड़का MBBS बन गया तो तुम भी बनोगे। उसको कभी नहीं पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। वो बेचारा मतलब इंजीनियर बनना चाहता, हमने नर्स बना दिया। मैं तो नर्सिंग वाला हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है 10% लोग ही हैं बाई चॉइस आते हैं, 90% लोग बाई चांस आते हैं। तो चॉइस और चांस में बहुत फ़र्क है। जहाँ आपकी चॉइस होगी वहाँ आपका मन लगेगा काम करने में। जहाँ आपको बाई चांस आएंगे, बाई दूसरे द्वारा आएंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो ये कंपटीशन कितना हो गया। एक स्टडी मैंने पढ़ा और इस स्टडी के अंदर एक बहुत अच्छा डाटा था। मैं यहीं डिस्कस कर लूँ आपसे कि इंटरमीडिएट तक जो पढ़ाई होती है उसी में से नीट का एग्ज़ाम आता है, उसी के बेस पर IIT एग्ज़ाम है, उसी के बेस पर JEE का जो, लेकिन इंटरमीडिएट से क्वेश्चन तो आते ही नहीं। उसे फिर 5 साल कोचिंग करनी है नीट की, उसको सीकर जाना है, कोटा जाना है। तो क्यों जाना है? क्योंकि जो शिक्षा का ध्रुवीकरण हुआ, जो वैश्वीकरण हुआ, जो बोलते हैं ना शिक्षा को प्रोफेशनल बना दिया लोगों ने, ये भारत के लिए बहुत चिंता की सब्जेक्ट है। हर एक मतलब बोर्ड की एक जिम्मेदारी निर्धारित कर दो कि क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस से अलग नहीं आएगा। क्योंकि नीट का एग्जाम तो किसके बेस पे है? इंटरमीडिएट के बेस पे है ना। तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं उसमें से आ रहे हैं? तो ये प्रेशर है। अगर कोटा में फीस देखेंगे तो किसी भी कोचिंग की फीस 2 लाख से कम नहीं है, ऊपर से रहना खाना। और आपको मालूम होगा कि कोटा के अंदर सुसाइड रेट इतना बढ़ गया कि पंखों के अंदर भी अलार्म का सिस्टम लगाना पड़ा वहाँ पे जाके। तो ये एक बहुत बड़ा
मतलब बोल सकते हैं कि भारत का एक माइनस पॉइंट है जिस पर बात करनी चाहिए, अदरवाइज विकसित भारत होना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस पर काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वहाँ पे, पहले ही मैं बोला था कि अब देखिए, ये देखिए आप, ये जो रंग बिरंगी ये स्लाइड्स हैं, ये क्या है? बोलते हैं ना कि हमारे भारत में मूवी कैसी बनती है, उड़ता पंजाब, ये तो उड़ता भारत है। इसमें देखो, ये अफीम, गांजा, भांग, ये पूरे में बिखरी पड़ी है। ये भारत का एक करंट भारत का स्टेटस है, करंट भारत का ये स्टेटस है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाना सर, ये देखो ओवरऑल इंडिया, ये देखो कैनाबिस इंडिया, ऐसा कोई कोना बता दो भारत का जहां पे कि रंगा हुआ ना हो, ऐसा कोई स्टेट बता दो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी विकट स्थितियों में विकसित भारत का सपना क्या पूरा करना इतना आसान काम है? देखिए, इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है और वो होना भी चाहिए। नेक्स्ट, ये देखो आप, ये अल्कोहल है, ये पूरा भारत देखो। अब इसमें भी देखो आप, जितने लोग पॉलिटिक्स से जुड़े होंगे उनको एक क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता है कि साहब, जब भारत सरकार शराब बेचने के लिए लाइसेंस देती है तो पीने पे फिर रोक क्यों लगाती है? क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आप दो पॉलिसी चला रहे हैं, एक तो शराब बनाने की आप परमिशन दे रहे हैं और ऊपर से शराब पीने पर रोक लगा रहे हैं, तो ये दोहरी नीति है ना। अब बहुत सारे लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा भी कि आप तो बनाना बंद कर दो, लोग पीना बंद कर देंगे। तो बोलते हैं कि भारत का जो पूरा रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें बहुत बड़ा रोल तो इसका है। तो जिस भारत का एक एक बच्चा दारू पी के सड़क पर गिरा रहेगा, उसका भविष्य क्या रहेगा? और ऐसे रेवेन्यू को आप करेंगे भी क्या? उसकी जरूरत ही क्या है? अगर मैं तो देख रहा हूं, मैं एक गांव से आता हूं, मेरे गांव के अंदर तो 10-10 साल के बच्चे दारू पी के घूमते हैं। सरकार जहां वो ठेका को आप कहीं भी खोल लो, ठेका को आप वहां खोल लेना जहां हवा भी ना पहुंचे, लेकिन वहां शराबी पहुंच जाएगा लेने के लिए। इस तरीके, उसमें साफ चेतावनी लिखी है कि 18 साल से नीचे बच्चे को दारू नहीं मिलेगी, लेकिन वहां तो 5 साल का बच्चा वो भी लेके आ जाएगा। तो ये इस तरीके की जो दोहरी नीति है ना सरकार की, इस पर काम करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला, पॉलिसी बनाना अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट कराना अलग चीज़ है। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एक बिल पावर चाहिए, जो नुकसान होगा वो हम झेलेंगे, लेकिन भारत के अंदर हम शराब नहीं बनने देंगे। ये चाहे पहले भी तो हुआ है ऐसे करके, अगर आप बंद करेंगे तो बंद होगा, अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर कुछ चीज़ें। नेक्स्ट, अब ये देखो, आधा भारत बोतल में चला गया। ये पिक्चरें मैंने कहीं अपने घर से नहीं बनाई हैं, ये पिक्चरें और ये डाटा कोई मेरा अपना नहीं है, ये सब रिसर्च का डाटा है। आप देखते चले जाएंगे, आप इसमें देखेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम तो 160 लाख लोग शराब पीते हैं। ये पहला वाला दिख रहा है, वो वहाँ एंड तक जा रहा है, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। आपका उत्तराखंड नहीं है मैडम इसमें, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका उत्तराखंड नहीं है। तो इस पर प्रैक्टिकल बात की जाए तो ये सब देखो, कोई वो नहीं बच रहा। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? नेक्स्ट, ये ट्रीटमेंट है साहब कि जो ड्रग डिपेंडेंस हैं उनको केवल 25% ट्रीटमेंट मिलता है, और उसमें से भी 25% में से भी केवल 44% होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं, बाकी अपना बाबा पंडा पुजारी यहाँ जाके अपने मस्ती करते हैं, सब वहाँ पर जाके अपना इलाज करा रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ भारत सरकार की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज हैं। मैंने पहले ही बोला कि सरकार काम तो कर रही है, सरकार की काम करने की इच्छा भी है, सरकार का काम करने का एक विजन भी है, लेकिन वो विजन क्या है, हम लोगों की वजह से ही फेल हो रहा है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैंने पहले ही बोला, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे CHO ज्वाइन कर लिया। CHO एक पोस्ट निकलती है नर्सिंग के बाद में,
और तभी कोविड आ गया। कोविड में उनको वैक्सीन लगाने की वो मिल गई, क्या कहते हैं, ड्यूटी मिल गई। अब गांव के अंदर क्या था कि तरह तरह के भ्रम फैले हुए थे वैक्सीन के बारे में। अब सरकार ने तभी किया कि वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो राशन कार्ड से जोड़ दिया कि राशन कार्ड, वो राशन तभी मिलेगा जब आपने वैक्सीन लगवाई हो। अब जिसको वैक्सीन नहीं लगवानी है उसने क्या किया, 100 रुपये दिए और क्या ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया कि मेरी वैक्सीन लग गई। और उसके बाद में सरकार ने पूरा डाटा दे दिया कि 100% वैक्सीनेटेड हो गया। लेकिन जो कोविड दोबारा आ गया वो ऐसे लोगों को आया जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं थी लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए थे। और ऐसे अगर काम हम करेंगे तो कहाँ विकसित भारत हो रहा है। लेकिन वो प्रैक्टिकल बात करनी है ना। मेरे स्टूडेंट खुद आके बोलते थे, वो क्यों बोलते थे, क्योंकि मैंने बोला यार तुम लगाते ही क्यों, तुम तो मना कर दिया करो। बोले रात को MOIC फोन करता है कि ये पूरे गांव के अंदर एक ही बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। लो, तो आधी से ज़्यादा वैक्सीन तो नाली में चली गई। तो ये ऐसी पॉलिसीज और ऐसे प्रोग्राम्स पे काम करना है तो सही से करना। ये सब प्रोग्राम्स हैं सरकार चला रही है, इन पे हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ट्रीटमेंट गैप। तो ट्रीटमेंट गैप क्या है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपसे कि देखिए भारत के अंदर क्या है। भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है आपको, क्या लोग ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट तब तक नहीं मानते जब तक उसको 500 रुपये की दवा नहीं दे दी जाए। अब साइकेट्रिस्ट का क्या ट्रीटमेंट है, वो तो काउंसलिंग करेगा और जब वो बाहर से निकलेगा तो बोलेगा इसने दिया तो कुछ है ही नहीं, तो उसकी साइकोलॉजी। तो इसमें ट्रीटमेंट गैप क्या है, इसमें साफ दे दिया 70 to 90%, 70 से लेकर 90% लोगों को तो ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा है साइकेट्रिक का। दूसरा दे दिया इसमें कि WHO कहता है कि 1 लाख पॉपुलेशन पर 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, लेकिन भारत में कितने हैं, 0.75, मतलब एक भी नहीं है। अगर 1 लाख लोगों पर 3 होने चाहिए, हमारे पास एक भी नहीं है। और साइकेट्रिक नर्स 0.16, मतलब 1/4 भी नहीं है। जबकि साइकेट्रिक नर्स के बारे में हम जानते हैं DPN जैसी चीज़ें हैं, हम जानते भी नहीं है DPN क्या है। और साइकोलॉजिस्ट 0.04% हैं केवल। सो कहीं कुछ मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता है कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे आप। तो अगर किसी से पूछा जाए, मैं आपको बरेली के मेंटल हॉस्पिटल के बारे में बता देता हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, केवल 3 ही साइकेट्रिस्ट हैं पूरे इतने बड़े हॉस्पिटल में। और ये 2014 को बता दूं, डॉक्टर प्रसाद अकेले साइकेट्रिस्ट थे वहाँ पे। तो अभी जैसे हम एक ही जगह जानते हैं, निमांस हुआ ये, तो लेकिन भारत सरकार काम कर रही है। भारत सरकार ने अपने नए एजेंडे में 47 PG डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। और जो CSC PSC पर है उसमें साइकेट्रिक को यूनिट को डेवलप किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डेवलप किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रूल्स बनाया है कि आप साइकेट्रिक इमरजेंसी को एटलीस्ट वहाँ पर देखें। और जो जनरल फिजिशियन है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कम से कम आप इतना तो सीख ही लें कि इमरजेंसी को हैंडल करें। और सबसे अच्छा न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल में इस बार निमांस 2 नॉर्थ इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। लास्ट आपका था पॉलिसीज़। आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये भारत सरकार के द्वारा पॉलिसी चलाई जा रही हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 96, निमांस एक्ट 2012, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 17, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 एंड टेलीमेडिसिन ये आपका 2022। ये इतने प्रोग्राम्स मेंटल हेल्थ के चल रहे हैं जो सरकार के द्वारा फंडेड हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अगर यहाँ बच्चों को ही पूछ लिया जाए तो इसमें से 2 या 4 ही बता पाएंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसीज़ बनती हैं और रास्ते में ख़त्म हो जाती हैं, वो यहाँ तक पढ़ी नहीं रही हैं। तो विकसित भारत देखना है तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। मैं फिर भी एक बार बोलूँगा आपको कि हेल्थ स्ट्रक्चर तभी सुधरेगा जब हैंड टू हैंड जुड़ेगा,
एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ेगा तब तो हैंड से हैंड जुड़ के पॉलिसीज पहुंचेंगी, अदरवाइज बीच में ही कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग विकसित भारत, कुछ विकसित भारत के लिए इंटरवेंशनल हैं, जैसे इसमें दिया है कि इनहेंस मेंटल हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल। अब हमारे अभी जहां हायर एजुकेशन के लोग हैं उनको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है कि हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर मेंटल हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ पॉलिसी बना के भेजनी है आपको। आपके यहाँ पर काउंसलिंग सेशन लगने हैं, आपके यहाँ पे एक काउंसलर अपॉइंटेड होना है, ये इंटरवेंशन है और ये चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज का जो युवा है वो कल पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इम्प्रूव वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़, मैंने पहले ही बोला कि जो काम करने का माहौल है वो अच्छा बनना चाहिए। डिजिटल मेंटल हेल्थ जैसे टेली मेडिसन, टेली साइकेट्रिक, ये सब इम्प्रूव होना है। और आपका जो ट्रेंड पर्सनल्स हैं, जैसे मैंने बोला कि वहाँ गैप देखा हमने कि केवल एक भी साइकेट्रिस्ट नहीं है, मेंटल हेल्थ नर्स नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इनके नए नए इंस्टीट्यूट, नए नए कॉलेज खुलने चाहिए और इन पर काम होना चाहिए। नीड फॉर रिफॉर्म, सो जो बहुत सारे लाइसेंसिंग कोर्स हैं उनको ज़रूरत है कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो। और लास्ट है कि जो गैप है उसको फिल करने के लिए भारत सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और उनके ऊपर नई पॉलिसीज़ फॉर्म करनी चाहिए। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा, अगर भारत विकसित देखना है तो हम सबको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। So again, thank you, sir, for your enlightening and impactful session. As our title is Impact at the Rate 2047. So for an enlightening and impactful session, thank you, sir. Your insights on mental health as a cornerstone of national progress have truly inspired us all. Thank you, sir, for your wonderful, practical and organic session. As I was also listening to Veer Vikram Sahadev ji. So in a very simple and organic manner, sir was telling us each and everything with the raw grassrooted words that what exactly we are doing right now. We all are youngsters, and like most of the aspirants, they are generation Z. So we should learn from Veer Vikram Sahadev's session, and very wonderful session. Have a big round of applause for Veer Vikram ji, Dr. Veer Vikram Singh Sahadev. Thank you, sir. Thank you for sparing time for all the aspirants. Impact at the rate 2047. Thank you, sir. Now, over to Mrs. Deepika Devepa for the oral presentation sessions. Thank you. And our judges are convener and co-convener Dr. Lalit Singh Bishji and Dr. Prakash Panji respectively. Thank you. Now, heading forward to the oral presentation by Sonika, M.Pharm Pharmaceutics from Kumaon University. Her topic is Development and Evaluation of Polyherbal Nanoemulgel for the Management of Atopic Dermatitis. She'll be connecting through online mode. Now, I'll be discussing about the conference Impact 2047, Vision and Mission.
Six Sigma Institute of Technology is organizing Viksit Bharat 2047 by fostering integrated advancement across key knowledge domains. It aims to bring together academicians, researchers, industry experts, policymakers, and students on a common platform to deliberately innovate strategies for sustainable national development. As due to some technical issues, we'll be waiting for a while. क्या कर दिया इन्हें सब? Our goal is clear to transform India into Viksit Bharat, a developed nation that heads the global stage, not just in number, but in innovation, empathy, and sustainable progress. By bringing agriculture, pharmacy, management, clinical sciences, and technology, the five pillars together, we can create a superhighway of knowledge. Now, Sonika will be connecting us with us. For the management of atopic dermatitis. Through this study, we aim to develop a novel tropical drug delivery system combining herbal actives with nanotechnology for the better therapeutic efficacy. Please Atopic connect along with your presentation. dermatitis. Sonika, on background, please paste your presentation so that we can understand it clearly. Okay, I'm. Is it visible? Yes, you can proceed further. Thank you. Okay. So I was. Good afternoon, respected teachers and my dear colleagues. Today I'm going to present my research work on formulation and development of polyherbal nanoemulsion for the management of atopic dermatitis.
So, through this study, we aim to develop a novel tropical drug delivery system combining herbal actives with the nanotechnology for the better therapeutic efficacy. Starting with the introduction, so atopic dermatitis is a chronic relapsing inflammatory skin disease which is characterized by itching, redness, dryness, and skin barrier dysfunction. So the pathology is in atopic dermatitis, the immune system become overactive when allergen enter through the damaged skin. The immune cell release inflammatory chemicals. So these chemical causes redness, swelling, and severe itching. So continuous scratching further damages the skin, creating a circle of itch and inflammation. These are my plant profile. First of all is Endographis paniculata, which is also known as Kalmeg, and the second is Dioscorea bulbifera, which is commonly known as Gethi in Uttarakhand. So there is a need for safer and more effective topical formulation instead of using a single herb. So I selected a polyherbal combination to achieve a synergistic therapeutic effect. So this is my extraction process. Using a hydroethanolic extract, I prepared a maceration of 50-gram dried powder sample and just placed it over 24 to 48 hours under shaking, then filtered through the Wortman filter paper. Then further, I have done the rota evaporatory, and through that, I got the extract. And I have performed phytochemical screening till now. So after extraction, phytochemical screening was performed to identify the presence of various bioactive constituents in the herbal extract, and the DPPH assay, which is also known as antioxidant test, where a freshly prepared DPPH solution was mixed with different concentration of extract, and the reaction mixture was incubated in the dark for about 30 minutes at the room temperature. After incubation, the absorbance was measured at 517 nanometer using a UV spectrophotometer, and this ascorbic acid was used as a standard reference compound. This is the calculation to measure the percentage inhibition. And at last, in conclusion, this study focused on developing a polyherbal nanoemulsion as a novel topical drug delivery system for the management of atopic dermatitis. And the formulation and optimization process is currently in progress, and further evaluation studies are being carried out to assess its effectiveness and stability. Thank you. Thank you, Sonika, for your insightful presentation. If anyone is having any sort of question, you can ask. Now, heading forward to our second oral presentation by Shashwat Pant on the topic opioid crisis and addiction management. He is also a student of MPharm pursuing MPharm Pharmaceutics from Kumaon University, Nainital. We'll be connecting with him shortly.
करें या फिर ठीक है. As now, we'll be starting over with another presenter, Miss Garima. She's been doing M.Pharm second year pharmacology student from Kumaon University. Her topic is artificial intelligence in chemical studies. Let us join us live. Is my screen is visible? Yes, you can proceed further. Good evening, one of our present here, respected panel members and my dear participant. So I am Garima Panchpal. I'm from pharmacology student from Department of Pharmaceutical Sciences, Kumaon University, Bhimtal campus. So in this presentation, I will be explaining you how AI is transforming our traditional clinical trials and making drug development faster and more efficient. For my oral presentation, I choose the artificial intelligence in a clinical trial. So here we go start. Is my screen is showing? We can't see your presentation on the background. We can't see your We can't see your presentation on the background. Okay, Karima, you can continue. So this will be the content of my presentation. First, I'm going to give an introduction about the AI and the clinical trials. Then I'm going to tell you about the what are the challenges which we face during a traditional clinical trial, and then the transformative role of AI in clinical trials and AI tools which generally used in a clinical trials and case study and industrial example sums, and some limitations of AI and future scope. And in the last, there will be a conclusion. So as we already know, as we all are so familiar about AI, so AI is a branch of computer science that allows machine to perform tasks that normally require a human intelligence. So AI system can be learned from the data. It generally recognize the pattern and make prediction, and it generally support a decision making. Major AI techniques which are used in nowadays are the machine learning and the deep learning and the natural language processing. In machine learning, they are the learn from the past data which improves over a time. And in deep learning, they generally use a network to analyze a complex data or a complex information. In natural language processing, that is a NLP, it generally understand and process human language, like what kind of prompt human are putting in that AI, like in ChatGPT and Gemini. So in healthcare,
AI helps analyze large amount of medical and research data for the quickly and accurately results. So, as we are a pharmacy student, as we all are very familiar about the clinical trials. Clinical trials, these are the systematic research study which generally conducted in human participant. Their aim to evaluate safety, efficacy, doses, and the side effect of a new drug, vaccine, or any medical devices. Essential steps before regulatory approval and market launch is generally done by the clinical trials. It generally conducted by the good clinical practice, that is a ICH guideline. It generally require a ethical approval from the ethics committee, like institutional review board, and it involve informed consent from the participants before conducting any clinical trial. And there are some objectives of the clinical trial in which we determine a safe dosage range and identify therapeutic effectiveness and monitor adverse drug reaction and compare new treatment with the standard therapy, which generate a scientific evidence for the approval of any kind of drug. So, as we already know, in a clinical trial, there are different kind of phase in which we select a participant according our needs. Like in phase zero, which is generally known as a preclinical study, also in which we generally done our compound testing in laboratories in animals to determine if the treatment is useful or safe. But sometimes scientists also done a zero phasing clinical trial in which we generally take very small number of people, like around 10 to 15 people, and very small number of dose, which generally check how the drug behaves in a body, and generally early human data, we can say. Now in phase 1, there's a this stage is called as a safety, in which we take a 20 to 100 healthy volunteers, which generally give a data on the safety basis. Like in this, we generally take a safe dose and we check the side effects and the ADME parameter, which is also known as a pharmacokinetic parameter. In this phase, we generally check is it that drug is safe or not. If that phase is correct, like if that phase is the pass, then we go for a phase second, in which we check a safety and the dosing of that particular compound or a drug, in which we evaluate a safety and the determine effective dose. And in a phase third, we do a safety and efficacy testing, in which we confirm our effectiveness and monitor side effect, in which we generally take a 300 or maybe 1,000 plus participant for the testing. And last one is a phase 4, in which we do a post approval checking, in which we generally do a pharmacovigilance part, like post marketing surveillance to evaluate a long term effect, in which drug generally get in the market, and then we analyze any long term of a side effect of a drug. So these are the some challenges which generally face in a traditional clinical trial. Like there was a very high cost and long duration and expensive. Like it takes a very long time, like a 5 to 10 years. And was a recruitment issue. Like in clinical trial, we have to recruit a participant or volunteer for a different phase with a different condition. So it was very difficulty to enroll and retaining the patients. And it was a limited diversity. Like we can't take a that much of diversity because it take a long time. So poor representation of a real world population was there, and the regulatory and ethical burden, like complex approval and safety concern, was there also a problem. And then there was a data and operational challenges, that was a manual error and site limitation, and high failure rate, that is a many drug fail in a later phase. As we all know, in a clinical trial, there was a lots of drug which generally fail in a phase 1, maybe in phase 2, and mostly in a phase 0 also. So it was very hard to challenge these kind of challenges. Then there's a transformative role of how AI is in a clinical trials using and changing the whole scenario. Like it generally accelerates the drug development process, and it will do a cost reduction and improves the success rate and enhance data quality. It generally also promotes the diversity and the accessibility, and it also strengthens the patient safety, and it supports a precision medicine. Like continuing AI-based monitoring detects adverse drug event like earlier, and it also validate an AI drive analytical reduce error also, and it also predict a model which help to select a suitable patient or a population for the clinical trial. So these are the some AI tools we generally use in a clinical trial. Like these are the some global platforms: IBM Watson Health AI for patient matching and oncology trial analysis, and DeepSeek AI based patient recruitment using EHR
data. The EHR data is an electronic health record, which is generally taken from the hospital. Then next one is a mediated AI-driven trial management, which is a risk-based monitoring AI device by which we do a risk-based monitoring of the patient. And then is a Tempus. It is generally focused on the genomic data and analysis for the precision and the medicine trial. And then there's a second last is unlearn AI digital twin, which generally optimize a control group. Or in India platform, we generally use these kind of AI tools like our Tata Consultancy Service ADD platform, that is clinical data analytical tool. Infosys Life Sciences is a company also is a trial automation and the predictive monitoring. In IQVIA, it is a well-known company also in India for the real-world evidence AI-based equipment. And next is a single tuple AI driven, that is a healthcare data analysis, which also do a pharmacovigilance or a side effect monitoring of the drug. Then is a Nirmai, the AI-based screening and the clinical validation. Then these are some case studies and the industrial examples in AI in clinical trials. Like in global cases, Pfizer, like in COVID-19 during a vaccine trial, there was a very hard to analyze a large amount of medical data at that time, and it was such an emergency for all of the world. But using this AI tool, it for the rapid data processing and the safety monitoring, and it enabled the faster participant analysis and real-time monitoring, and help to accurate emergency approval timeline. And second one is the Unlearn AI. Alzheimer's clinical trial is this trial. In this AI tool, digital twin technology was created by a virtual control group patient. It generally reduced the number of real patient need in a placebo group, and it improved the statistical power and reduced the trial duration. Now, and the last one is our Novartis AI tool. It mediates the platform AI-based patient recruitment and predictive modeling, and identify eligible participant faster and reduce trial delay. These are some cases of industrial example in India, like Tata Consultancy Service ADD platform, AI-driven clinical data analytical. It is generally do the automation and the pharmaceutical trial. It improve the operational efficacy and the compliance. In IQVIA India AI tool, it generally do the risk management or real world evidence analysis. It enhances the monitoring and the risk prediction in the trial. And then is a single tuple, that is a AI based medical data analysis, which generally support the diagnostic and the validation study in the clinical research. So these are some limitations of the AI in clinical trials, like there is a data privacy issue and the security risk, and there is some of poor data quality also, and there is uncertainty of the regulatory authority, like regulatory authority is not fully trusting the AI tools because of their black box, in which generally input and the output of the like in this what kind of how they are arranging the information for us. If you are putting some question and they are getting some answer, but we don't know the where the source is, so that kind of issue is the lack of the clear global guideline for the AI validation. And some algorithm biases, like the basis, like biased training data also lead to inaccurate unfair prediction also, which is also causing some limitation for the AI in a clinical tool. And needed for the skilled workforce, like required a trained data scientist and clinical expert. And lack of the transparency, as I already told you, like a black box issue, like some AI models are difficult to interpret. So these are some future scope of the AI in the clinical trial, like the precision medicine, the personalized treatment based genetic and the biomarker data, and Garima, you the are decentralized expanding clinical your trials are time. more virtual and the remote participation using we, and the real world Garima, evidence you are integration, like expanding your use of time. EHR Please as a big data for fasten. the better decision making. Yes, ma'am. You are expanding your limit of time. Please It's conclude it ending. fast. So this is the conclusion. So like by using the AI is a transforming a traditional clinical trials, and it reducing the time and cost through the faster patient equipment, and it enhancing the data quality and real-time monitoring, and supporting the precision of medicine by identifying the right patient, and it's strengthening the safety monitoring and enables the decentralizing, and however ethical regulated data will be must be carefully. Thank you. Okay, thank you, Garima, for discussing various AI tools for fastening the clinical trial process. Now we'll again try to connect with Shashwat Pant
who will be our third oral presenter on the topic opioid crisis and addiction management. Please connect him on screen. To build the India of 2047, our knowledge must flow like a single river and not stayed in a separate pond. So, now we'll be heading to Shashwat Pant. Management. Let's start this. Before that, is my screen available? Yes, Shashwat, you can continue. Okay, thank you Thank so you much, for ma'am. joining. So, as you know that opioid crisis is a major public emergency characterized by the misuse of prescription opioids, heroin, and various synthetic opioids such as phenytoin. It leads to the whispered addiction, overdoses, deaths, and significant social and economic consequences. So, as you know, there's opioid crisis nowadays is increasing a lot from 21st Shashwat, can centuries, you and we please all are connect your trying to presentation? do not use the misuse of prescription and penetrate the opioids. So Shashwat, please connect your presentation on the screen. Thank you. ma'am, is it available now? Yeah, you can proceed further. Okay, thank you Thank so you. much. Continue. So continuing, what are the opioids? So opioids are current class of drugs which are primarily used for pain relief. It acts on the receptors to the brain to reduce pain repression. So there are various types of opioids such as natural, semi-synthetic, and synthetics. So the history of opioids starts from the late 90s, where pharmaceutical companies reassure us for the prescription opioids were safe and not addictive. Like drugs such as oxytocin was heavily marketed for the chronic pain, contributing to the whispered misuse of its overdose. So moving forward, we are having the crisis that occurs in for the opioids. First is the prescription of opioids misuse, rise in the heroin, increase in the synthetic opioids. And the causes of the opioid crisis are the overprescription of medication, aggressive pharmaceutical marketing, lack of awareness about addiction risk, socioeconomic stress, easy availability of illiterate opioids, inadequate mental health. Then I will tell you the sign and symptoms of opioids use that are disorders, strong cravings for opioids, inability to control use, drowsiness, constrict pupil, social withdrawal, and financial or legal problems. And secondly, the consequence that has opioid crisis are health effect which can give you the overdose and death, respiratory depression, infection disease such as HIV and hepatitis C. Moving to the overdose, it can give the sign and symptoms of slow breathing, blue pupil and fingernails, unconsciousness, pinpoint pupils, diagnosis of opioid use, etc. Then the management of opioid addiction, which could be the MAT, which is medication associated treatment, is the treatment which involve the common medications such as methadone, which reduces the withdrawal and cravings. MAT improves the survival rates and reduce replace. Second, we are having the behavior therapies, which are CBTs, conjunctive behavior therapies, which are related to the motivational interviewing, family treatment, etc. Then harm reduction strategies, which include needle exchange programs, supervised consumptions, safe prescription practices. The goal is to reduce negative consequences without requiring immediate assistance.
Then preventive strategies include public awareness, prescription monitoring programs, early mental health interventions, and others. So then we are having the role of healthcare professionals. So they play a pivotal role as a professional for identifying the patient risk, educating patients about opioid risks, prescribing safely, referring patients for specialized addiction treatment, and providing the long-term follow-up and supports. Last, with the conclusion, so it is a complex crisis. Opioids medicines are, as you know, that it's required a lot. Without opioids, it is required in a very not in a very large amount. It can become a harmful, so we need every in a small or in a small dose. And where there are various treatments, psychological support, social rehabilitation and policies, and early prevention, proper prescribing and accessible treatment are the key reducing opioid harmful harm. With this, I'm ending my presentation. Thank you and have a very nice day. Thank you, Shashwat. All done? Oral presentations? Okay, we have done with the oral presentations. Thank you all the young aspirants, young mind, research scholars. You have done very well in this event, that is National Conference Impact 2047. And in this sequence, our event has been graced with the presence of our featured speaker from the pharmaceutical background. So I humbly request our convener, HOI, Head of Institution, SSITS, Dr. Lalit Singh Bishti, please come nearby stage. And I request guest management volunteers, please carry the tokens and all the things. And may I request Professor Dr. Kumud Upadhyay ji, Head Department of Pharmaceutical Science, Kumaon University, Bhimtal Campus, Nainital, Uttarakhand. And here, her HOI is representing scarf of honor, cap of pride, Uttarakhandi cap, along with the token gesture. So once again, have a big round of applause. Everyone, please. We had taken lunch, we had networked with each other. So again, I request, have a big round of applause, everyone. Thank you. Thank you so much. Young scholars. Now over to Mrs. Deepika Devipa ma'am to proceed for our featured speaker, Professor Dr. Kumud Upadhyay ji. Kindly Now, roll call for this proceeding. Thank you. we are moving to the session 6, where he'll be discussing pills, progress, and prosperity, the pharmacist role in Viksit Bharat. It is my honor to introduce Professor Dr. Kumud Upadhyay, Head of Department of Pharmaceutical Sciences at Kumaon University, Bhimtal campus. He is a distinguished academician and researcher. Sir has made remarkable contribution to the pharmaceutical education, research, academic leadership. He has mentored numerous students and research scholars, fostering innovation and excellence in the field of pharmaceutical science. On a personal note, it is truly a proud and emotional moment for me, as I had the privilege to be his student. Sir, thank you for always guiding us and enlightening our path with knowledge of wisdom. Respected sir, we are deeply honored by your presence. Thank you, Deepika. Good afternoon, everyone. So, we are gathered here to discuss about the future. As the topic suggests, Impact 2047. Now, we have a title here. Please, presentation. Now, I believe we have a mix of students and not all of you are from a pharmacy background. Those of you who are not from pharmacy background, yes, pharmacy के student जो नहीं हैं, एक बार हाथ raise करेंगे please.
Okay, so we have a good number of those who are not studying subject on pharmaceutical sciences. Actually, I was, when I was asked to come here or I was invited for a lecture, I was of a mind that students will be of pharmaceutical sciences. That's why I had kept this topic. Though it will be of your interest to you, and I'll tell you why, as and when we progress. But the overall theme is interesting to you and to me. It's a long time, 2047. 2 decades, isn't it? 2 दशक के बाद की बात कर रहे हैं हम. तकनीकी रूप से ना आपके इंटरेस्ट की है ना मेरे इंटरेस्ट की. I may not be there to see that. Okay. I am reaching well near, I am nearing my, this thing, later half of 50s. Okay. And you will be at the peak of your, this thing, career. After 20 years, whatever you may be having your dreams or you are about to achieve, you must have achieved. तो देखा जाए तो 2047 में क्या होता है 2047 में, वो हम दोनों के लिए बहुत महत्व नहीं रखता एज अ करियर, एज अ फ्यूचर, लेकिन रखता जरूर है. क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, when we are talking about the future, it's like a relay race. We pass on the baton. Like Deepika was just telling, we are proud for one reason. Being in Kumaon University, we always had good students. Many students for whom we are proud of. हम जाते हैं बाहर, हमारे students मिलते हैं, and we hear the praise about them. As a teacher, this is the best thing we earn. अपने स्टूडेंट के मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट से बाहर. One day, when you will be in my shoes, you will understand that. जब आप मेरी जगह आएंगे, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. It's been 30 years that I have been teaching. And to tell you a little about myself, I did my M.Pharm or the postgraduate in 1992. So it's been 30 years. जो मैंने अभी कहा ना कि मैं देख पाऊंगा कि नहीं, मुझे बहुत भरोसा नहीं है, बट मेडिकल साइंस बहुत बदल गई है. एआई पे हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं. अभी दिल्ली में इतना बड़ा एआई, इंडिया बिकेम द लीडर. देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई इसलिए करना पड़ा. बीइंग अ टीचर, I have to know what I have to deliver and to whom I have to deliver. मुझे किससे और क्या कहना है, दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं. और मैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में आता ही इसलिए हूँ. सी, नचिकेता ने अपने पिता से कहा, अगर आपने कहानी सुनी हो नचिकेता की, उसके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उसमें अपना सब कुछ दान में देना होता है. तो उनके पिताजी ने वो गाय तो अपने परिवार में और उसमें बांट दी जो अच्छी थी, और जो बहुत बूढ़ी थी उसने देखा कि वो अपने हिस्से का पानी पी चुकी है, अपने हिस्से का चारा खा चुकी हैं, उनको ये दान करना. और उन्होंने कहा कि इससे तो पिताजी को यश नहीं मिलेगा. उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी तो आपका धन हूँ, पुत्र रत्न हूँ मैं आपका, आप मुझे किसको दान देंगे. लगातार जब उसने ये प्रश्न किया तो पिताजी बहुत गुस्सा हो गए. उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि जा, मैं तुझे यम को देता हूँ. एंड एवरीवन और द ऑडियंस वाज शॉक्ड. कोई बाप अपने बेटे से नहीं कह सकता. तो इस कहानी का जो सार मैंने उठाया, जैसे उन गायों ने अपने हिस्से का पानी पी लिया था, अपने हिस्से का चारा खा लिया था, मैं भी अपने करियर में बहुत कुछ कर चुका हूँ. अब आपकी बारी है. तो जब आपकी बारी होती है तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि बेटर मैं अगली जनरेशन को पास ऑन करूं. भाई रिले रेस हम लोग सब जानते हैं कि सब रेसर्स दौड़ते हैं, सबके एक के हाथ में बैटन होता है, वो नेक्स्ट को देता है, एंड दैट द रेस इज कंप्लीटेड. बट फ्यूचर कैन नॉट बी कंप्लीटेड.
बड़ी मज़ेदार बात है ये, अब इस पे भी बात होती है कि वी हैव पास्ट एंड फ्यूचर बट डू वी हैव प्रेजेंट। बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये करेंगे, बट मोमेंट वी से प्रेजेंट इट बिकम्स पास्ट। तो हमको सोचना तो फ्यूचर के बारे में ही पड़ता है, ओके। और यही सोच के हमारी गवर्नमेंट ने विजन 2047 रखा, जो कि हमारे स्वाधीनता के 100 साल पूरे होने का समय होगा। 100 साल आप समझ सकते हैं कि एक लंबा अरसा है। आप जो यंग जनरेशन है, बहुत सी चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी जो हमने देखी हैं। आप जो देख रहे हो, अब एआई की बात कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ होगी कि नहीं होगी? जैसे हमारे लिए कलर टीवी तब एकदम नई चीज़ थी, मारुति आई 800 के नाम से, वो एकदम नई चीज़ थी। उससे पहले एम्बेसडर और फिएट चलती थी, मैंने एम्बेसडर पे चलाना सीखा। आप उस गियर की कल्पना भी नहीं कर सकते जो स्टीयरिंग के बगल में हाथ में लगे होते थे। फ्लोर गियर नहीं होता था जैसा आजकल की गाड़ियों में होता है, वो स्टीयरिंग के बगल में लगा होता था, उससे मैंने गाड़ी चलाना सीखा। हमको तब क्या मालूम था कि फ्लोर गियर आ जाएंगे और इतने कम स्टीयरिंग जो है आजकल तो बिल्कुल बच्चों का खेल है गाड़ी ड्राइव करना, ठीक है। तो वैसे ही ये जो विजन 2027 है वो आपको विजुलाइज करने का मौका देता है। हमारे पास वो सुविधा नहीं थी, आज आपके पास ये सुविधा है कि 2047 कैसा होगा। और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। जब मैं बदली की बात कर रहा हूँ, हमारे समय में जो हमने कंप्यूटर्स देखे थे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। 1 GB भी उसकी मेमोरी नहीं होती थी। फ़ोन में MBs में डेटा आता था, आज आप अनलिमिटेड है, ठीक है। तब पैसा ज़्यादा लगता था और डेटा लगभग नहीं होता था, और उसमें भी अगर आपने देखा हो पुराने कमर्शियल से उसमें, तो वो डेटा आने में ही बहुत टाइम लग जाता था। कंप्यूटर को स्टार्ट होने में 10-10, 15-15 मिनट लगना आम बात थी। आज आप इरिटेट हो जाओगे अगर आपका कंप्यूटर तुरंत स्टार्ट ना हो, है कि नहीं है? इतने रील्स आते हैं कि आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, अच्छा आपका लैपटॉप स्लो चलता है, आप ऐसे कीजिए, isn't it? तो वो जब तक आप खुद ना महसूस करें तब तक नहीं मालूम होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 2047 हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। और चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। एआई का जो मैं कह रहा था, अभी समिट हुआ है इंडिया में, कभी हम सोचते नहीं थे, वी वर पुअर कंट्री। इतना बड़ा आयोजन करना तो हमारे लिए सोचना भी दूर की बात है। और इस मामले में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे सामने उनकी आंखें नीची हैं, क्योंकि हम वो करने में सक्षम हुए, हम वो विचार करने में सक्षम हुए। नहीं तो ये लोग नेताओं को कोसते हैं, गालियाँ ही तो देते हैं कि ये नेतागिरी कर रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है विजन 2047 की बात करने की? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज़ नियर 80 years, हिज एक्टिव लाइफ एज अ पॉलिटिशियन। तो चूंकि फिट है इसलिए इतना चल पा रहा है। 80 साल में कौन आपके घर में बड़े बूढ़ों को देखते होंगे आप, ठीक है। तो उन्होंने सोचा, क्यों सोचा, इसकी वजह है। तो आई विल कम बैक टू द टॉपिक, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। विकसित भारत 2047, शायद इस पे बात हुई होगी काफ़ी, ओके। अभी भी हम, जो मैं कह रहा था ना कि हम लोग तो पुअर कंट्री थे, डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन बाद में वर्ड यूज़ होना शुरू हुआ, एंड वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। बट इन लास्ट 10 years वी हैव सीन अ सी ऑफ चेंज। हमने अभी हाल में इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ा है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जब हम छोटे थे तो जापान से अगर कोई चीज़ आती थी, इम्पोर्टेड का तब बड़ा नाम होता था। आज आप लोग वो नहीं सुनते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के टर्म में इम्पोर्ट सुनते होंगे। हमारे टाइम में कोई भी अच्छी चीज़ होती थी वो इम्पोर्टेड। इवन कलम पेन भी बहुत साधारण से होते थे हिंदुस्तान में। तो अगर कोई किसी को चाहे मेड इन चाइना पेन आ गया या स्मगलिंग हो, तब बहुत हुआ करती थी इन चीज़ों की। तो ये जो विकसित भारत है वो हमको डेवलप्ड विश्व गुरु की जो बात करते हैं, हम उसकी तरफ जाने की चेष्टा कर रहे हैं।
It focuses on इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आप इनोवेट करें और सस्टेन भी करें चीज़ों को। सेशनल दिया और भूल गए, यही होता है क्यों भाई? खूब मेहनत की, रात में पढ़ा, सेशनल दिया और 2 दिन बाद वाइवा में उसी का जवाब नहीं बना देते बनता है, कई बार होता है कि नहीं होता ऐसा? तो सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ लाइक दैट। प्रॉस्पेरिटी वर्ड इसमें यूज हुआ है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपने वो समय नहीं देखा है जब ये देश बहुत बदहाल हुआ करता था। आज मुझे कोई चिंता नहीं थी, मेरा 3 बजे का सेशन मुझे बताया गया था और मैं इत्मीनान से 12 बजे निकला हूँ। भीमताल, विच इज समथिंग लाइक 80 to 100 किलोमीटर्स। और अगर पहले जैसा समय होता तो आपको 1 हफ्ते पहले से चिंता करनी पड़ती कि अपनी गाड़ी से अगर मुझे जाना है तो कैसे जाना है। तो ये जो है प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, आज हम उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो प्लीज नेक्स्ट। दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक आइडिया, आई हैव बीन टेलिंग यू अबाउट दैट। अगर हम बेटन पास नहीं कर रहे हैं तो हम अपने रोल से जस्टिफाई नहीं कर रहे। एक आदमी ने अपने ज़माने में अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं किया होता तो आज हम लोग इतनी बात कर रहे होते। उसने भी तो कुछ सोचा होगा, उसके मन में भी कुछ प्रोग्रेसिव थॉट्स होंगे। तो यू हैव टू थिंक फ्यूचरिस्टिक। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने काम के साथ, अपने आप के साथ और अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सो विद दैट विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एज आई वाज सेइंग, किसी को अगर नींद आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं सोएं, ओके? तो खाना खाने के बाद होता है, आई डोंट माइंड, हमने भी किया ऐसा और हम भी कर लेते शायद अगर मेरा लेक्चर नहीं होता तो। आई माइट हैव बीन फीलिंग ड्राउजी, ओके? सो आई डोंट माइंड, बट लेकिन शांति से सोना, अगर सोना भी था। कोई ऐसा तो नहीं है जो 4 लोगों की नींद खराब कर देता है जब सोता है, ठीक है? तो बस इतनी शांति बना लेना, थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम अपने हिस्से का कर चुके हैं। मेरा काम है आपको थोड़ा सा जागरूक करना। बाकी तो आजकल सब एआई का ज़माना है भाई। एआई है क्या? एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। आप लोगों में से अगर किसी ने वो पिक्चर देखी होगी, कौन सी थी यार, नाम भी भूल जाता हूँ, तो उम्र हो गई है। नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसमें कंप्यूटर वाला वो था ना कि ह्यूमन को सारी कंप्यूटर लर्निंग मशीन से मिल जाती है। ओके, आई विल रिमेंबर एंड आई विल टेल यू द नेम। बट द core pillar, the first word is very important, skilled youth। देखिए, आप सब प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं। आई हैव बीन टेलिंग माई स्टूडेंट्स, आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास करना चाहिए। ताइवान जैसी छोटी कंट्री में 95% स्किल्ड हैं यूथ, और हमारे वहाँ ये कहा जाता है कि 75% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। वो काम के लायक नहीं है, ग्रेजुएट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी स्किल पे जोर नहीं दिया। और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसका आप देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे, दे टॉक अबाउट स्किल। अभी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से इससे पहले नर्सिंग कॉलेज से जो डॉक्टर साहब थे, वो उन्होंने कहा ये बात, एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, अब वो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए, और उसमें स्किल पे जोर है। स्कूल के लेवल से, स्किल फ्रॉम द लेवल ऑफ योर स्कूल। हमने जो ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट किया था, उसमें क्या था? यही तो था कि आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी करनी है, और वो इसलिए क्योंकि दे वांट सम एजुकेटेड सर्वेंट्स। हम उसी दुष्चक्र में फंसे रह गए। पहले ऐसा नहीं था। कितने लोग होते थे जो राजा के यहाँ दरबार में नौकरी करते थे?
बाकी तो सब सेल्फ एम्प्लॉयड थे। हमारे वहाँ तो बहुत वेल डेवलप जो वर्ण सिस्टम था, सबको अपनी योग्यता के हिसाब से मिलता था काम। ठीक है, तो कोर पिलर इज स्किल्ड और वुमन। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गुड नंबर ऑफ वुमेन आर देयर, द गर्ल स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन पहले इतने अवसर थे नहीं। लेकिन फिर भी मैं इतने 30 साल की अपनी टीचिंग करियर में ये देख रहा हूँ कि अभी भी वुमेन में बहुत पोटेंशियल है एंड इट इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड वेल। ओके, टेक्नोक्रेट्स, वी अर्लियर वर यूजिंग द वर्ड ब्यूरोक्रेट्स हु न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। IAS PCS वाला जो दौर था वो अब ख़त्म हो गया है। टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो आपको हमारे फॉरेन जो सेक्रेटरी है उनसे समझ में आ जाएगा। कितना बढ़िया फॉरेन जा कर के बात करते हैं, जयशंकर एम जयशंकर, बिकॉज ही नोज द सब्जेक्ट। ओके, सो वी वांट टू मेक इट 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। We are 4.18 and with the growth rate of 8.2%, हम 7.3 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे अभी के सिनेरियो में। ओके, बट हमारा टारगेट आप देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, 7.3 मिलियन और 30 मिलियन। ओके, सॉरी ट्रिलियन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम AI की बात करते हैं, आगे जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि AI क्या है। AI इज टोटली डेटा बेस्ड। इस तरह का डेटा समझना आपको आना चाहिए। हम ग्रोथ की बात करते हैं, किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम? फार्मेसी स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ाता हूँ, आई एम टीचर ऑफ फार्माकोग्नोसी, आई ऑलवेज टेल द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। हम उसी से शुरू करते हैं। इट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर कॉमर्स इन्वॉल्व नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है। नौकरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यू कैन एम्प्लॉय मैनी, जरूरी थोड़ी आप नौकरी करें, आप तो नौकरी देने वाले भी हो सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य इतना है। सो द प्रायोरिटी एरियाज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सबसे बेसिक नीड तो यही है ना। क्यों? बाकी आप में से अगर कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो तो उसने मैस्लोज हायरार्की एक शब्द होता है। आदमी सबसे पहले अपने पेट भरने के बारे में सोचता है, फिर वो अपनी जॉब और इस तरह की बातें, जब उसका पेट भरा हुआ हो उसको जॉब और सिक्योरिटी चाहिए होती है। जब वो जॉब और सिक्योरिटी मिल जाती है तब उसको अपना समाज में एक नाम भी चाहिए होता है। और जब वो इस तरह की बातें करने पा जाता है तब वो हायर गोल्स की तरफ जाता है, जिसको कि हम लोग आध्यात्म कहते हैं। अपने हमारे वहाँ आश्रम थे ना, ब्रह्मचर्य था, उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम था, फिर संन्यास आश्रम था, वानप्रस्थ। वो जो कह रहा है वो हमारे वहाँ पहले कहा जा चुका है। सेल्फ रियलाइजेशन, संन्यास के आश्रम में जाते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, देन यू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वानप्रस्थ, आप जान चुके हैं जीवन के रहस्य को। मैं इसलिए नहीं अपने सनातन पे गर्व करता हूँ कि मेरे पास कोई और वजह, ये वजह है कि वो बहुत ही साइंटिफिक है। जो आज आपका वेस्ट कह रहा है वो सालों हजारों साल पहले हमारे वहाँ कहा जा चुका है। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ तो वानप्रस्थ आश्रम, उन्होंने कहा जाओ अब भैया, अब तुम लोगों के बीच में रह के क्या करोगे, तुम्हें तो वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो इनको समझना मुश्किल है। अब आप इनके बीच में रहोगे तो बड़ी कन्फ्लिक्ट हो जाएगी। संन्यास आश्रम तक ठीक है, आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ हैं। आप जिस जीवन से निकल के आए हैं उसको, जिससे कहते हैं ना गुन्ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में हमने क्या किया और क्या रहता है, जीवन का रहस्य जिसे हम लोग समझते हैं। आप देखते हो वेस्ट से कितने लोग आते हैं हिंदुस्तान में, वो सब नौकरी वोकरी करके
एक तरह से संन्यास आश्रम की तरफ आते हैं, हमारी तरफ खींचे चले आते हैं, इसीलिए आते हैं। ठीक है, जो मैस्लोज हायरार्की एमबीए में तो खूब मैनेजमेंट वालों को ये सब पढ़ाया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशंस भी हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ा घर से आने में। आप अपना माल भेज रहे हैं, 1 दिन में पहुंच रहा है और 5 दिन में पहुंच रहा है, कितना फर्क आ जाएगा कॉस्ट में? दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेस वे बन गया है, 8 लेन, ट्रक्स के लिए सीधी सड़क है, उनको कुछ नहीं करना होता। नहीं तो आपने पहले पुराने ज़माने में देखा होगा, ट्रक सड़क के किनारे पलटे रहते थे, उनको रोड ही नहीं होती थी इतनी, साइड देने में, पास देने में वो हो जाता था, या कहीं स्टक कर गए, रोड अच्छी नहीं है, 1 दिन के काम में 15 दिन लग रहे हैं, 1 दिन 2 दिन के जर्नी में। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप इस रूम में बैठे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये था नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे सस्टेन, टेक्नोलॉजी एंड सोशल वेलफेयर, हमारे सामाजिक दायित्व जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ नेक्स्ट। मुझे कितने टाइम और है ये बता देना, मैं तो बहुत लंबा भी खींच जाएगा। सी बिफोर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये चूंकि मैंने कहा ना कि अब मेरा ओरिएंटेशन बदल चुका है। नाउ आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, नॉट टू दी फार्मेसी स्टूडेंट्स। एक चीज़ है जिसमें हम सब भली भांति परिचित हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अभी बात कर रहे हैं। डेटा है, जो मैंने भी कहा, डेटा महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आप एआई से जुड़ना चाहते हैं। 2-3 स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा अभी, वो आपके इम्पोर्टेंट्स की होंगी, बाकी फार्मेसी पे मैं फिर कभी इन लोगों से बात कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, आप सब आजकल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट से हम लोग, हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं। एक चीज़ आप गौर करेंगे, हर वो बॉलर जिसको बॉल फेंकनी है, बॉल तो आगे फेंकेगा लेकिन उसको पीछे जाना पड़ता है। अग्रीड? ही हैज़ टू वॉक बैक, और जितना फास्ट बॉलर होगा उसको उतना पीछे जाना पड़ेगा। है, कभी इस एंगल से सोचा नहीं होगा। तो अगर आपको डिलीवर करना है तो यू हैव टू कनेक्ट टू योर पास्ट। और जब हम इंडिपेंडेंस के पोस्ट, अब हम तो पूरा 100 साल देख रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना, हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं। 1947 में जब कंट्री हमारी आज़ाद हुई, आज तो सोशल मीडिया आप लोग को सब जानकारी रहती है जो मैं कह रहा हूँ। आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो क्या नाम लेते हैं उसको, आपको उसमें मिल जाएगा। एआई पे जेमिनी है, चैट जीपीटी है, अब तो हमारा परप्लेक्सिटी भी है इंडिया का। पहले तो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे तो उसी पे वो रहते थे। हिंदुस्तान का आदमी पढ़ता लिखता आईआईटी यहाँ से करता था और विदेश जाता था। सुंदर पिचाई हिंदुस्तान से ही तो गए हैं, जो सबसे बड़ी डेटा कंपनी है आज वर्ल्ड की, गूगल, ही सीईओ। ठीक है। तो 1947 में 1947 जब इंडिपेंडेंस आई, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप यंग जनरेशन हो इसलिए मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ। आवर इकोनॉमिक मॉडल वॉज दैट ऑफ, इट वॉज अ मिक्स। प्राइवेट सेक्टर का कोई ज़्यादा रोल था नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। इंडस्ट्री जो थी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। कुछ हद तक हम मॉडर्न थे, लेकिन सोशलिस्ट, लगभग कम्युनिस्ट टाइप का सिस्टम था हमारे वहाँ। देयर वॉज रेड टेपिज्म। आज शायद आप इतना ना सुनते हो, उस जमाने में लाल फीता शाही की बात होती थी, फाइलें लाल रिबन से बांधी जाती थी, तो इसलिए उसको लाल फीता शाही कहते थे। बहुत से चैनल से गुजरती थी। एक इंडस्ट्री शुरू करनी है, लोगों को 8-8, 10-10 साल भी लग जाते थे। आज आप सोच सकते हैं ये बात, किसी के पास इतना पेशेंस है? ऐसा होता था। सरकार जिस कंपनी को चाहे बना दे, जिसको चाहे मिटा दे, और ऐसा हुआ भी। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और इसकी वजह से हम
वो पुअर कंट्रीज़ में ही रह गए, क्योंकि हमने उसको उस तरीके से लिया ही नहीं जैसे आज हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। और 1990 47 से 1990 तक का जो पार्ट था उसमें हम उसी मॉडल पे चले। 5 ईयर प्लान, हम रशिया को कॉपी करते थे। 5 ईयर्स प्लान, हम आज ये 20 साल की बात हो रही है आगे के, और तब 5-5 साल के टुकड़ों में प्लान बनते थे, 5 ईयर प्लान कहते थे उसको। ओके, स्थिति ये आई, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, अब तो बात होती ही है, 1990 तक आते आते हमारे पास इतना ही पैसा बचा फॉरेन एक्सचेंज में कि केवल 2 हफ्ते की इंपोर्ट वैल्यू थी जिसकी। अगर हमको बाहर से, हमको मालूम है ना, आप तो सुन रहे होंगे कि इंडिया को पीछे अमेरिका इसलिए भी पड़ा क्योंकि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और वो मना कर रहा था। तो वो ऑयल इंपोर्ट सब डॉलर में तो होता है, हाँ पर डॉलर ही नहीं था, खत्म। आपने खत्म शब्द सुना होगा, एक हमारे नेता है वो बहुत बोलते हैं इसको, खत्म। पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, युवा नेता है, कहने को अधेड़ उम्र बहुत पहले पार कर चुके हैं, ठीक है। तो वो खत्म होने की कगार पे पहुंच गया और स्थिति इतनी बुरी हुई, हर कंट्री जितना अपना नोट छापती है उतना गोल्ड रिजर्व रखती है, क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट है। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस वैल्यू की मैं भरपाई करूँगा, ऐसा प्रॉमिसरी नोट होता है। अमेरिकन सिस्टम में वहाँ पे डिवेंचर वाला है, वो ऐसा नहीं करता, वो कोई वादा नहीं करते कि पैसा आपका इतना है। लेकिन हमें तो इंडिया को अपना सोना जो था गोल्ड रिजर्व वो लंदन में गिरवी रखना पड़ा, तब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया। जो आजकल हम पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात करते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, फॉरेन रिजर्व नहीं है। आज हम सरप्लस हैं, हमारे पास अगले कई सालों के लिए सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज है। और 1990 में हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी बदली, ओपन हुई, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़े, और तब हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो पाए हैं। गोइंग बैक, आपको ये कहानी मालूम होनी चाहिए कि हम कहाँ से निकल के कहाँ आज पहुँचे। आज जो हम कह रहे हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओके। तो जब हम फार्मा के फील्ड में ही केवल अगर आप देखेंगे, आप ये डेटा देखिए, केवल you are not from the pharmacy field but you can see and understand this data, okay. 2.7% ग्रोथ है हमारी, ओके, 2014 से 2024-25 के बीच में।
हमारी, जब भी आप डेटा देख रहे थे उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हर फील्ड में लागू होता है, ये केवल हमारे उसमें नहीं है, फार्मा में, एवरीवेयर। ओके, वी आर नाउ बिकमिंग दिस थिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री। पहले हमें हर टेक्नोलॉजी के लिए बाहर से का मुंह देखना पड़ता था। आज स्पेस में इसरो का बड़ा नाम है, वो रॉकेट यूएस तक लॉन्च करने के लिए हमसे कहता है कि रॉकेट, क्योंकि that technology we earn foreign exchange for that. Okay, इसको मैक्सिमाइज कर लें। पिछली स्लाइड ले। सो देयर इज अ लिटिल डेटा जिस पे आप ध्यान देंगे। हमारे जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं जो फार्मा से नहीं है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री दो हिस्सों में बटी हुई है, फॉर्मुलेशन एंड बल्क ड्रग्स। फॉर्मुलेशन हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमने अभी कहा कि यूरोप को और अमेरिका को, और बल्क ड्रग 77% तक आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो चाइना से। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है, चाइना बना नहीं सकता लेकिन बल्क ड्रग बेच सकता है वो हमें। वो टायर हमें दे देगा, वो वाइपर हमें देगा, लेकिन उसकी अगर उन्हीं सामान से जब वो गाड़ी बनाने चलेगा तो उनकी कार, उनकी मोटर कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो असेंबल करके उसको इतना अच्छा बनाने में निपुण नहीं है। तो ये बड़ा जो ये विज़न हमारा है, मैं इसको थोड़ा सा आगे की स्लाइड्स को भी इसी में ले रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आई एम ऑलमोस्ट नियरिंग माई टाइम ऑफ 25 मिनट्स दैट वाज गिवन टू मी। ओके, तो वैक्सीन में आपने देखा ना, हमने पूरी दुनिया को, आपको अगर ध्यान हो अर्जेंटीना के में जब हमने वो भेजी थी वैक्सीन, उनके प्रेसिडेंट ने हनुमान जी की मूर्ति लगाई थी कि संजीवनी बूटी जैसे आई थी वैसे हमारे वहाँ ये वैक्सीन आई है। आप देखिए, आपकी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है जब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज़ द थिंग जो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, प्लीज़ नेक्स्ट। इस चीज़ को देखते हुए इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स शुरू की, और ये हर सेक्टर में है, लगभग फार्मा में तो है ही है, हर सेक्टर में है। इस गवर्नमेंट ने कोई भी फील्ड अछूता छोड़ा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये डेटा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारे फार्मेसी वालों के लिए, वो पढ़ के देख लेंगे जिसको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मैंने अभी बात की थी, इसको लेकर के जो हमारी पॉलिसी, आप नीचे वाला पोर्शन देखेंगे, बाकी फिर अगेन इट्स अ डेटा, वो आप देख सकते हैं। नीचे वाला वो बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने कहा ना 77% बल्क ड्रग हम खरीद रहे हैं, तो क्या है, हमारे मार्जिन श्रिंक हो जाते हैं। एक जमाना था इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ड्रग थी जिंटेक, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के नाम से जो फर्म आप जानते हो, ग्लैक्सो शायद उसका प्रोड्यूसर था, उनका पेटेंटेड ड्रग था वो, पेटेंट उन्होंने किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज लैब थी इंडिया में, वो उसको बल्क ड्रग में लीडर थी प्रोड्यूस करने में, वो हमसे खरीद के, जो अभी मैं चाइना और इंडिया की बात कर रहा हूँ फॉर्मुलेशन और बल्क ड्रग की, वो स्थिति उसकी थी, शायद फाइजर का था, ग्लैक्सो मोस्ट प्रॉब्ली। अ फार्मासिटी स्पेशली फॉर बल्क ड्रग्स, ये 3 इन्होंने बल्क ड्रग पार्क बनाए हैं, एक हिमाचल में है, एक गुजरात में और एक आंध्र प्रदेश में। तो ये फ्यूचर में के बारे में आप कब प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, ये उसका एक उदाहरण मात्र है। जैसे ही पता लगा कि हाँ सरकार को कि भाई हम तो ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी। प्लीज़ नेक्स्ट।
अगेन दिस इज टोटली रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री, लेकिन एक चीज इसमें यह है कि अब भविष्य में जो होगा, मशीन और इंसान वो एआई के बिना सरवाइव नहीं करेंगे. Okay, so the government knows about it, our policy makers they know about it, and that's why I said AI summit. एक क्लास में 100 के 100 ईमानदार बच्चे नहीं हो सकते. आगे के ज़माने में इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी. जो फार्मा में है वो है रेगुलेशन चेंज होंगे और ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए हो सकता है कि हमारे पास ओवरऑल 13,000 प्लस यूनिट्स हैं स्मॉल. देर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, दैट्स व्हाई हम जो बात करते हैं, और उसमें से 670 यूएस एफडीए अप्रूव्ड हैं. फॉर्मुलेशन का मतलब जो शायद ना समझ पा रहे हो, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, दे आर दी फॉर्मुलेशंस. आपको इंजेक्शन लग रहा है, वो एक फॉर्मुलेशन है, उसका एक तरीका है आपके शरीर में पहुंच करके काम करने का, इसलिए उसको फॉर्मुलेशन कहा जाता है. और जो सिंगल, जैसे आप सिंगल कोई जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को आपके शरीर में पहुंचाया जाए, वो आपके शरीर में पहुंचे, एब्जॉर्ब हो, अपनी एक्टिविटी दिखाए, उसके लिए फॉर्मुलेशन डेवलप करना पड़ता है. ओके, तो जो मैं आपको बता रहा था 670 यूएस एफडीए, इट्स अ ह्यूज नंबर. यूएस के बाहर कोई नहीं है जो इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को पूरा कर सके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, नाउ दिस इज अ कॉमन दिस थिंग जिस पे हम बात कर सकते हैं. यू हैव अर्लियर इट वाज रिएक्टिव, आपके सर में दर्द हुआ और आपने टैबलेट ढूंढी और खा ली. क्यों भाई, टीचर्स बैठे हैं ना, मैं उस पर आता हूँ कि क्या मतलब है इसका. प्रेडिक्टिव, आपके सिर में दर्द होगा, आप ऐसा ना कर रहे हैं, ये शैतान बच्चा है, इसको क्लास से निकाल दो भाई, ये सिर में दर्द करेगा टीचर के. ठीक है, तो रिएक्टिव हो गए. अब आप प्रेडिक्टिव हो गए रिएक्टिव होने से. जब उसने शैतानी की तब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. पहले से फीडबैक है, जो मैं कह रहा हूँ ना डेटा, उसकी खबर पहले से है. आपने एडमिशन लिया और इंस्टीट्यूट को मालूम पड़ गया कि आपकी 10 साल की हिस्ट्री क्या है, आप स्कूल में कैसा बिहेव करते थे, और अकॉर्डिंगली आपके लिए प्लान बन गया. जो एआई, आप समझिए अब एआई क्या कर रहा है. एआई प्रिंसिपल के पास सारा डेटा होगा, वो बता देगा कि तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे हैं टीचर्स को, और ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, ये अच्छे हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ये थोड़ा सा वीक स्टूडेंट्स हैं, इनको इस तरीके से हैंडल करना है. एआई का मतलब समझो, अब वो प्रेडिक्टिव हो गया. अब हमको 1 साल बाद पढ़ाने के बाद पता लगता है कि ये बैच कैसा है, इसमें स्टूडेंट कैसा है. लेकिन जब एआई फुल उसमें आएगा फॉर्म में, तो हमको पहले दिन से मालूम होगा कि ये स्टूडेंट जो है इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ये मैथ्स में वीक है, इसके बायो में कम नंबर थे. एवरी डेटा विल बी देयर. आप समझ रहे हो ना, एआई इस तरीके से समझो एआई को, और वो इंडस्ट्री में होगा. एक छोटे फार्मा वालों को मैं बताता हूँ, 5 मिनट और लेता हूँ, मेरे ख्याल से टाइम तो ओवर हो गया होगा. She knows, when I am in the class, मैं घड़ी नहीं देख पाता हूँ आमतौर पे, लेकिन जब मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हो और इतनी शांति से सुन रहे हो और सोए भी ना हो,
ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है बोलते हुए, ठीक। और मुझे लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग ज़रूर अपने मोबाइल में लगे हैं, और वो जैसा मैंने कहा कि वो नॉर्मल सी बात है, ओके। वी डोंट एक्सपेक्ट 100%। इंडस्ट्री में तो कहा ही जाता है कि 20% लोग 100% जो काम होता है वो 20% लोग ही करते हैं, ठीक है। जो बेस्ट होता है वो 20% होता है, ओके। तो लीनियर टू नेटवर्क ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर मैं वहीं पे आ रहा हूँ डेटा के ऊपर। अभी आपको कोई भी काम हो, आप अपनी क्लास टीचर से कहेंगे, क्लास टीचर प्रिंसिपल से कहेंगे, प्रिंसिपल साहब चेयरमैन से कहेंगे, और तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ऐसा नहीं होगा। तो चेयरमैन नोज, सबकी व्यू उनको मालूम है, वो डेटा अब सेंट्रलाइज्ड और सब में बटा हुआ है, तो वो चेन की जरूरत जरूरी नहीं है, ठीक है। एक जमाना था जब लोग लाइन में लगते थे, टिकट विंडो में जा करके टिकट खरीदते थे, ट्रेन में जाना है, रिजर्वेशन करना। आज आपके मोबाइल पे नहीं है वो चीज़। वो ये है, लीनियर का मतलब ये है कि वो चेन ब्रेक हो गई। आप एक ऑटो करेंगे, ऑटो में बैठेंगे, स्टेशन जाएंगे, स्टेशन जाके लाइन में लगेंगे, फिर उस आदमी को पैसा देंगे, वो पैसा गिनेगा, चेंज नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा, टिकट दे रहे हो फिर वो चेंज नहीं हो रही है, मगर आप चेंज लेके आइए, टिकट बाद में मिलेगा। तो ये सब खत्म हो गया। आप वहाँ पे जाते हैं, वो आपको वो कोड देता है, स्कैन करते हैं और पैसा तुरंत पेमेंट हो गया। ना उसको पैसा गिनना है, ना आपको पैसा गिनना है। तो वो लीनियर चेन ब्रेक हो गई। ABCD 4 यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं, सबके पास सबका डेटा है, ओके। तो हो सकता है C वाला A को पहले ही बता दे कि तुम इस प्रोसेस का ध्यान रखना, वो ABCD से नहीं जाएगा, B वाला C को बताएगा, C वाला फिर वापस D को बताए और B को बताए, इस तरह से पीछे नहीं चलेगा। 100 बच्चे होते हैं क्लास में, कैसे याद? वो मैं अपने उसमें स्क्रीन पे देख लूँगा, नाम टैप किया और पता लग गया कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ओके। एंड दैट वे इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। आपके पास डेटा आता रहेगा। जो आजकल बात तो यही होती है ना कि आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर किसी के दिमाग में बात हो कि मैं मेल फ्री में कर रहा हूँ या मैं AI को फ्री, दे आर कलेक्टिंग द डेटा, और वो डेटा बिक रहा है, ओके। तो ये मालूम होता आप रह रहे हो यहाँ हॉस्टल में, AI डेटा भेज देगा। मालूम होता आप रह रहे हो यहाँ हॉस्टल में, AI डेटा भेज देगा। आपका फ़ोन है, वो तो ट्रैक कर रहा है सारे लोकेशन आपकी। और कोई ऐसा नहीं है जो दिन में हर 1 मिनट में या 2 मिनट में भी, डॉक्टर साहब ने बताया था मोबाइल का जो फोबिया था, ठीक है, आई थिंक नोमोफोबिया कहा था या कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया था। तो आप जब नेट ऑन करेंगे तो डेटा तो उसको मिल ही जाना है, ठीक है कि नहीं? तो वो धमकाएगा भी आपको। आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत केवल इतनी है कि आप गलत करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे, वहीं तक डरने की ज़रूरत है। आप सही हो तो फिर क्यों डरोगे? सही आदमी किसी डरता है क्या? ठीक है, प्लीज़ नेक्स्ट। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ये उसी का है जो सॉइल टू इंटीग्रेटेड था, कि पुराने ज़माने का जो सिस्टम था एक से A से B, B से C, वो नहीं होगा, इंटीग्रेटेड होगा। प्लीज़ नेक्स्ट। दिस इज अभी जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा था, मैं फिर से उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। साइकोलॉजी में बोल रहे थे ना स्टूडेंट्स की मेंटल प्रॉब्लम क्या है आज हमारे पास। तो रूरल फार्मर, उन्होंने कहा था रूरल में नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो एज अ फार्मासिस्ट हमारे पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल में काम करने की। ये सच बात है, बहुत सी चीज़ें रूरल में नहीं होती हैं, ओके। अब तो आपके पास, अगर जो लोग नहीं जानते हों, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आपको 1/4 कॉस्ट पे वो मेडिसिन मिल जाती है। और एक
अगर कुछ लोग अवेयर हों तो दवा इंडिया के नाम से एक जेनरिक, इस गवर्नमेंट का जेनरिक पे बहुत जोर है। आगे आप देखेंगे जेनरिक बढ़ेगा, तो कम से कम 2-3 प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। एक एक शहर में 3-3 4-4 जो दवा दुनिया के शॉप्स हैं, और वो 1/4 पे मेडिसिन आपको दे देते हैं। क्वालिटी विल बी द सेम। आई एम यूजिंग इट फॉर माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट प्लीज। So we have talked about rural pharma, rural healthcare. ये जो है डिजिटल इंटीग्रेशन, आयुष्मान भारत, देखो डिजिटल दिस थिंग मिशन, डिजिटल मिशन है, डिजिट डेटा डिजिट में आएगा, तो डिजिटल मिनट भी है आपके पास। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना, जब आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है ऐसा कहा जाता है, तो उसके लिए हमारे पास जो Tier 3 सिटीज़ हैं और विलेज हैं, सिटीज़ को भी आपने कैटेगराइज किया है ना। बड़ी शहर में तो ब्लिंकिट है, 2 मिनट में जो चीज़ चाहिए वो ला के, 10 मिनट तो लेता है वो, लेकिन Tier 3 में वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाती है जो वो आपको सप्लाई कर सके। ठीक है, और विलेजेस में जाके वहाँ पे डिमांड कम है, एक ये भी फैक्टर होता है, इसलिए सप्लाई भी कम हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, विल डिस्कस इट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात हुई थी। नेक्स्ट, इसी में हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ये लगभग कुछ समय में पूरी हो जाएगी। आपको नेट पे मालूम रहेगा कि आपके सबसे नज़दीक कौन सी वो है हेल्थ केयर फैसिलिटी है, डायग्नोस्टिक्स है, मेडिसिन है, हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, सबसे नज़दीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ पे है, सबसे नज़दीक कौन सा, वो भी डेटा होगा। और जो अभी मैंने आपसे बात की थी, वो इस परिप्रेक्ष्य में लोगों को अपनी फैसिलिटीज़ सुधारनी पड़ेंगी। आप आज प्ले स्टोर से भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो रेटिंग देखते हो ना, इज इट और नॉट? हम तो रेटिंग देख के ही करते हैं, वो रेटिंग मिलने लगेगी इनको। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम जिस पे आज इतना ज़्यादा हल्ला है कि ये चीट कोड बहुत से हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, वो ख़त्म होने की संभावना है। फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, बट फॉर दोज हु विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि एआई आपको बहुत बेईमानी करने नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। एंड देन यू हैव आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी मैं क्लास टीचर के बारे में कह रहा था। आपका सारा डेटा इस पे है। आप आजकल मार्कशीट ऑनलाइन है ना आपकी, डिजी लॉकर था, अब तो शायद चेंज भी हो गया है वो। आप अपनी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी अपनी मार्कशीट कैरी कर सकते हैं। एक ज़माने में हम पेन ड्राइव में डेटा रखते थे, अगर कहीं कुछ जाना हो कि वहाँ प्रिंट आउट ले लेंगे, अब वो स्थिति नहीं है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आपका होगा, डॉक्टर आपका नाम डालेगा सिस्टम में, आपकी केस हिस्ट्री, आप पुराने पर्चे ले जाते हो ना, कई बार डॉक्टर पूछता है कि क्या इलाज हुआ है, कई बार आप किसी मेडिसिन से सेंसिटिव होते हो, वो सारा आभा में होगा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। भाई जो सो रहे थे वो अब उठ सकते हैं। बट इट इज रियली टाइम टू वेक अप। जो पहले हम लोग, हमारे समय में बात होती थी कंप्यूटर लिटरेट होने की, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, पुराने लोग आज भी बहुत से ऐसे हैं जो नहीं यूज़ कर पाते हैं। एआई लिटरेट आप नहीं हैं तो वेकअप। प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कैसे आपको इंस्ट्रक्शन देना है। आप फोटो एडिट करते हो चेहरा बदल देता है क्योंकि आपने सही प्रॉम्प्ट नहीं लिखा है। सो वेकअप एंड बी एआई aware, AI literate. Okay, so with that I will thank the people who invited me, especially the faculty and management of Six Sigma. I was not sure कि किस तरह का आयोजन होगा यहाँ पे, लेकिन देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। And to students I can say you are blessed कि आपको इतने अच्छे अवसर मिल रहे हैं, इतने लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। Okay, so with that, thanks a lot. Let us extend a warm and heartfelt round of applause for our speaker, Professor Dr.
Kumud Upadhyay. Thank you, sir, for your thought-provoking and inspiring session by discussing what privilege, opportunity, and potential a youth is having today. Thank you so much, sir. Now, I hand over the stage to Mr. Rajat Dhawan for the felicitation ceremony. Thank you, ma'am. Very good afternoon, each and everyone. Dignitaries presented over here on the days, all the distinguished guests and young aspirants, scholars. Good afternoon again, and Impact at the rate 2047. We are proceeding for the felicitation process of our featured speakers. As diversified speakers, they have reached again for this session. So may I request towards our Honorable Director, Dr. Seema Arora ma'am, Executive Director, Mr. Vansh Tabarji, please come nearby stage to felicitate our distinguished speaker, Dr. Pawan Preetman, MBBS, MS, ONG, Amrit Hospital, Katyayani Medical Center, Rudrapur, and Mr. Jaswinder Gilji. Dr. Pawan Preetman, MBBS, MS, ONG, and Jaswinder Gilji. Here, our Honorable Director ma'am and Executive Director, they are representing token of affection with cap of pride and scarf of honor. Have a big round of applause, everyone. Yeah. We are very blessed today. I'm extending the sentences of Dr. Kumudji that we are witnessing and observing and absorbing each and everything related to our speakers. Thank you all. And again, we are inviting our distinguished speaker, Dr. Mandeep Singh ji, Managing Director, Apex Group of Institution, Bilaspur, UP. So have a big round of applause for Dr. Mandeep Singh ji, Managing Director, Apex Group of Institution, Bilaspur, Uttar Pradesh. Have a big round of applause once again, everyone, please. We all had taken lunch, so I'm expecting more applause from your side. Once again, I'm requesting each and everyone. Thank you. Thank you. Now, let us immerse ourselves in the vibrant color and rich tradition of Rajasthan, a mesmerizing blend of grace, rhythm, and celebration that reflects the glorious heritage of our country. राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और लोक कला के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन शैली और विरासत का हिस्सा हैं। कालबेलिया अपनी लचक और भाव भंगिमा से मरुधरा की पहचान प्रस्तुत करता है, और रामती आवे लोक उत्सव और सामूहिक आनंद का प्रतीक है। प्रस्तुत है राजस्थान की सांस्कृतिक झलक।
Let us extend a warm and heartfelt round of applause for the talented performer. As we witness this performance, we can truly feel the energy, elegance, and cultural pride flowing through each movement. What a lovely and captivating performance. Now, I'll hand over the stage to Mr. Rajat Dhawan. Please, sir. Thank you, ma'am. Mrs. Deepika Deopa, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Sciences, Six Sigma Institute of Technology and Science, Rudrapur. Impact at the rate 2047 National Conference. Now we are again extending the program by felicitating our distinguished associate partner for this event. So may I request our Honorable Executive Director, Mr. Vansh Tabar, please come forward. And I request guest and management team, Mrs. Sonia Davar ma'am, kindly accommodate the process. And in this sequence, I request Mr. Hariom Agrawal ji, Managing Director, Sushima Laboratories, Rudrapur, please come forward. Have a big round of applause for Hariom Agrawal ji. Sushima Laboratories from the Pantnagar, Uttarakhand, as Sushima Laboratories also secured the first position in the veterinary domain in our North India region. So have a big round of applause once again for the Sushima Laboratories. They had contributed for their time, and sir had spared the time from their tight schedule from the Sushima Laboratories. Mr. Hariom Agrawalji, thank you. And in this sequence, I request our Honorable Convener for this event, Dr. Lalit Singh Bishji, kindly come nearby stage to felicitate the Director, Pharmaceutical Science from Apex Group of Institution, Dr. Manoj Bhardwaj. Please come nearby stage. Have a big round of applause for Dr. Manoj Bhardwaj. And here our convener, Dr. Lalit Singh Bishji, is presenting cap of pride and scarf of honor towards Dr. Manoj Bhardwaj. Have a big round of applause once again. Young scholars. Yeah, thank you. I request Mr. Abhishek ji from IT department to mind the laptop on the desk. So we are moving further in this event. Respected chairpersons, esteemed speakers, distinguished delegates, faculty members, and dear aspirants, it's my privilege to welcome you all at Session 7, Impact at the Rate 2047 of our prestigious national conference dedicated to the visionary theme, Building Viksit Bharat through Advancement in Multidisciplinary Domain. As we move toward a century of independence in 2047, guided by the vision of Government of India, the dream of Viksit Bharat cannot be realized without strengthening one of its most vital pillar, women's health, right? A nation progresses when its women are healthy, empowered and supported through every stage of life. From adolescence to motherhood and beyond, achieving the sustainable development, the vision of Niti Aayog for 2047 requires focus, attention on maternal health, reproductive rights, nutrition, mental well-being, preventive health care, and access to quality medicines for women health care. So Viksit Bharat 2047 Goals in Women's Health title had been taken by our speaker, featured speaker for nursing and allied health care, Dr. Pawan Preet ma'am, MBBS, MS ONG, Amrit Hospital, Katyayani Medical Center, Rudrapur. Dr. Maan is a distinguished expert in the field of women's health and has consistently contributed to advancing clinical excellence, research, and community awareness. With rich experience and deep commitment toward maternal and reproductive health,
Dr. Man's insights today will certainly guide us towards the building a healthier and stronger India. Ma'am, we are truly honored to have you among here today. So on the behalf of Organizing Committee of Impact at the rate 2047, I respectfully invite our featured speaker, Dr. Pawan Preet Man, ma'am, to address the gathering and share the valuable perspectives on achieving the goals of women's health in the journey of toward Viksit Bharat 2047. May I request a warm round of applause as we welcome our esteemed speaker to the podium. Again, may I request for a warm round of applause to everyone. Please stand up and have a warm round of applause. Stand up, everyone. Yeah. Thank you. Thank you, young aspirants. Thank you all. Thank you so much, everyone, for the really warm applause and my heartfelt gratitude to the organizing committee of Impact at 2047, especially Seema ma'am, Mr. Dower, and the entire organizing committee and management of the institution, and my best wishes for a very successful program. So my topic today, being a gynecologist, women's health is very close to my heart, so I have chosen this topic. What goals do we wish to achieve in women's health as a part of Viksit Bharat 2047? So what is Viksit Bharat 2047? I'm sure everybody has talked about this till now. So I'll just impress upon the fact that here we are talking about inclusion of the youth, of women, and our focus is on the poor and the farmers. That is how we are going to achieve a Viksit Bharat by the year 2047. So women's health perspective, Viksit Bharat 2047 will aim to prioritize women's health as a cornerstone of national development, focusing on preventive care, digital health integration, and by tackling the non-communicable diseases. We want to see India as a developed nation by 2047. And for that, women's health is a core development pillar, and it is very, very important to have inclusive, equitable, and sustainable growth. And whether we accept it or not, but we have to believe that when we have healthy women, are we going to have a developed nation? Without that, it is simply not possible. So why does women's health matter? By numbers, we are 50% of India's population, and we really need that focus on our health. More important than that is because caring for women, especially in the reproductive age group, is going to give us intergenerational impact on nutrition and child survival. A pregnant woman who is suffering from A, B, C, D things is also passing those to the child in her womb. So if you have a healthy young female child, then you have a healthy female adolescent. She is more probable to carry a pregnancy and give birth to a healthy child who is going to be your youth tomorrow. And slowly and slowly, your entire population is going to have that health benefit, which you have invested today in your young girls. So we need to understand that. We are not talking about 50% alone. What you are spending on 50% is going to affect your entire 100% tomorrow, right? This is where an unhealthy father is not going to so much impact the health of the child as much as an unhealthy mother is going to do. She is carrying that child inside herself for those 9 months, and it's going a little away from the topic, but I would like to touch upon it. There are two things. There is genetics and there is epigenetics, right? Genetics we cannot change, but epigenetics also plays a very, 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 very big role in your health, in the diseases that you take on during your lifespan. And this epigenetics begins at the time of conception.
and it carries on during the 9 months of pregnancy. So to have this intergenerational impact, you have to focus on women's health, right? And we have the workforce productivity and economic growth will obviously come along, and we have to reduce the poverty and the inequality. So we'll talk about a few current health challenges, the bigger ones, right? Talking about the key data. Maternal mortality ratio. What is maternal mortality? The number of deaths of women related to childbirth, during childbirth or soon after childbirth or before childbirth, that is purely related to the pregnancy and the childbirth. That is maternal mortality. So at present actually it's 88, but this is the latest official data we have. It is 97 deaths per 1 lakh live births. We have come a long, long way. You know, at the time of independence, it was around 2,000. If there were 1 lakh deliveries, 2,000 women were meant to die. But with increasing antenatal care, increasing hospital deliveries, we have reduced this to a great, great extent. Even around the years late 90s and 2000s, it was around 500. From there also, we have come a long, long way. But we need to reduce this even further. Next big challenge is anemia. Around 57% of women in the age group 15 to 49 years are anemic. That is a big number. Most of us sitting in this room, if we check our hemoglobins, I'm sure this number will be even more than 57%. HB less than 12 is considered anemia, and it is a big number in Indian females. Now the NCDs, matlab non-communicable diseases and cancer. This burden is also on the rise among the women also, because largely because of our changing lifestyles and our eating habits and lifestyle in every sense. And urban and rural health inequities. These 4 main areas have to be looked upon and worked upon. So taking these 4 things only, these are our health goals by 2047. We need to have universal health coverage. Wherever you are, you should be equally covered. We want near zero preventable maternal deaths. See, maternal deaths can never be zero. There are certain very serious complications of pregnancy itself, which will keep taking the toll. We have reduced mortality for them also by a great number, but what we can do is near zero preventable deaths. Some things are out of our control. You know, they are not preventable, but whatever can be prevented should be prevented. And 2047 to dur ki baat hai. For 2030, the vision is to reduce it to less than 70. जो आज की डेट में 93 है, उसको हमें 70 से नीचे लेके आना है. Then we talked about non-communicable diseases and cancer. Out of those, cervical cancer, cancer of the cervix. Cervix मतलब गर्भाशय का मुंह, cervix, right? Uterus के जो opening है उसको cervix कहते हैं. उसका cancer totally eliminate हो सकता है हमारी country में से, and that is our focus for 2047. How we will do it, we'll talk about it later. And then everybody's talking about this digital and AI-driven healthcare expansion, which will help us reach these goals with ease. So, one aspect is the preventive care. एक तो हो गया ना, बीमार हो गए उसका treatment कर रहे हैं. Here we are talking about preventive care. वो कैसे होएगी? By mass community-based screening. Screening is when a person does not consider himself ill, but you are screening the general population, and out of those you are picking up early cases. That is screening, right? तो कौन सी चीज़ों की screening होएगी? Hypertension can be screened very easily. Diabetes can be screened very easily. Obesity, तो obviously it can be screened. Out of the cancers, the breast cancer, the cervical cancer, and the oral cancer, cancers of the mouth, the oral cavity, they can be very easily picked up in very early stages by screening methods. And if you pick them really early, you give almost 100% cure to the patient.
So it is so very important to have screening camps and pick the cases up early. And also we'll talk about the prevention. And then when you pick it up, you need to refer them early and link them to the treatment so that you have better prognosis. Now talking about maternal and child health, we have to focus on increasing the number of institutional deliveries. We have to provide quality antenatal and postnatal services. We have to focus on growth monitoring and infant and young child feeding counseling. This is very important, teaching the mother the importance of early initiation of breastfeeding and the continuation of the breastfeeding to as much longer time as she can. Then immunization and vaccinations are an important part in pregnancy. Now these health initiatives will be taken care of by two ministries, the Ministry of Health and Family Welfare and the Women and Child Development Ministry. So they have different roles assigned to them. I will not go into the details of that. These are the major government schemes that are looking for maternal health. Prime Minister Matru Vandana Yojana, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, Janani Shishu Suraksha Karyakram, Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan, and Poshan 2.0 and anemia control. Now this Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan was, it aims to advance PM Modi's vision of health, Poshan, that is nutrition, fitness and a Viksit Bharat by 2047. So this, campaign seeks to provide women-centric, preventive, promotive and curative health services at the community level. You cannot expect a lady from the interiors, the rural interiors, to go to your district hospital to get herself screened. She will certainly not come. You have to strengthen the screening, early detection and treatment linkages at the remotest areas. You have to spread the health workers who will do it in their villages, and then the things will come out. So the provision of medical checkups and health services for women are there. Mainly, I've talked about all these, and one important part of all this is the Poshan 2.0 scheme. Here we are maintaining that we are trying to educate the women to maintain healthy lifestyles and wellness components. And if you educate a woman about nutrition, it is not going to benefit one person. It is going to benefit the entire family. She is the one who is going to cook for the entire family. So if you teach her the dynamics of carbohydrates and protein, and if you tell them that you have to cut down by 10% on sugar and oil, it is not working on one person, it is working on the entire family. And also the word spreads faster. So the focus is very right. You have to focus the women to bring on changes, health and lifestyle changes in the community. There's no other way to do it. And it also encourages the active participation of citizens also. So basically they are concentrating on health camps across the country to screen for BP, diabetes, cancers, anemia and tuberculosis, which is a big killer in our country even today. Regular checkups for pregnant women and immunization services for the children. Now, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, it is a very, very popular thing today, and it has helped many families in getting the health services that they could not have otherwise afforded. So as we all know, there's 5 lakh health insurance per family, and they receive cashless secondary and tertiary care. Like you purchase health insurances. This health insurance is being gifted by the government to the poor families, and though in Uttarakhand it is being gifted to everyone, but I feel it will be more useful if they restrict it to the poor families, who are the real beneficiaries, who really need it. So Ayushman Arogya Mandirs, they are also a point of this thing. So here what they are ensuring is
that primary health care is accessible to people near their homes or even through a phone call, right? Easily accessible health care. Now, ABDM, the previous speaker has talked about it. They're trying to digitally link all health facilities. The village clinics are being connected to the local bigger hospitals. They are being connected to the tertiary centers. A hint of telemedicine, you can say. And another thing is PM Ayushman Bharat infrastructure mission, where they are trying to build more robust healthcare centers starting from the village up to the district hospitals. Everything is being upgraded, and which is really, really the need of the hour. And also screening for men. Screening is also a part of this thing, and ensuring mental health services. So this is what Ayushman Bharat does. I don't think I need to talk more about it. We've covered enough. National Girl Child Day is being celebrated every year on January 24. It highlights the importance of shaping girls through the mentioned initiatives like addressing gender inequality, education gaps, and health challenges. These are the different girl-child oriented schemes that we have. Sukanya Samriddhi scheme, scheme for adolescent girls, Poshan Abhiyan, and similarly Udan is there, Beti Bachao, Beti Padhao, Mission Vatsalya scheme, and the scheme for promotion of menstrual hygiene, which is also very, very important to talk about it. So Navya is nurturing aspirations through vocational training for young adolescent girls. This is very important. A woman who is economically independent can obviously, find out ways to look after her health and everything. So for non-NCD control, there are special, this national program, we've talked about it, for screening for cancer, diabetes, and hypertension. And it also includes lifestyle modification counseling, which is a part of Poshan 2.0. And obesity, we all know, is the new epidemic. And it actually is the basic flaw which is leading to increased number of diabetes, increased hypertension, increased cardiac cases, increased cancer, and there is research showing even increased chances of Alzheimer's. So everything starts from your fitness, your, managing your ideal weight, managing time for your physical fitness, for your exercise, everything is important. And the government is trying to incorporate everything into their national programs. We've talked about these cancers also. Sickle cell is another thing. Sickle cell is not very common in our area, but anybody who has been to the tribal areas of maybe Gujarat or lower down, sickle cell is a very, very bad thing. So, and this can also be reduced by screening. In our belt, we have thalassemia. We have beta thalassemia, a lot of cases. But sickle cell is even a worse thing, and the government is focusing on controlling that. It can actually be eliminated if we screen properly and we manage things accordingly. We can achieve the elimination of sickle cell, as also the cervical cancer. So tuberculosis, sickle cell disease, and then anemia, I talked about it. First and foremost is knowing, accepting that you are anemic. How is that going to happen? By simple hemoglobin screening. Then iron and folic acid supplementation should be accepted far and wide so that we can achieve Anemia Mukt Bharat. Poshan 2.0, and there is a Poshan tracker, that is an app that those Anganwadi workers and other healthcare workers can use, So we were talking about this. So how do you eliminate cervical cancer? उसके दो parts हैं. एक screening and early detection, और फिर उसका treatment. And second part is vaccination, right? दो चीज़ें हैं. एक तो आप prevent करेंगे कि और new cases ना आए, और जो ladies already उस age group से आगे उनको आप screen करेंगे and early cases catch करेंगे और उनको treat करेंगे. So they are trying to have VIA screening. VIA is visual inspection and acetic acid. इसके लिए एक simple सा एक
chemical होता है acetic acid, वो चाहिए, and anybody can be trained to do this. So they are trying to do it at Ayushman Arogya Mandirs. I don't know how far and how long it will take to train so many people and do it across the country. But if we are able to achieve it, it will be a great task, you know, and I'm sure we can eliminate cervical cancer if we are able to achieve this. We as private practitioners have a very limited access to the patient. हमारे पास कितना पेशेंट आता है ना, बात तब बनेगी जब घर घर की लेडीज़ को पकड़ के उनकी स्क्रीनिंग होगी, बिकॉज अर्ली स्टेजेस में तो कोई सिम्टम ही नहीं है. पेशेंट को जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक डिजीज़ एडवांस हो जाती है. And talking about the burden of cervical cancer, this was the next slide. Annually, 1.23 lakh cases are detected in our country, and out of which, and also we have 77,000 deaths per year. ऐसा इसलिए है because हमारा diagnosis ही बहुत late stage में होता है. Early cases are not being picked up. And this is the second most common cancer in India, and it is a preventable cancer. दुख की बात ये है, ये prevent भी हो सकता है, ये screen भी हो सकता है, ये treat भी हो सकता है. But for that, the government has now woken up and taken it into their programs. So this is the cervical cancer elimination strategy. The WHO has given this 90-70-90 framework. 90% HPV vaccination coverage. I hope everybody is aware that young girls age, this is the HPV vaccination program. The target group is girls of 9 to 14 years of age. And now this is a part of the national vaccination program also. So all girls are to be vaccinated during this age group. So this is a long-term prevention strategy. ये एक ऐसा कैंसर है जो HPV वायरस से होता है. HPV is the virus, human papilloma virus. So जैसे आपके और बच्चों के बहुत सारे vaccinations होते हैं, BCG vaccination होता है, OPV होता है, DPT होता है, so many other vaccinations, ऐसे ही HPV vaccination है. ये एक बार लग गया, so throughout your lifetime, you have a very, very low chance of getting infected by the human papilloma virus. And that virus is the cause of cervical cancer. So when you don't get that infection, you don't get the cancer, right? So this is the long-term prevention strategy, right? So this is the public health investment in adolescents, and this will reduce our future cancer burden. So that's talking about the 90-70-90 framework. 90% girls need to be covered. 70% screening coverage out of all ladies of the age group 15 to 49 years. We need to screen 70% of them, and the treatment goal is 90% of the diagnosed cases. If we are able to achieve this, we can dream of eliminating cervical cancer in the near future. So moving on, mental health and holistic well-being is also a very important part of women's health as for anybody's health. So psychiatry services are also available at the camps. Menstrual hygiene needs to be promoted. Yoga and Ayush integration is also playing a big part. And all this leads to emotional safety and counseling. So digital health transformation, I think we've heard about this in the previous lecture. ABDM, ABHA accounts, life cycle digital records, e-Sanjeevani telemedicine services, all are going to, they are basically going to increase the healthcare delivery to the doorstep. That is the basic aim, right? And ABHA health account is a beautiful thing if we are able to achieve it. हमारे को रोज़ परेशानी होती है, आप एक पर्चा बना के देते हो, पेशेंट एक महीने बाद आता है, he doesn't have any records. So if we have, यहाँ कहीं और दिखाया था, अब वो नहीं है. So how do I know कि वहाँ क्या हुआ था, क्या दवाई दी थी, क्या, what were the tests that were done? So if we are able to achieve ABHA health accounts, which is a big ask, big ask for a country as big and wide as ours. But if we're able to achieve that, it is going to help everyone a lot. It is going to make my job easier, and it is going to benefit the patient a lot. जो उसने टेस्ट 10 दिन पहले कराए हैं और खो दिए हैं, doesn't need to spend again on those. Everything is on my screen, right? So AI,
and future healthcare, it has to be integrated. Without that, we cannot move forward. AI is the future. We have to accept it. Sarvajan Hitaya and Sarvajan Sukhaya. That is our logo. And democratization of technology, ensuring AI tools reach all segments of society, including rural and underserved populations, is important. Technology for humanity, and not merely for technical advancement, but to address critical societal challenges, improve quality of life, and advance the public good. That needs to be achieved. So workplace and social empowerment can come through mandatory health checkup vision by providing crash facilities and providing workplace safety. Health, education, and employment linkage is going to go a long way, and women empowerment and gender equality can be achieved by all these things. So community mobilization and Jan Bhagidari is also important. So these are the different schemes. I don't think we need to talk much about it. So this is the integrated model for 2047 Viksit Bharat. We started with Sabka Saath, Sabka Vikas, and then we also have Sabka Vishwas. And the most important is Sabka Prayas. Wo bhi chahiye. Only then we can achieve everything. Then we can call ourselves a developed India at 2047. So to conclude, to reach towards a Viksit Bharat, we need to have healthy women, which will translate to a strong India. For that, we have made up schemes, we have data, and we have to focus on prevention and to include technology to achieve all this. Empowered women will certainly lead to an empowered nation, and the vision should be dignity, equity, and health for all women. Thank you. May I request a warm round of applause for this wonderful session? Aspirants, a warm round of applause. Thank you all. And thank you, Dr. Pawan Preetman ma'am, for your enlightening and thought-provoking address. Your insights on strengthening women's healthcare system, policy integration, community empowerment, and have added immense value to this conference, Impact 2047. Your guidance truly inspires us to work collectively toward a healthier, inclusive, and empowered India by 2047. And excellence is not an act, but a habit that leads to victory. Excellence is not an act, but a habit that leads to victory. Have a big round of applause once again. Thank you. And information like fact, one of the largest healthcare system. India has one of the world's largest healthcare network comprising thousands of public and private hospitals, primary health center PHCs and community health centers CHC. Again, India has one of the world's largest healthcare networks comprising thousands of public, private PHCs and CHCs. Thank you. So, we have completed 23 chapters so far. Now we are coming towards the chapter 24 as related to oral presentation and poster presentation. And for this session, I humbly request towards our featured speaker, Dr. Mandeep Singh ji, Honorable Managing Director, Apex Institute, Group of Institution, Bilaspur, UP, to come on stage. Dr. Mandeep Arora ji, have a big round of applause. We are proceeding for the chapter 24 to announce the result. And for this session, again, I am inviting our distinguished featured speaker, Dr. Pawan Preetman. Please come on stage. Dr. Pawan Preetman. Have a big round of applause once again, everyone.
I request oral and poster presentation team just be prepared. So the evaluation was conducted by our respected panel of judges based on originality, relevance to the conference theme, clarity of presentation, research methodology and overall impact. Let us now move to the most awaited moment, the announcement of the awards. Best Oral Presentation Award, and may I respected all the dignitaries on the desk with your permission, and we are proceeding further. And with the quote, victory belongs to those who believe in it the most and work for it the hardest. Victory belongs to the who believe in the most and work for it the hardest. The best oral presentation award goes to anyone? Huh? Anyone? So the best oral presentation award goes to Garima M. from second year from Kumaon University. And have a big round of applause, Garima. And this was the online session, Garima, and she had secured the first position for the presentation titled AI in Clinical Trials. Congratulations on your exceptional contribution and confident delivery. Now we are coming to the second part, Best Poster Presentation Award. And now announcing the Best Poster Presentation Award. This award goes to Trishti Maurya, Sanjana B. Farm, third year. Have a big round of applause for Trishti Maurya and Sanjana. Very good. I request all the team members to accommodate Trishti Maurya and Sanjana. They both are from B Farm, third year, pre-final year, and the poster titled Cosmetics, the Hidden Danger Behind Beauty. Have a big round of applause as we are conducting and organizing the Impact 2047, and the aspirant from the Six Sigma itself, by chance, they had secured the position, the first position. Have a big round of applause once again. Your innovative work and impactful visual presentation have truly stood out. Thank you. So, thank you, sir. Thank you, ma'am. And again, we are coming to the next chapter, that is chapter 26, session 8. And we have completed 25 chapters so far, and now coming to the chapter 26, that is the session 8. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for your warm presence and time with us. And on the behalf of students and aspirants, we are also expressing delightful thanks, heartfelt thanks towards Dr. Pawanpreet Man, sir. Thank you. Session 8, Digital Convergence for Viksit Bharat @ 2047. So, session 8 is titled Digital Convergence for Viksit Bharat 2047. Digital convergence is not merely about technology, it is about integrating artificial intelligence and data analytics, digital infrastructure, smart governance, and inclusive digital access to empower every citizen. A digitally empowered society forms a backbone of the vision of a developed India as envisioned by Niti Aayog. To guide us through the crucial theme, we are privileged to have with us distinguished academician leader, visionary administrator, Dr. Mandeep Singh Ji, Managing Director, Apex Group of Institution, Bilaspur, Uttar Pradesh. So, Dr. Singh is known for his dynamic leadership, commitment to academic excellence, and promotion of technology-driven education. Under his guidance, Institute has fostered innovation, digital learning, ecosystem, skill-based education, etc. Sir, your experience in educational, leadership, and digital integration makes you perfect guide for the forward-looking session. So, on the behalf of organizing committee of Impact 2047, I respectfully invite Dr. Mandeep Singh Ji to address the gathering and share his invaluable insights on digital convergence
for Viksit Bharat at the rate 2047. Have a big round of applause once again, everyone. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. I request Mr. Abhishek from IT department to accommodate this session. Thank you. A very good afternoon, respected Director Ma'am, Executive Director Sir, conveners of this and co-conveners of this national conference. Thanks for giving me a chance to be here, and I'm very privileged to speak at such a nice stage, at such a nice event. So, not taking much of time, I would start my presentation on digital convergence for Viksit Bharat at 2047. So, the first question arises, what is digital? क्या है ये digital? हम सारा दिन यही देखते हैं कि वो digital, 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 this, digital, that. What exactly is digital? So, digital is something that is in zeros and ones. Everything is binary. ये फिलहाल आई थिंक इस माइक को छोड़ के एवरीथिंग इज इन जीरोज एंड वंस. आपकी जेब में मेरी जेब में मोबाइल फ़ोन्स हैं. दीज आर ऑल जीरोज एंड वंस. जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ ऑल इन जीरोज एंड वंस. सो everything, each and everything that is in zeros and ones is digital. So how these zeros and ones are helping us transform our economy to be one of the world's largest, to achieve our goals, as our Honorable Prime Minister said that we would be a developed nation in 2047. So it is all based upon innovation and technology growth in computer science. Being myself a researcher in computer science, and from last, say, 15 or 20 years. So the focus of my today's presentation will be on computer science and on the fancy terms that you are hearing, AI, crypto, blockchain, cloud computing, edge computing, fog computing. So these will all be my theme for today. So starting with the agenda, digital transformation and vision. After that, we'll be discussing about technology foundations and innovation in that. Then, yes, most important, security, inclusion, and ecosystem growth. And then is digital governance and economy. And lastly, diversity, global leadership, and future trends. So, going with digital transformation and vision. So, first of all, the embracing of digital convergence. We will be the only generation which has seen a diverse transformation from analog to digital. पहले क्या था? There were PNT phones, landlines, yes, analog थे. After that, वो इतने बड़े मोबाइल फोन्स आए. After that, छोटे वाले मोबाइल फ़ोन आए. And after that, internet आया. We were working on internet. And in today's era, we are on Wi-Fi, we are on 4G, we are on 5G, 6G पे रिसर्च चल रहा है, 7G पे कुछ कंट्रीज़ पे रिसर्च चल रहा है. So हम वो एक हम वो एक जनरेशन है जिसने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन एनालॉग से डिजिटल पे देखा है. एंड दिस इज, यस, इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर विकसित भारत. जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया में इन पास्ट ईयर्स में हुआ है, आर वर्क फोर्स, सम पीपल से कि येस इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड. नो, द वर्क फोर्स वी आर हैविंग इन इंडिया, दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. इसी से वी आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेकीज इन द वर्ल्ड. एंड लास्ट ऑफ ऑल, innovation. Abhi, I was going through some statistics. So in innovation, हमारे IITs, हमारे IISc
and the topmost engineering institutes of India. इनका काफ़ी the ratio of applying for patents and the ratio of getting patents, it is around 75%, which is the highest in the world. So this is the thing कि हम लोग इस चीज़ के बारे में we are working on it. Yes, China and US is leading India in the number of good research papers published, but yes, India is not far away. Now coming about, talking about these India's transformational journey. So first of all, जो चीज़ हमारे दिमाग में आती, that is digital India. So everything जो हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन कुछ सालों पे देखा है, वी आर कमिंग ऑन डिजिटल, कुछ भी है दिस इज कमिंग ऑन डिजिटल. हमने मोबाइल्स में कहाँ वी वर हैविंग दोस छोटे छोटे वाले मोबाइल फोन्स, नाउ एवरीथिंग वी कैन एक्सेस ऑन मोबाइल्स, एप्स आर देयर ऑन मोबाइल्स, हर एक चीज़ का आपका सॉल्यूशन इट इज़ ऑन मोबाइल, एंड दीज आर अफोर्डेबल ऑल्सो. Right from starting this project of Digital India, Aadhaar is one of the biggest achievements that can be done in, say, that is done in last 15 or 20 years. Aadhaar से बड़ा achievement नहीं हो सकता. Everything, your profile, your mark sheets, आपका वो डिजी लॉकर है, that is connected through Aadhaar. So जितना भी आपका प्रोफाइल है, जैसे मेरे से पहले भी जो स्पीकर्स थे उन्होंने बताया, so everything is connected with Aadhaar. It is one of the biggest thing that can be achieved in past few years. Then is BharatNet. BharatNet is basically, आप लोगों ने कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. BharatNet is basically was introduced to provide last mile connectivity. अब जब हम कंप्यूटर साइंस में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, that means even in the remotest of villages, even in the remotest of town, there is internet connectivity. पहले मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं थी, but now internet connectivity is there. और हम लोग अब UPI भी यूज़ कर पा रहे हैं. पहले before COVID, Paytm बहुत ज़्यादा या Google Pay बहुत ज़्यादा, it was not in use. हम लोग yes we were using it, but we were more dependent on cash. After COVID जब आया तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जी when you were touching these currency notes, उससे जी कोविड हो जाएगा. This was something that was happening. So हम लोगों ने शिफ्ट किया towards digital payment, and during this course of 3, 4, 5 years, अब मुझे नहीं लगता किसी की जेब में वॉलेट होगा, किसी की जेब में कार्ड होल्डर्स होंगे, हम लोग का सारा गूगल पे पे चलता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो हमने इतने लास्ट ईयर्स में अचीव किया, एंड 4 और 5 ईयर्स में ये चीज़ अचीव हो सकती है. तो जस्ट थिंक वी आर अराउंड 21 ईयर्स टू गो टूवर्ड्स 2047. क्या कुछ अचीव नहीं हो सकता? देन जो हमारे इंडिया का जो फोर्टे है, दैट इज़ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, यू हैव हर्ड इन रिसेंट बजट सेशंस एंड ऑल, आईटी को स्पेशल बजट मिलता रहा है. एंड आईटी में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हो रहे हैं या इंडिया में जो उनको बूस्ट मिलता है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स. इन द रिसेंट बजट सेशन जो डेटा सेंटर्स हैं, अब नाउ मेरे से पहले भी जो स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जिसके पास डेटा है, जिस कंट्री के पास डेटा है, दैट इज़ द विनर. And India, it is having enormous amounts of data. Data means something raw, and yes, we can extract information about from that. वो हम लोग आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. So government recent budget session में data centers को special allotment, special tax holiday मिला है if anyone is investing in India for data centers. So this is one of the things कि हमारी गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है इसके बारे में. After that, engineering colleges, the quality of engineering colleges, उसका उनके पास जो infrastructure है, quality of that, the access to research work, one of the things, one of the biggest thing. तो ये सारी चीज़ें contribute कर रही हैं. ये and it is all due to the government's vision to
bring technology to another level. Then is the societal and economic impact, and it is yes, सारी चीज़ें जो भी हमारा कुछ जो भी हमारा ये आजकल जो भी हमारे पास डेटा है या हम लोग कहीं पे वी आर वर्किंग ऑन इट, तो ये सारी चीज़ें इट इज़ जो इसका जो गोल है दैट इज़ यू नो टू बूस्ट द इकोनॉमी, and it is having a big economical impact. Then is continuous innovations. We as Indians, there is a word, jugaad. So jugaad is innovation. So we are working on this. हर एक जगह पे there is innovation. Big universities, private universities, government universities, they are working on innovations. And talking about innovation in computer science, there are some fields जिसमें developments होने रह गए हैं, which are here to be you know, जिसमें और innovations हो सकते हैं, but majority of the fields they are already discovered. Like let us take example of you know, wireless technologies. 2G आया, 3G आया, 4G आया, we are working on 5G, you know, आगे 6G आएगा, 7G आएगा. The base is the same, but what we are doing is कि इसमें जो हम लोग innovations कर रहे हैं, जो हम इसमें छोटे छोटे optimizations कर रहे हैं, that is the thing. And trust me, we are not lagging very far behind these developed countries. हम लोग तकरीबन उनके साथ ही चल रहे हैं. If we talk about the quality of research and the research communities. Next, yes, computer science, it is the engine of change. जब से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर्स हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट ने इसको यूज़ कैसे किया, एंड इट हैज़ हेल्प्ड हमारे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इट हैज़ हेल्प्ड लॉट, एंड it has enabled breakthroughs in AI, Internet of Things, and cloud computing. Then is transforming education. Education ka transformation using computer science and computer science related technologies is a big thing. Now we are having these edtech companies, we are having these ERP solutions. These are all in one. मतलब यू टेक एन ERP सॉल्यूशन फॉर अ कॉलेज, वो आपको सब करके देगा. वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की काउंट भी रखेगा, वो बच्चों का इवेल्युएशन भी करेगा, वो फीस भी कलेक्ट करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद बच्चों का रिपोर्ट कार्ड वहीं से जनरेट होगा, सेशनल की ग्रेडेशन वो करेगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगा वो सारा ERPs पे अवेलेबल है. एंड EdTech companies, they are always giving, they are also giving their best कि स्टूडेंट्स को, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले. आपको वो छोटी छोटी कंपनीज हैं, कोर्सेरा है, वाइट हैट है, सो छोटे छोटे वहाँ पे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है. सो दे आर ऑल्सो गिविंग देयर बेस्ट. एंड वो क्यों है? बिकॉज देयर इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट थिंग. आप ऐसे कोई भी कंपनी, यू कैन नॉट ओपन दैट कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन नॉट ओपन दिस टाइप्स ऑफ कंपनी इन US. वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ग्रांट्स, ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं. एंड हेयर इट इज़ वेरी ईजी, एंड गवर्नमेंट इज़ स्पेशली इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेटिव कंपनीज. आप नो डाउट आप उठा के बेकरी के बिस्किट्स आप टेक्नोलॉजी पे यूजिंग टेक्नोलॉजी आप उसको सेल कर सकते हो. गवर्नमेंट उस पर भी ग्रांट देती है. देन इज रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में मैम ने जैसे बताया कि वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई सपोज के सुबह से AI सारे सुन रहे होंगे, तो यू वुड बी हैविंग एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़. सो मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ. इट इज़ अ बंच ऑफ मॉडल्स बेस्ड अपॉन डेटा which enables you to you know, have some decisions, or which provides some decisions. Like एक एरोप्लेन उड़ा, हवा में गया, उससे कुछ डेटा कलेक्ट हुआ,
या वी कैन मेक इट मोर सिंपल। आज का दिन, आज सुबह सूरज इतने बजे निकला, ठीक, और आज के दिन लाइक टुडे इज 21st, तो 21st पिछले 20 सालों से 21st ऑफ फरवरी को सूरज कितने बजे निकला, मॉइस्चर कितना था, उसके बेसिस पे, एंड यस एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स मोर, उसके बेसिस पे वी कैन प्रिडिक्ट कि आज सुबह ठंड होगी, गर्मी होगी, क्या होगा। सो दिस इज एआई। कोई बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट यस मॉडल मेकिंग इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। देन इज कमिंग टू द टॉपिक रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर में आप मतलब सिंपल सा आप एग्जांपल लो, आपने एक लैब टेस्ट करवाया, लैब टेस्ट के बाद यू गॉट द रिपोर्ट ऑन योर फोन, वो रिपोर्ट उठा के यू कैन अपलोड इट ऑन चैट जीपीटी। क्या होगा, इट विल गिव रिजल्ट्स कि आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है डॉक्टर्स मे मिस अ पॉइंट, बट दिस एआई इट इज ट्रेन्ड ऑन लैक्स एंड करोड्स ऑफ डेटा सेट्स कि वो पॉइंट मिस करने की जो परसेंटेज है ना, एज कंपेयर टू अ ह्यूमन, वो बहुत कम रहेगी। आपने एक्सरे करवाया, गिव इट यू नो टेक इट ऑन अ गुड वाइट स्क्रीन, उसका फोटो लो, यू कैन अपलोड इट ऑन चैट जीपीटी और यू कैन अपलोड इट ऑन जेमिनाई, और क्लाउड पे आप कर सकते हो, ग्रुप पे आप कर सकते हो, एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। डॉक्टर एक फ्रैक्चर शायद मिस कर जाए, बट एआई कैन नॉट मिस अ फ्रैक्चर। सो दिस इज द लेवल कि एआई मॉडल्स को इस हिसाब से ट्रेन किया गया है। एंड यस आफ्टर दिस चैट जीपीटी रिलीज 2 or 3 years बैक, द होल लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड। हम लोग पहले बैठ के यू नो वी हैव टू राइट समथिंग, वी हैव टू एनालाइज समथिंग, तो व्हाट वी यूज टू डू इज लैपटॉप खोला, बैठे कुछ दिन सोचा, कुछ पहले तो पेन से स्क्रिबल किया, आफ्टर दैट कुछ लैपटॉप पे लिखा। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एआई। एआई से बड़ा ईजी हो जाता है, बट यस यू नो फॉर अनएथिकल पर्पसेस ऑल्सो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, बट यू नो हम लोग बेटर के लिए यूज़ करें। Then is empowering industry. Industry में there is automation and there is smart manufacturing boost productivity. So basically है क्या कि जैसे AI की ही अभी बात कर रहे हैं, होता ये है कि there are some processes which needs to be optimized, which can be optimized, but हम लोग वहाँ पे कई बार point miss कर जाते हैं, और वो point miss करना that is this can cost crores. सो वो जो प्रोसेसेस हैं हम उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए वी कैन यूज एआई बाय यूजिंग कंप्यूटर साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। देन इज इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड राइज इन स्टार्टअप्स, ये आप लोगों को पता है सबको कि देयर इज अ रैपिड राइज इन स्टार्टअप्स। अनार एरिया ऑल्सो, रुद्रपुर बिलासपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी देयर इज अ रैपिड राइज इन स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, एंड गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत बूस्ट करती है। कोई अपफ्रंट बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, बट लोग एंड ड्यू टू दिस लोग बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं। आप में भी कुछ लोग सोचते होंगे जी स्टार्टअप करेंगे, यस यू कैन डू इट। टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स यू कैन वर्क अपॉन इट, हो सकता है। ऑल यू नीड इज एन आइडिया। Like Amazon, we can take an example of Amazon. What Amazon used to do? Amazon पहले during our times, back in 2005, 2008, 2010, Amazon used to sell books. उसके पास एक ही प्रोडक्ट था, that was books. अब देखिए Amazon क्या कर रहा है, and आइडिया क्या है उसके पीछे। आइडिया सिर्फ इतना था कि yes we can sell anything on internet. अब जिनके पास इंटरनेट था उस टाइम पे उन्हीं लोगों ने वो बुक्स परचेज की। नाउ वी आर ऑल हैविंग इंटरनेट। अब अमेजोन का बिजनेस इतना कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, जेफ बेजोस, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो ऑल यू नीड इज़ एन आइडिया, एंड इसी पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ज़्यादा जोर है कि आप इंडिया में ही इन्वेस्ट करें, इंडिया में ही आप अपने कंपनीज वगैरह स्टार्ट करें। कंपनी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में तो नहीं लगती है, एंड आपको एक लैपटॉप ही चाहिए टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करने के लिए। देन इज एमरजेंस ऑफ टेक हब्स। आप लोगों को पता है बेंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, ये सारे हैदराबाद, दीज आर ऑल टेक हब्स। यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स खुले हुए हैं।
they can start from making a website, very easy thing. पहले वेबसाइट बनाने को we used to take 10 days, 15 days, 5-7 days लग जाते थे. Now तब तो 2 घंटे में वेबसाइट तैयार हो जाती है. And 2 घंटे में you can create a website, you can sell it. आपका start हो गया innovation, आपका एक startup start हो गया. Then there is a synergy between academia, industry and government. So government ये सारी तीनों चीज़ों को मिला के चल रहा है, academia, industry and government. And then is incubators and accelerators. Government is giving funds for incubation centers in colleges. So अगर कोई college invest करता है, in students, in technology and technology based solutions, तो government भी वहाँ पे funding provide करती है. तो basically जो idea है government का, that is you start from right away from college. You are if you are BCA वाले स्टूडेंट्स होंगे आई सपोज यहाँ पे, सो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी. ऑल इट टेक्स इज अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन. देन इज टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस एंड इनोवेशंस. AI, it is reshaping society and economy, and it is driving innovation, efficiency and new business models. It is enhancing decision making in healthcare, education and industry. अब डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग को जो कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, AI कैन डू इट. AI कैन मेक प्रोजेक्शंस. आपको पहले एक्सेल में वी यूज टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स के इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, ये चीज़ कहाँ पे जा रही है. AI कैन डू इट इन 20 or 30 seconds बिकॉज मॉडल्स वहाँ पे प्री क्रिएटेड हैं एंड AI इज ट्रेंड ऑन दैट मॉडल्स. दैन इज इंडियन AI इनिशिएटिव्स and there are government-led programs for AI research and adoption. आज सुबह मैं इसको पढ़ रहा था कि the government of Uttar Pradesh, it has mandated people, employees of the government of Uttar Pradesh कि सबको एक compulsory AI course complete करना है, उसके बिना नौकरी खतरे में आ जाएगी. ये सुबह सुबह का ही है, कल शायद बजट सेशन में उनका ऐसा कुछ हुआ था. So the focus is on AI. You should be at least AI aware कि AI आपको कहाँ हेल्प कर सकती है. ये नहीं है कि टीचर ने असाइनमेंट दिया, आपने चैट GPT में डाला, इट इज़ वेरी इजी, डाउनलोड किया एंड नेक्स्ट दिन टीचर को वही आपने लिख के दे दिया या प्रिंट करके दे दिया. नो, रिसर्च के लिए यू कैन यूज़ AI. आप आंसर्स ले सकते हैं. इट हैज़ बिकम वेरी इजी. आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, पहले गूगल पे सर्च करते थे, फिर गूगल कुछ रिज़ल्ट देता था, आपको एक बेस्ट रिज़ल्ट निकाल के उससे पढ़ना पड़ता. नाउ इट इज़ वेरी इजी. आप किसी भी AI प्लेटफॉर्म पे जाइए, यू राइट दैट प्रॉम्प्ट लिखने के बाद यू विल गेट एग्जैक्ट रिजल्ट्स. इट हैज़ बिकम वेरी 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 इजी नाउ. तो अच्छे के लिए यूज़ करना है, बुरे के लिए यूज़ करना है, वो आप लोगों के ऊपर है. देन इज़ AI रिसर्च एंड सक्सेस स्टोरीज. गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी इन्वेस्ट किया है. Startups in agriculture, fintech and health. And next is the collaboration between academia, industry and government. ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. Then is the fancy term big data. Big data. Now data is a treasure. जिसके पास डेटा है वो दुनिया चलाएगा. What is big data? Big data is basically a big amount of data. ठीक है, उससे हम कई सारी चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या उसमें से इंफॉर्मेशन हमें लेनी है. सपोज वी आर हैविंग यहाँ के बहुत सारे स्कूल्स का डेटा है एंड वी हैव टू डिड्यूस फ्रॉम दैट कि एडमिशन्स कहाँ से आ रहे हैं मैक्सिमम. सो वी कैन डू दैट अ पार्ट ऑफ बिग डेटा. डेटा का थोड़ा सा डेटा को क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद हम कुछ प्रॉम्प्ट्स वहाँ पे डालेंगे एंड कुछ क्वेरीज जनरेट करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट्स. वेरी इजी. सो it is what exactly it is doing. It is actually enhancing the decision making process. It is transforming governance. अगर हम बहुत बड़े स्केल पे बात करें, गवर्नमेंट हैज़ ऑल द डेटा कि कौन सी स्टेट में कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, क्या इनकम है, क्या पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है. इन उत्तर प्रदेश वी आर हैविंग दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थिंग. एक डिस्ट्रिक्ट का देयर इज़ वन प्रोडक्ट एंड that product is
selling in foreign countries. तो ये सारी चीज़ें हैं. And then is business intelligence and social impact applications, which is having data solutions for health, education and welfare. Then is cloud computing, another fancy term. Cloud. हवा में कुछ नहीं है, क्लाउड में कुछ नहीं है. आप लोगों को अब तक शायद ये पता लग गया होगा. कुछ रिमोट लोकेशन पे कुछ डेटा सेंटर्स हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है. एंड दोज आर गिवन दिस फैंसी टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. आपने गूगल ड्राइव पे अपना डेटा डाला, आपको पता नहीं है कि डेटा बेंगलोर गया, यूएस गया या किसी और लोकेशन पे सेव हुआ, या शायद अंडर वाटर किसी डेटा सेंटर पे वो सेव हो गया. दैट इज गिवन द नेम क्लाउड. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. And I've had the privilege to meet Dr. Rajkumar Boya, and he's called the father of cloud computing, and currently doing his research work in MIT Melbourne. He's the head of Clouds Lab. So उनका बहुत अच्छा रिसर्च है क्लाउड के बारे में. So क्लाउड का भी ये है कि एवरीथिंग जो भी आप अभी एक्सेस कर रहे हैं, आपने अपनी मेल एक्सेस करनी है, आपको पता नहीं है कि डेटा कहाँ पर है. वो that unknown thing, it is called cloud. It is a scalable digital service. By scalable we mean कि you can enhance it to any level. अगर आपके पास आज एक टीवी है, you can enhance it to 5 TB, 10 TB, 20 TB, जहाँ तक भी आप डेटा उसको लेके जा सकते हैं. And accessible solutions for all. आपके पास आज आपका 1 TB डेटा ख़त्म हो गया है, तो what you can do is you can pay a bit of money, थोड़ा सा पेमेंट कीजिए, and you will get another TB of data. Then cloud adoption in India कई लेवल्स पे हो रहा है. Academics की बात करें तो cloud adoption is used, जैसे आपका ये Google Workplace for Education करके एक solution is there. तो it gives you a wide range of softwares, applications that you can do online, that you can access online. बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो. सपोज देयर इज कोड यू हैव टू रन. तो पहला तरीका ये है कि उस कोड चलाने वाले सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करो. इफ़ इट इज़ पेड देन आप पे करके डाउनलोड करो, आप इंस्टॉल करो, एंड आफ्टर दैट आप अपना उस पर रन कर सकते हो जो आपका कोड है. सेकेंड ऑप्शन इज़ यू गो टू गूगल एप्स. वहाँ जाके देयर इज़ अ सिमिलर प्लेटफॉर्म, एंड आप उस प्लेटफॉर्म पे वही अपना कोड रन कर सकते हो. एंड दिस इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन IITs. प्रूटर के नाम से है वो, PRUTOR, प्रूटर, एंड यू कैन एक्सेस दैट ऑल्सो. देन इज ड्राइविंग इनोवेशन, एंड येस क्लाउड में भी इनोवेशंस चलती रहती हैं. इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. तो बहुत सारे इसके भी पैरामीटर्स हैं. Then is another fancy term, Internet of Things. आपने ये भी सब लोगों ने सुना होगा कि Internet of Things करके भी कोई चीज़ होती है. So Internet of Things basically means कि everything connected to Internet. छोटे छोटे tidbits, पंखा connected to the Internet, your watch connected to the Internet, this mic connected to the Internet, sensors, variety of sensors, proximity sensors, light sensors, humidity sensors, or n number of sensors, they're all connected to the Internet. तो इससे होता ये है कि हमारी थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग है वो इजी हो जाती है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड फिलहाल स्मार्ट सिटीज़, एज यू कैन सी इन स्लाइड, स्मार्ट सिटीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, बट यस चलान काटने में तो ज़रूर यूज़ हो रहा है. देर आर सेंसर्स एट सर्टेन पॉइंट्स इन सर्टेन सिटीज़. आप यू गो बियॉन्ड द स्पीड लिमिट एंड चलान आपके फ़ोन पे आ जाएगा. ये हल्द्वानी वाली रोड पे भी वो आजकल वो लगे होते हैं. सो दैट डिवाइस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स थिंगी. सो ये सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. एंड इससे हुआ क्या है, कहाँ वो पुलिस वाले CPU वाले हमें रोकते, हमें हाथ देते, हम रुकते, थोड़ी सी बहस करते, आफ्टर दैट कुछ वो हमारा चलान काटते, एंड आफ्टर दैट वो हमें चलान वहीं पे देना पड़ता है, समथिंग होती. अब होता ये है कि we go beyond the speed limit, camera captures that,
it goes to the उनके पोर्टल पे वो इन्फॉर्मेशन जाती है एंड दी चालान ऑटोमेटिकली कम्स एट आवर मोबाइल फ़ोन, एक मैसेज आ जाता है कि ऐसे ऐसे करके हो गया है। सो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के कारण ही इनेबल हो सकी हैं। देन येस इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो। इंडस्ट्रीज में भी इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअल थिंग्स, these sensors, internet of thing based things, these are there, जिनके कारण चीज़ें ऑप्टिमल हो गई हैं। एंड देन इज इनोवेशन एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर yes it is used to track soil, weather and crop health for better yields. And then is healthcare advancements. इसमें we are using this in remote patient monitoring, smart diagnostics that can improve care. Then is most important thing, cyber security. We are all in cyberspace now, and the security is one of the thing which is, you know, सोचने की जो चीज़ है। हम लोग का सारा डेटा इंटरनेट पे जा रहा है। आपने शायद कभी ध्यान दिया ना हो या ना दिया हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल फ़ोटोज़। आप लोग सारे यूज़ करते हैं गूगल फ़ोटोज़। अब व्हाट इज़ गूगल फ़ोटोज़? आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन उस गूगल फ़ोटोज़ में जाके गूगल की जो सर्वर्स हैं वहाँ पे स्टोर हो रही है। ओके, अब सपोज यू आर हैविंग 15 GB ऑफ स्पेस। गूगल बाय डिफ़ॉल्ट सबको 15 GB ऑफ स्पेस दे रहा है, राइट? 15 GB ऑफ स्पेस। क्या आपको लगता है कि आपकी एक अलग से गूगल के सर्वर में हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसमें आपको 15 GB स्पेस दिया है? नो, अलग से हार्ड डिस्क नहीं है, वर्चुअल पार्टीशंस हैं। एक वो 1 TB की, 5 TB की, 10 TB की एक हार्ड डिस्क होगी जो उसके डेटा सेंटर में कहीं पर फिट होगी, और उसमें हम जैसे 20-50 लोगों का अकाउंट बना होगा और वहीं पर 50 GB स्पेस दिया होगा। 15 GB ऑफ स्पेस सबको दिया होगा। तो वहाँ पर बैरियर क्या है? आपका दूसरे डेटा में आपका एक्सेस या दूसरे का एक्सेस आपकी फ़ोटोज़ में ना हो। व्हाट इज़ द बैरियर? पॉलिसी ऑफ गूगल। सिर्फ देयर इज़ अ वर्चुअल बैरियर जो बचा रहा है, साइबर सिक्योरिटी जो बचा रहा है। अगर वो ना हो तो फ़ोटोज़ लीक होती रहती हैं। कभी एप्पल के क्लाउड में कुछ फ़ोटोज़ लीक हो जाती हैं, किसी की वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। सो हम क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या हमारे फ़ोन में है, वंस देयर इज़ अ डिजिटल इम्प्रिंट, इट कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द साइबर स्पेस। एक फ़ोटो आपने ली और वो फ़ोटो इट रिमेन्स ऑन द डिजिटल स्पेस फॉर एवर। वो फ़ोटो कहीं नहीं जाएगी, वो फ़ोटो वहीं पे रहेगी एंड वो कभी भी एक्सेस हो सकती है। सो आई एडवाइस यू टू प्लीज़ यूज़ दिस very responsibly. Then is another important thing, digital trust. I've also had the privilege to work with Dr. Jakpreet Sidhu. He's one of the pioneers in digital trust, and he also is supposed to be my. He was also my co-guide in my PhD. So he has done a lot of work in digital trust. कि आप किस पे ट्रस्ट डिजिटल वर्ल्ड पे कर सकते हो। वो आते नहीं है मैसेज, कुछ आते नहीं हम लोगों को कि वो लिंक पे क्लिक ना करें। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ डिजिटल ट्रस्ट। वो आजकल वो मिर्ज़ापुर वाले जो एक्टर हैं उनके आजकल एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं टीवी पे। व्हाट दैट पर्सन इज़ सेइंग कि समझदार बनिए, समझदार बनिए। सो समझदार बनिए। डिजिटल जो आपका प्लेटफॉर्म्स हैं, यू डोंट हैव टू, फ़ोन पे एक मैसेज आया, यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन दैट। वो कहीं पर आपको ट्रबल में ले जाएगा। एंड येस, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंडिया, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, अकेडमिया, दीज आर ऑल वर्किंग टुगेदर ऑन दैट। इंडस्ट्री जो अकेडमिया है, वी आर गिविंग दी सजेशंस। इंडस्ट्री उसको दे आर मेकिंग दोज सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस ऑन दैट, एंड गवर्नमेंट उसको अप्लाई कर रही है। Then is digital inclusion and accessibility. Now इसमें we are bridging regional data gaps and expanding connectivity to underserved areas. कुछ साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पहाड़ पे एक दूर कोई गांव होगा, वहाँ पर इंटरनेट भी पहुँचेगा या वहाँ पे फ़ोन कॉल भी पहुँचेगी। एंड येस, ड्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स वहाँ पे इंटरनेट इज़ वर्किंग, पेटीएम भी वहाँ पे चल रहा है। नाउ इम्प्रूविंग मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में हैं, पहुंचा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि वहाँ पर भी वो चीज़ पहुँचे।
Accessible digital platforms, हम सबके पास we are having digital platforms and these are made accessible to us. And inclusive policy initiatives, which is provided through government programs. Then next comes the security, inclusion and ecosystem growth. Smart education, इसमें जो main role play कर रही है, these are the edtech companies. Edtech companies, Coursera, White Hat, to name a few. ये सारा अपना इसमें they are giving their level best कि education में revolution आए. And yes, they have brought in a revolution in education also. Like there's a company, White Hat का ही एक part है, White Hat Junior. First और second class के students को they are giving coding classes. Coding, yes, it is necessary and मिलनी भी चाहिए. Preparing youth for digital economy, and then is expanding reach and inclusion. Then is healthcare transformation with tech. मेरे से पहले पवनप्रीत मैम थे, so she has told a lot about this, so I'll just go through it. And telemedicine, it is via satellite communication, which सारी medicines का consultation आप लोग ले सकते हैं. That is done. डॉक्टर US में बैठा है and आपके दादाजी की robotic knee surgery हो गई है. ये सारा इसके थ्रू ही है. AI diagnostics, then is health data management, yes, through ABHA portal, as discussed earlier also, and improved access and quality. Digital governance and e-government. So इसमें we are transforming the public services. पहले आपको कई सारी चीज़ों के लिए you have to go to suppose land record निकालना है, आपको तहसील जाना पड़ता. Now it is on the blink of click of your mouse. Citizen-centric solutions are there, efficient and transparent governance is there, inclusive access for all is there, which is bridging the gaps between regions and communities. Then is fintech and digital economy. आप लोग सारे fintechs के जो companies fintech use करेंगे, you're all using that. आपको पहले अगर stocks में भी invest करना होता तो you have to go to some broker and वो सारा लंबा process था. You can do it now right from the click of your phone. आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, यू कैन डू इट आपके फ़ोन के आप क्लिक कीजिए, इट कैन बी डन. एंड और भी देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस. देन इज इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट एंड ड्राइविंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड MSMEs. छोटी छोटी लोन्स की ऐप्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की ऐप्स हैं, यू कैन यूज़ दैट. और ये सारा एक्सेस आपके फ़ोन पे है, एंड दिस इज़ ड्यू टू the digital economy. Then is the digital governance and economy. Sustainable development with technology. It is very important to use this development very responsibly. And there are digital tools to optimize resource use and reduce the waste. Then is smart energy management. इसमें yes, IoT and analytics enable efficient energy distribution. Then is water conservation solution. पहले manual था, now it is totally automated. Waste management, manual था, now it is totally automated. All due to the recent technological developments, may it be blockchain, may it be IoT, may it be cloud computing. Then is vision for Viksit Bharat at 2047. We will be a digitally powered India. कुछ भी analog नहीं रहेगा, everything will be digital. Everything will be in zeros and ones. Then is innovation-driven growth. We are fostering startups and tech hubs. We are promoting research in emerging technologies. Then, yes, we are having global leadership in technologies. जितने techies India में हैं, जितने हमारे techies US में export हुए हैं, उतने China के भी नहीं हैं. We are one of the biggest software developers workforce in the world. We are collaborating internationally for knowledge exchange. We are positioning India as a tech innovation leader. And in sustainable and inclusive development, we are leveraging technology for environmental sustainability, and we are empowering marginalized communities. Then girls काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, women in tech, empowering the change.
आप लोगों का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है. India is one of the few countries which are championing in gender diversity. जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मेल हैं उतने ही लगभग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लड़कियां भी हैं, एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया. There are n number of success stories from India in which जो हमारे women innovators हैं, they are using tech-based technologies to give something that matters. आपके आजकल सभी कुछ इंटरनेट पे है, ऑनलाइन शॉपिंग. These are mainly governed by females. So this is very important, and this is very good for India. Then is future opportunities. We are expanding mentorship and skill development programs, and we are creating pathways for women in emerging tech fields. Then key takeaways and call to action. First of all is digital convergence, and here we are transforming India. And then is through this we are innovating in computer science, technologies being AI, IoT, cloud, and big data. And then is inclusive and sustainable development. And then is call to action. We are shaping the future through collaboration, innovation, and which will ultimately lead through Viksit Bharat in 2047. Then is global collaboration and leadership. India is now one of the global tech innovators with driving advancements in AI, Internet of Things, and cloud computing. Strategic international partnerships, knowledge sharing for growth, and it is actually expanding India's influence, showing Indian innovations on world stage. Then diversity, global leadership, and future trends. Coming to future trends, AI, IoT, 5G, these are working fine, बहुत अच्छा चल रहा है. But yes, there is always a scope of improvement. There is always a scope for optimization in computer science-based technologies. And the next frontier is quantum computing. इंडिया में वी आर वर्किंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, बट बहुत ज़्यादा इनोवेशन क्वांटम कंप्यूटिंग पे है नहीं. येस, फ्यू रिसर्च ग्रुप्स आर वर्किंग ऑन दैट, बट चाइना इज लीडिंग इन दिस फील्ड. बट येस, गिवन द वर्कफोर्स, द टाइप ऑफ वर्कफोर्स, द एज ग्रुप ऑफ द वर्कफोर्स, वी विल बी देयर इन द क्वांटम कंप्यूटिंग race. Then is blockchain and decentralization. It enhances security, transparency, and trust in transactions, and preparing for a dynamic digital era. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your enlightening and visionary address. Your insights on digital integration, innovation, ecosystem, technology-enabled growth have truly inspired us. Your perspective reinforces the belief that digital convergence will be the one of the strongest pillar in building a resilient and developed India by 2047. We sincerely appreciate your valuable time and guidance. Thank you, sir. And one quote for you: the mark of great session is the curiosity it ignites. The mark of a great session is the curiosity it ignites. Fact about the digital leadership: India has built one of the world's strongest digital public infrastructure. Unified payments interface, that is UPI, processes billions of transactions monthly. Aadhaar is the second largest biometric ID system globally. Aadhaar is the second largest biometric ID system globally. Digital India promotes e-governance and digital empowerment. Thank you. And we have completed 26 chapters so far. Now we are moving towards the chapter 27th, National Conference Impact at the Rate 2047, Six Sigma Institute of Technology and Science, Rudrapur. Respected dignitaries, chief guests, esteemed speakers, faculty members, all the participants, as we arrive at the concluding segment of this enriching and intellectually stimulated National Conference Impact at the Rate 2047, it is time to express our heartfelt gratitude to all those
who made this event a grand success. For the formal vote of thanks, I feel and we feel privileged to invite a respected academician leader whose guidance and commitment have been instrumental in organizational this conference or organizing this conference. It's my honor to invite our convener Impact at the rate 2047, Dr. Lalit Singh Bishchi, Head of Institution, Six Sigma Institute of Technology and Science, Rudrapur. And sir has been a constant source of encouragement, visionary leadership, ensuring this conference reflects academic excellence and the true spirit of Viksit Bharat at the rate 2047. Sir, I kindly request you, please come forward on the stage and deliver the vote of thanks. And let us welcome him with a warm round of applause. Thank you all. Have a big round of applause for yourself. Please, sir, over to you. पिछले 2 महीने से जो आज आप यहाँ पर सफलता का एक मूर्ति देख रहे हैं, 2 महीने से इसका प्रयास है और इस विकसित भारत 2047 का बीज हमारे छात्रों के मनःस्थल पर डल चुका है और उसी के लिए आभार जताने के लिए सर्वप्रथम मैं इस संस्थान के जितने भी ऑनरेबल मैनेजमेंट हैं, हमारे चेयरमैन साहब जो विजनरी बिजनेसमैन हैं, हमारे एमडी साहब विजनरी लीडर हैं जो यहाँ के दिलों में बैठते हैं, यहाँ के एमएलए हैं और आने वाले समय में वो मंत्री पद भी लेंगे। और उसके बाद हमारे वाइस चेयरमैन साहब प्रमुख समाज सेवी हैं, हर दिलों की धड़कन है। उन्हीं के साथ में उनकी भार्या जो अभी ब्लॉक प्रमुख बनी हैं और इसी के साथ में हमारे मैनेजमेंट में 2 नए चमकते हुए सितारे जिनकी वजह से इस कॉलेज में एक नई ख्याति, नई चमक और नया विज़न हमें मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नए थॉट्स हमें मिले हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं उनका, और एजुकेशन में एक अच्छी पकड़ रखने वाली हमारी ऑनरेबल डायरेक्टर मैडम हर वक्त हमारे साथ एजुकेशन में क्या करना है, कैसे करना है, इसका हमें दिशा निर्देश मिलता रहता है। और उसके साथ में हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी, ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, सभी एचओडी, सभी फैकल्टी मेंबर और डेडिकेटेड यहाँ पर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, 75 फैकल्टी मेंबर्स, 9 हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, 5 एडमिन स्टाफ और हमारे संस्थान के 1300 स्टूडेंट्स, इन सब के अथक प्रयास से आज यह विकसित भारत 2047 का आयोजन सफल हुआ है। एक बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सुबह से बच्चे भी यहाँ पर तकतकी लगाए बैठे हैं कि अरे यार अभी तो 25 हो गया चैप्टर, 26 हो गया, 27 हो गया, गिनती कब तक होगी। और ये गिनती 27वीं है और इसके बाद 28वीं में आप चाय पिएंगे, ठीक है। तो हमारा ये विज़न शुरू हुआ था, डॉक्टर कश्यप ने हमें अपने समुन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र जो आज से 5000-7000 साल पहले से शुरू किया और डॉक्टर मनदीप ने वह आगे 2047 तक का भारत कैसे होगा कंप्यूटर के दिशा में, वह सबको अलग अलग लगभग 8 वक्ता इसमें आए, अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही विशारद रहे हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने अपने जितना भी विज़न था विकसित भारत के संदर्भ में बहुत ही, मेरे ख्याल से अब क्योंकि आने वाले भविष्य में यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगले 20-21 साल में इन्हीं के कंधों पर ये राष्ट्र आने जा रहा है। विकसित भारत कैसे होगा आप लोग के सामने सबने बहुत अच्छी पिक्चर दे दी है। तो मेरी टीम, मेरे कोलीग्स जितने हैं, उन सब का तहे दिल से, हृदय की कंदराओं से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सफल आयोजन किया है। एक छोटी सी वानगी ताकि बता दूं आपको, अभी सर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में ही बात करेंगे।
8 की नोट स्पीकर हमारे यहाँ आए, 61 नेशनल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं हमारे, और इसके साथ में टोटल जो कॉलेज का पार्टिसिपेशन इस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, 33 अलग अलग संपूर्ण भारत के 33 कॉलेजेस रहे हैं, जिसमें अलग से यूनिवर्सिटीज़ 6 यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, और इसके साथ में 105 एब्स्ट्रैक्ट आए हैं सेमिनार में, जिसमें कि 60% अलग अलग स्टेट से सेमिनार रहे हैं इसमें, और ये इस कॉलेज का चैम्पियंस ऑफ चेंज है, COC है। और इसी के साथ में टोटल जो पार्टिसिपेंट रहे हैं वो मोर देन 600 रहे हैं, हमारे और अपने मिला के 600 पार्टिसिपेंट हैं। एक डेटाबेस बताया है। और फिर से अब क्योंकि जब हमने 21 साल का आगे का एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, तो अगले साल का, क्योंकि इस मंच पर, कॉन्फ्रेंस की मंच पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इसी कॉन्फ्रेंस की मंच पर नेक्स्ट ईयर 27 का हमारे कॉलेज का कॉन्फ्रेंस की तारीख या मंथ वो भी डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। ऑनरेबल मैडम के दिशा निर्देश पर ही है। नेक्स्ट ईयर फरवरी में ही 3rd वीक या 4th वीक में होगा। फ्लेक्सिबल इसलिए है कि अगले साल चुनाव भी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तय कर लेंगे, जिसमें कि अगले साल जो इसका जो लीड रोल प्ले करेंगे वो फार्मेसी कॉलेज करेगा। फार्मेसी कॉलेज के ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब ने हमें टॉपिक भी भिजवा दिया है, जो कि नेक्स्ट जेन बायो फार्मास्यूटिकल एडवांस्ड थेरापॉटिकल रेगुलेटरी साइंस एंड क्लिनिकल ट्रांसलेशन, ये टॉपिक रहेगा अगले साल का। और नेक्स्ट ईयर हम फुल जो स्क्रिप्ट है वो फुल रिसर्च पेपर इसमें एक्सेप्ट करेंगे। अब मेरे ख्याल से चाय का वक्त भी हो गया, बच्चे भी चाय पियेंगे। वंस अगेन लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और हम अगले साल अगले विज़न के लिए, कॉलेज के नए विज़न के लिए, कि अब कॉलेज, हमारा कॉलेज भी अब यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं, और चमकती हुई आँखों में मुझे सबके नज़र आ रहा है। थैंक यू टू ऑल। Thank you, sir. We express a heartfelt, delightful thanks for your session. Vote of thanks with the second last chapter from this itinerary, Impact 2047. And now all the dignitaries presented over here on the dais, nearby stage, they are leaving for the another session. So I request all the aspirants, participants to move further and create an exit from the back door. Thank you all. Impact @ 2047, Six Sigma Institute of Technology and Science, Rudrapur.